good evening and welcome to your very own BYJU'S 9th and 10th grade channel. I'm your biology teacher Aishwarya. Hi everyone, I'm your teacher Ankita. Hey, I'm Saurabh, your physics expert, and Hi everyone, I'm Kriti. We study chemistry together. so why are we here? And I think I can see a few comments. What is this practice paper? Good question. So we are here to solve the CBSE science practice question paper, which was released very recently, and this was like a bolt from the blue. Yes. How many have seen this? कितने लोगों को पहले ये बताओ पता है कि practice paper नाम की कोई चीज रिलीज हुई है? And people who are preparing for boards, this is something new. This is something extremely important. Yes. Hey, good evening everyone. Afternoon भी बोल सकते हो, चलो कोई बात नहीं. Yes, good evening to everybody. Please make sure that all of you have your notebooks, your pens, everything with you because today's class is going to be quite a long class where we are going to be doing the entire paper all together. So everybody please be ready, please be excited for the class as well. Very good, very good. अच्छा ठीक है. One question which you are asking quite frequently कि क्या बोर्ड का लेवल भी प्रैक्टिस पेपर जैसा होगा? मैम, what do you think? बोर्ड का जो एक डेमो है उन्होंने दिखा दिया इस प्रैक्टिस पेपर से एंड इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन पेपर. बहुत ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आए हुए हैं इसमें. तो एक चीज तो प्रूव हो गई कि सीबीएसई स्पून फीडिंग तो बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर रहे हैं. दे वांट यू टू थिंक एंड दे वांट यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे ही बने हैं कि आप अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आप सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो शायद आप स्टार्ट भी ना कर पाओ क्वेश्चन. Right, Kriti ma'am, क्योंकि सारे questions, I think majority of the questions, are very twisted. थोड़े से it will take a lot of time for students to figure out that what they actually have to write. They have to read the question very carefully, and they might think that this particular question belongs to this particular chapter, but it could be the vice versa. That it could be from other chapter also. So please make sure you stay around with us till the end because it's a very very important paper that we'll be solving today. Yes. All right, but don't worry. Time management, and there are a lot of questions you have, but listen to us carefully. We'll be solving this practice paper end to end. Now, a lot of you might be thinking that there are out of syllabus things. Few things are out of syllabus, but few things are not exactly out of syllabus. They might seem like they're out of syllabus, but with the basics which you already have, this paper, at least in physics, was solvable. And I'm talking about which question you also know. How was bio? Bio was okay. So some of the questions were very simple, but some of them did require a little bit of thought. Like, normally what happens is there's an assumption that bio is very easy and very direct question comes in the exam. Yes. So in this case, actually the questions are simple, but you need to think, like you need to, really understand the question and go about solving it. Yeah. Yes. Ma'am, what about chemistry? केमिस्ट्री में भी इट्स जस्ट द सेम. सेक्शन ए स्पेशली अच्छा आया हुआ है, उसमें ऑप्शंस जो हैं बहुत ज्यादा अच्छे गिवन है. तो या तो तुम्हें आंसर आता है या नहीं आता है, ये साफ साफ समझ आ जाएगा. तुक्का वर्क जो आप लोग काफी टाइम करते हो, मेंटी में स्पेशली करते हो, वो यहाँ इस पेपर में बिल्कुल वर्क नहीं करेगा. तो ये जो सेशन आज हम आपके लिए लाए हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पूरा का पूरा सेशन एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझो. ऐसे बहुत से क्वेश्चन होंगे जिनमें जो आंसर आपने सोचा है वो नहीं है. तो वो जो क्लैरिटी है इस सेशन से आपको मिलेगी. बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन that you should attend. This session will go around 3 to 4 hours. See, we don't want to lie to you. So 3 से 4 घंटे जाएगा, but this session needs that much time, ठीक है? So we'll be quick. The things which are easy will be quick over there. Otherwise, we'll run. And I think with this, you need to understand we are going to start solving. And Over to you, sir. Yes. I like that. Please do tell us if you're clearly visible and audible. And by the way, if we all of us are here, I hope all of you have pressed the like button and subscribe to the channel because this is very important, right? Yes. All right, kids. So, all the best, everyone. We'll be meeting you really very soon. Now over to sir. All right. Starting with the physics part. Thank you, everyone. And चालू करते हैं फिजिक्स से कहानी. देखो. Yes, 100% competency है. सच बात है. देखो. One small thing, one small learning we can take forward from this practice paper is कि भाई competency based questions हैं. इसका मतलब
applications is important. Direct question जो उठ के आया करता है, maybe इस बार नहीं आएगा, शायद, because the practice paper is kind of telling this to us, है ना? So that's why this solution or this analysis becomes very important. ठीक है, ध्यान से सुनना, physics मुश्किल नहीं था. जितने बच्चों को लग रहा है physics मुश्किल था, it was not difficult. We'll do it. Don't you worry about this. छोटा सा announcement है, it's about the mock board exams 2023. घर बैठे बोर्ड की प्रिपरेशन कैसे करें, है ना? We have to give mock exams, and that is why this is a very nice opportunity you all have, that you can give this while sitting at your home. ये 100% online है बच्चों. It's for ICSE students, CBSE students, right? 5th to 12th of Feb, this will happen, and it is based on latest board exam pattern. And you know what? Chance to win free Aakash BYJU'S JEE NEET course, and it is free. That is important. All of you can give this mock board exam free, so that's why please register. The link is given in the description. All right, देर मत करना बच्चों, mock exam देना बहुत जरूरी है. बोर्ड का environment, बोर्ड का टेस्ट देना बहुत जरूरी है. If you go directly, दिक्कत हो सकता है, you might be overwhelmed, है ना? ये mock paper जरूर दे देना, please register कर दो, ठीक है? Yes. All right, magnetic field chapter में सानिया you are exactly right. Don't worry. देखो, सुनो. The time was 3 hours as we have in the board paper. इसके अलावा the pattern was almost similar to the sample paper, है ना? Sample paper बच्चों बहुत easy आया था. ये practice paper कहीं ना कहीं ये बताने के लिए है कि बच्चों sample paper जो बहुत easy आया था, जरूरी नहीं है कि वैसे ही easy question आए. And some of us got very relaxed. हमको लगा यार sample paper जो इतना easy आया है, शायद board भी वैसे ही आए, बहुत आसान हो सकता है. लेकिन practice paper ने उसको disprove कर दिया है. Practice paper बोल रहा है कि हम tough भी आ सकते हैं, right? I can be a tough exam also. So let's see. Questions का number as such कुछ खास difference नहीं है, right? It is 39 questions, 5 sections हैं. First section is 20 objective questions, 1 mark each. Second में we have 6 very short questions carrying 2 mark each, and word range is also given to you, which means, ठीक है? अमन, हाँ सही बात है बच्चा. अरुंधति, mock test will be as per your board pattern. Subjective, objective miss, है ना? Don't worry. इसके अलावा सेक्शन सी had 7 short answer carrying 3 marks each, 50 to 80 words. सेक्शन डी में 3 long answer type questions carrying 5 marks each, and सेक्शन ई was case based. और case based question फिजिक्स का इस बार सबको डर लगा उस एक क्वेश्चन से, उससे पहले के उतने डरावने नहीं है, but that case based one question was the scariest. I believe a lot of students find it. Don't worry, वो क्वेश्चन मुश्किल नहीं था. I'll tell you why. ठीक है बच्चों, क्या बोलते हो, चालू करें? सीक्वेंस है फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री, ठीक है? विल बी स्टार्टिंग विद फिजिक्स. आई होप यू हैव योर पेन एंड नोटबुक विद यू. खाली हाथ बैठोगे तो कैसे सॉल्व करोगे, राइट? मेक श्योर यू हैव योर पेन एंड नोटबुक विद यू. आई होप यू हैव प्रेस द लाइक बटन. बच्चों, ये प्रैक्टिस पेपर तुम्हारे लिए सॉल्व हो रहा है, इसलिए जरूरी है क्योंकि बोर्ड का पैटर्न शायद हमको लगता है भारी क्वेश्चन आ सकते हैं. सो लेट्स सी, लेट्स सॉल्व इट. और सच में ये भरोसा करते हैं क्या सच में भारी है कि नहीं है. Once we are done solving this practice paper, I want you to judge क्या सच में भारी था, ठीक है? Are you ready? Come on, जल्दी बताओ. Hello समृद्धि, हेलो कुलवीर, प्रिया, नित्या, विष्णुप्रिया. न्यूमेरिकल बहुत कंफ्यूजिंग है. हाँ बच्चों, डर, पहले तो डर हटाओ. फॉरगेट अबाउट दिस. प्रैक्टिस में भारी था, पहले भूल जाओ. प्रैक्टिस पेपर आया है, सॉल्व करने बैठे हैं, ठीक है? अब सॉल्व करेंगे. आर यू रेडी? पहले ये बताओ. यस, रेडी? अल्ट्रा हाई जोश, वेरी गुड. चलो आ जाओ, कहानी चालू करेंगे फिजिक्स से. हम लोग बात करेंगे पहले फिजिक्स की. लेट मी स्टार्ट विद द सेक्शन ए. सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन, एवरीबॉडी ऑन योर स्क्रीन नाउ. क्वेश्चन नंबर 13 है. एंड यू नो व्हाट, सेक्शन ए के लिए तो आई कैन गिव यू पोल ऑल्सो. विष्णु, 4 ऑप्शंस A B C D, ठीक है? Come on, for this question I'll give you a poll. You solve it and tell me the correct answer. The circuit below consists of a variable resistor connected in series with two 2000 ohm resistors. Good thing was diagram was given. नहीं तो imagine करना पड़ता. Diagram दिया हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, right? The variable resistor can be adjusted to any value between 0 to 4000 ohms. As the resistance of the variable resistor is changed, what is the smallest possible reading on the voltmeter? हाँ जी, see poll is coming your way बच्चों. Don't worry. I want to see how many of you answer it. Come on. This is not a difficult question. I'm telling you, it's a very easy question.
See, poll is there, A, B, C, D. What do you say? See, you are more than 100 people live right now, which means I want 100 votes. ठीक है, सबको आंसर तो करना है बच्चों, गलत होगा सही होगा बात की बात है. Come on. टाइम कंज्यूमिंग है. अंकित इट्स ओके बच्चा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. Vishnupriya, yes, you're right. Change matlab increase or reduce, that's fine, but you have to read the whole question to understand, should we increase, should we decrease? Samta, I'll explain, don't worry, bacha. Everybody, come on. I'll give you 5 more seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Let's end the poll. Yes. So I can see 72%, B is 71%, which is kind of good only. Bachcho suno, listen to me. The circuit below consists of variable resistor connected in series with two 2000 ohm resistors. It can be adjusted to any value. ये वाला resistor जो है ना, it can be adjusted from 0 ohms to 4000 ohms. ठीक है, यहां तक तो केवल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, क्वेश्चन नहीं पूछा है अब तक. क्वेश्चन क्या है? As the resistance of the variable resistor is changed, increased or decreased, what is the smallest possible reading on the voltmeter? By voltmeter, what is the reading that voltmeter measures? Think about it. यहाँ पर series circuit है. अगर let's say from this 2000 ohm resistance there is current I flowing. Let's say I current is flowing, है ना? What is the reading voltmeter is measuring? क्या measure कर रहा है voltmeter? सर ये मेजर करता है वोल्टेज ड्रॉप. क्या होता है वोल्टेज ड्रॉप? सर V इक्वल्स I इंटू R. सो यानी कि दिस V विल बी मेजरिंग कितना? ये वाला I, राइट, दिस I multiplied by this resistance, that is 2000. This is the reading voltmeter is measuring. Now if this reading needs to be smallest, current needs to be smallest. Current will be smallest when total resistance is maximum. Resistance maximum कब होगा? क्योंकि सीरीज में है ना? तो अगर वहां पर 4000 ओम का रेजिस्टेंस होगा, 4000 plus 2000 plus 2000, you will get 8000, है ना? So that is why you got to understand कि भाई यहां पर ना रेजिस्टेंस को मेरे को करना पड़ेगा 4000 ohms. अब कहानी बहुत सिंपल है, राइट? नाउ द स्टोरी इज वेरी सिंपल. टोटल रेजिस्टेंस इज 4000 plus 2000 plus 2000, ठीक है, means 8000 ohms. Voltage was given to you as 12 volts. Current will be how much? Current is V upon R, that is 12 upon 8000. Solve कर लो इसको. 4, 3, 4, 2, 2 is 1.5, 1.5 into 10 to the power of minus 3 amperes is the current. All right, current हो गया 1.5 milli amperes, ठीक है. अब आपका वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 2000 ओम रेजिस्टेंस कितना होगा? 2000, that is resistance multiplied by current 1.5 into 10 to the power of minus 3. अब इसको सॉल्व कर लो. ये 3 जीरो चले गए. 1.5 into 2 कितना आ गया? 3 volts. सॉरी 3 volts आ गया आंसर. And that, my friend, is the correct answer. Option B, that is 3 volts. Clear है? How the resistance is 4000? Because ओवरऑल रेजिस्टेंस नीड्स टू बी मैक्सिमम. अगर आपको करंट मिनिमम करना है तो आपको रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा ना. क्यों? क्योंकि करंट क्या होता है? V अपॉन R. करेक्ट है ना? सीरीज में है ना? यस. समझ नहीं आया? बच्चों सुनो भाई, ये टोटल रेजिस्टेंस अगर मैक्सिमम होगा तभी तो करंट मिनिमम होगा. इट इज सीरीज सर्किट. करंट मिनिमम क्यों चाहिए? बिकॉज यू वांट टू सी मिनिमम वोल्टेज. मिनिमम वोल्टेज कब होगा? जब करंट या रेजिस्टेंस दोनों में से कुछ लीस्ट होगा. अब रेजिस्टेंस ये 2000 ओम तो फिक्स है, राइट? दिस 2000 ओम इज फिक्स्ड, सो 2000 कैन नॉट चेंज. क्या कम करना पड़ेगा? करंट. कैसे कम करोगे? सर ओवरऑल सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ा के. यस. व्हाई शुड यू मेक द करंट मिनिमम? बिकॉज you have to find smallest possible reading on the voltmeter. This voltmeter is measuring what? This resistance, that is 2000 multiplied by the current going in the series circuit multiplied by I. ये मेजर करना है, इसीलिए करंट होना चाहिए मिनिमम. ठीक है? क्लियर है? अंडरस्टूड? यस, वेरी गुड.
So what I'm saying is we need to maximize this resistance so that the series current in the circuit is minimum, because your voltage, this voltmeter, is measuring what? 2000 ohms multiplied by current. This current, if it's minimum, then V value will be minimum. Itna sa question tha, that's why. I told you it's a simple question. Come on, yes. Jam art and craft, nahi yaar, personal hai. These spectacles are personal. Nobody has provided. All right. Come on. This was 1 mark question, Aditi. Deserves to khair, let's not talk about it. You'll get more questions where you feel like they deserve more marks. Come on. The frequency of AC in some countries is 60 Hertz. What does this mean? A, B, C, D. We have 4 options again. Yes. Good evening, Pooja. Yes. B. Oh no, Anushka, we have started with physics, bacha. So we have done only 1 question in physics. This is the second question of physics. We are doing physics first, then bio, and then chemistry. Everybody is saying B, huh? Hai na? You remember magnetic effect of electric current, household circuits. I have taught this to you. Very easily I have taught this to you. Why? How to figure out number of times current changes direction looking at the frequency. Yaad hai na? है ना? Correct. Why B? बच्चों, 1 shots. I have done this multiple times, है ना? We have done this together multiple times. Bhai, what is frequency? Sir, frequency means number of waves passing in 1 second. है ना? Number of waves. Now, in one wave, if you think about it, let's take this. है ना? If you remember, from one crest to other crest, it is one wave, correct? Right? Fine. So, can we say the current is changing direction how many times? This is 1 time and this is another time. It is going from plus to minus and here from minus to plus. So, in one wave, current changes direction twice. Clear? How many waves are passing in 1 second? 60. Why? Because frequency is 60 Hertz. Frequency क्या होता है? Number of waves passing in 1 second. 60 waves निकल रही हैं 1 second में, right? 60 waves are passing in 1 second. Each wave में we have direction change twice. मतलब how many times direction change happened? 60 multiplied by 2, and that is why correct answer is the current changes direction 120 times in a second. Yes. Pooja, physics is almost completed, right? Clear? Hello Arshit. बच्चों क्लियर है ये बात? जल्दी बताओ, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है. फ्रीक्वेंसी जो दी होती है ना, फ्रीक्वेंसी का डबल करना होता है पता करने के लिए कितनी बार करंट डायरेक्शन चेंज करेगा. यस, एकदम क्लियर? नहीं अरुण, 50 Hertz is in India. In US it is 60 Hertz and 110 volts. So it's okay. Frequency, forget about 50 Hertz or 60 Hertz. You have been given a frequency. Now take that frequency, na? Clear? Very good. Chalo. Come on. Next question. Question number 15. Look at this. Bachcho, we have to save time. I'll spend time on the difficult questions. All these are easy questions and this one is a good question but a very easy question. Yes. Everybody, come on. Crystal clear? Bahut badhiya. People are saying D. D. ऐसा है क्या? Raman wants to draw a graph to show how the resistivity of a wire changes with the length L of the wire. What should his graph look like? Everybody is saying D, huh? Hello, Hetvi. It's okay, bacha. Don't worry. This is the third question in physics, and we have started with physics only. Anybody, any other answer? Why D? हाँ, it's okay. ग्राफ कुछ समझ नहीं आती है? अरे रुको. ग्राफ आसान है बच्चा, don't worry. अरे एक चीज बताओ, देखो. Before you solve this question, what is the formula which relates rho and length? And you know what? This is a board pattern. ये board का pattern है. Board कभी भी बस छोड़ के नहीं लिखेगा. ध्यान दो. Board ने वहां पर rho की यूनिट भी लिखी है ना? Unit of resistivity is also written over there. And यहाँ पर unit of length is given to you. Grab and understand? It's okay. Inverse relation. Now let me ask you something. Formula says R equals rho L upon A. If I rewrite this formula, I can say
कि R A upon L is equal to rho. All right. Can I say rho is proportional to 1 upon L? True or false? Can I say this is proportional to inverse of length? True or false? Yes. True. Today, bacha, because we had to solve this practice paper of class 10, which was kind of urgent, that's why. True. Achana, this is the formula we all know. R equals rho L upon A. Resistance equals resistivity into length upon area. If I rewrite this formula, I will get this, right? Now, if I just look at this formula, can I say rho is proportional to inverse of length? Lot of people are saying true, huh? So, if this is true, then your answer should be this. Then your answer should be this. But this is not given to you. Okay, this is called as hyperbola. Okay, but this is not given to you. Lekin, listen to me. First thing, while teaching electricity and while teaching this factors affecting resistance, I have taught this to you again and again and again. कितनी बार मैंने बार बार बताया बच्चों तुमको, यहाँ गलती होती है. रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है सर जी? लेंथ पे, एरिया पे, ठीक है, मटेरियल पे, टेम्परेचर पे, ठीक है. रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन व्हाट? टेम्परेचर एंड मटेरियल. दैट्स इट. मटेरियल सेलेक्ट कर लिया, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है. अब उस मटेरियल को यू स्ट्रेच, यू फोल्ड, यू डू समथिंग एल्स, इट वोंट चेंज. ठीक है, क्यों? बिकॉज वायर, मटेरियल इज सेलेक्टेड, टेम्परेचर इज फिक्स्ड. अब रेजिस्टिविटी चेंज नहीं हो सकती. ठीक है, सो रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ बच्चों, इट डज नॉट डिपेंड, इट्स अ कांस्टेंट. ये गलती मत करना. रेजिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंड ही नहीं करता है. आप लेंथ चेंज करो, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा. विच मीन्स you are increasing the length, resistivity is constant. You are decreasing the length, resistivity is constant. And that is why, my friend, option D is the correct answer. Clear hai? Sound is low. Sound is low, is it? MLB Dreamer, bachcho, graph is not difficult, na? First of all, stop being scared of graph. Look at the graph. See, if you look at the graph, see what the graph is saying. If length increases, sir, resistivity also increases. First wala graph is telling you resistivity is proportional to length directly. Option B is telling you कि length remains same, resistivity keeps on increasing. Is it possible? No. Third one is saying कि as length is increasing, resistivity is decreasing. Last one is saying कि as length is increasing, resistivity remains constant. Yes? Oh, thank you, Sumi. Meg, bacha, voice is clear. Vishnupriya, graph is easy, no? I just told you. Sound is low, huh? ऐसा है क्या? नहीं यार, sound is fine. Aman, हाँ, you're right. ठीक है. So last graph is the answer because resistivity does not depend on length. एक बात बताओ, सुनो, ये same question सुनो, everybody listen to me carefully. Resistivity does not depend on length or area. ठीक है, which means resistivity is this is area, answer would be this. This is resistivity, this is length, answer would be this. Sir, why? Because area you can change, resistivity will not change. Length you can change, resistivity will not change. That is why the same question can be twisted in that form also. Answer वही रहेगा. ठीक है? Yes. Understood? बच्चों, resistivity depend नहीं करता है. ये बहुत basic सा point है. इसको मत भूलना. इस पे question हर साल आ रहा है और बार बार. Maybe not this kind of a question, लेकिन resistivity, resistance depends on what and what factors. ये question बार बार आता जा रहा है. This question is repeated again and again. Please. इसमें गलती नहीं चाहिए मेरे को. I don't want any mistake in this. I'm telling you. Why not C? See, why not C? You are asking me because as length is changing, resistivity is decreasing. I just told you, na. Cotton, I just told you, resistivity does not change with length. It depends on material and temperature.
Why do you want to change resistivity as option C? It's not possible. Clear? Come on, question number 16. Let's move forward. And I'm happy to see this question because people who came in one short session would remember I have taken this question before. कितने लोगों को याद है मैंने तुमको ये क्वेश्चन पहले लेके बताया है फ्यूज कहां लगाना चाहिए याद है डू यू रिमेंबर दिस यस तनिष्का यू आर राइट है ना करेक्ट वी हैव डन दिस क्वेश्चन एंड दिस वाज अ स्मॉल थिंग विच वी टॉट यू एक्स्ट्रा ये मैंने तुमको एक्स्ट्रा चीज पढ़ाई थी कि यार हमेशा ना फ्यूज यहां लगना चाहिए बिकॉज दैट रीजंस आई एक्सप्लेन द रीजंस प्रॉपर्ली उस टाइम पे करेक्ट okay I got mostly a few D's are also there किसी को B और C नहीं लग रहा है बाला it's okay so MCQs don't need to solve MCQs you need to only write the answer why switch cannot be connected to neutral wire I'll talk about this A C haan now I'm getting more answers C is also there C is also there A is there I think C okay हाँ अच्छा ठीक है सुनो everybody listen to me in one shot I'll tell you what was the question I asked you the question was कि this was the live wire right and we were asking you where to connect the fuse at position A such that this appliance does not get affected है ना फ्यूज कहां लगाना चाहिए so there were two options at position A at position B इस तरह का क्वेश्चन था कुछ similar kind of question was there मैंने बोला था कि भाई what is the work of fuse काम क्या है फ्यूज का why do we use a fuse is a safety device है ना its job is to cut the supply of current in the circuit as soon as it crosses a limited value एक prescribed value से ऊपर जब करंट जाएगा उसका काम है इस करंट को कट कर देना you are right so इसका मतलब this means if you connect fuse over here it doesn't matter because in series current remains same when current let's say the fuse limit is 5 ampere and current is flowing 6 amperes fuse can break the circuit from here also here also it doesn't matter then sir why do we say it should be connected in live ध्यान से सुनो it's a very important point and very basic point तुम्हारे घर में in your house when you have the main supply coming think about the practicals in your home from where the main supply is coming you might have seen तुम लोगों ने देखा होगा कि वही मेन सप्लाई के बगल में फ्यूज बॉक्स होता है कितने लोगों ने देखा है yes how many of you have seen Nikita it's there on the website bacha on the CBSE website it is there on the CBSE website it is this sample paper or this practice paper is released by the CBSE देखा है ना सही बात है मेंस के पास ही होता है ऐसा नहीं होता कि मेंस में पूरे घर की वायरिंग हो गई है फिर वापस में लग रहा है नहीं why I'll tell you देखो let me ask you something let's say this is live this is neutral live is let's say 220 volts and neutral is 0 okay fine बहुत बढ़िया if let's say this circuit is open from here can someone tell me voltage at point A can someone tell me voltage at point A or point B and point C A पे voltage कितना होगा Ritika is saying 220 Sunil is saying 0 220 हाँ 220 अच्छा A पे you are saying 220 on point B कल्पेश kind of B पे 0 220 बच्चों दिस इज द होल गेम यहीं पे सारा खेल हो रहा है देखो न्यूट्रल इज 0
है ना, मतलब till this point it is 0, till this point it is 220, okay, है ना. So when your appliance, let's say fuse has broken the circuit, fuse ने circuit को open कर दिया, let's say the fuse has made the circuit open, but अभी भी इस appliance के ऊपर potential तो 220 volt है. What will happen? Let's say there was some leakage current और आप you came near to this appliance and you touched it, है ना, with your hands you touched the appliance, let's say. What will happen? Appliance के पास high potential था and you touched it. So what will happen? Current from the appliance will move from your body to the ground and you will get what? A shock. You will get a shock. क्या प्रॉब्लम है? हमको ऐसा करना है कि अप्लायंस के ऊपर वोल्टेज ना पहुंचे. When you are opening the circuit, appliance should not get a voltage, and that is why what we do, हम लोग फ्यूज और स्विच दोनों लगाते हैं अप्लायंस से पहले. That is one reason that we need to connect switch and fuse before the appliance. Clear है? Yes, you are right. We complete the current when we touched it. You are right, है ना? ठीक है? प्रिंकुश, focus. स्लीपर, अरे अब स्लीपर कौन याद रखता है? घर में स्लीपर मैंने घूमते, मैं तो घूमता हूं यार. नहीं क्लियर हुआ? बच्चों सुनो, देखो, ये है मेरा अप्लायंस, लेट्स से, ठीक है. इस अप्लायंस पे वायर जुड़ा हुआ है. अब मान लो कि हाई करंट हुआ एंड सर्किट इज ओपन. सर्किट ओपन है, ठीक. मैं आया, दिस वॉज स्टिल गेटिंग 220 वोल्ट. वाई? बिकॉज ये 220 वोल्ट से कनेक्टेड था. करंट नहीं फ्लो कर रहा है लेकिन वोल्टेज है इस पे. इसका मतलब व्हेन यू केम एंड टच्ड इट, एंड क्या हुआ? करंट फ्रॉम दिस अप्लायंस फ्लोन थ्रू माई बॉडी टू द ग्राउंड और मेरे को लग गया शॉक. हमको क्या करना है कि अप्लायंस को वोल्टेज ना मिल पाए. अप्लायंस शुड नॉट गेट अ वोल्टेज व्हेन द सर्किट ब्रेक्स. That is why fuse is connected before the appliance, switch is connected before the appliance, and I am connecting fuse before the switch. Why? So that I can protect the switch also. अब सुनो, everybody who is not able to understand, I'll give you one very basic funda. Fuse को पहले लगाना है. क्यों? Everything you want to protect, fuse should be before that. Everything you want to protect in your circuit, fuse should be before that. Every electrical appliance, switch हो गया, वायर हो गया, अब ठीक है, anything is there. Switch is also छोटा appliance, no? आपको जो भी प्रोटेक्ट करना है उससे पहले फ्यूज लगाओ. Yes. How do we write it in theory? Yashika, this is an MCQ question, so you don't need to write this, but you will say it has a potential upon it, and when we touch it, we complete the circuit and current flows through us. Birds don't get shock. हाँ, Sunil, good question. Sunil is saying birds don't get shock. Let me tell you. Let's say a bird is sitting nicely on the live wire. It will not get a shock. The moment you touch the bird with your feet on the ground, bird and you both will die. Circuit complete होना चाहिए. That's why. ठीक है? Arun, this is the practicable launched recently. Crystal clear? Very good. ठीक है? मेंटी नहीं है बच्चा, पढ़ लो. मेंटी भूल जाओ अभी, ये पढ़ो जरूरी. अरे बोर्ड ने दिया है, तुम्हारे एग्जाम की बात चल रही है. And that is why option A is the correct answer. ठीक है? Everybody, basic याद रखना. और अगर basic में दिक्कत हो रही है, if you are not able to understand everything, let me give you a small hack, small trick. Everything you want to protect, connect the fuse before that. यहाँ पर I wanted to protect the switch, I want to protect the bulb, I have connected switch, the fuse before both of them. ठीक है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर फ्यूज लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, स्विच लगा हुआ है. ठीक है? लेकिन स्विच को तो पहले लगाना है हमको, राइट? स्विच एंड फ्यूज बोथ शुड बी बिफोर अप्लायंस. दिस इज वन बेसिक. एंड वॉट एवर यू वॉन्ट टू प्रोटेक्ट, फ्यूज शुड बी बिफोर दैट. यहां पर क्या है? फ्यूज बाद में है, रॉन्ग. यहां पर फ्यूज एंड स्विच बोथ बाद में है, रॉन्ग. यहां पर फ्यूज बाद में है, रॉन्ग. फ्यूज एंड स्विच बोथ आर बिफोर द बल्ब, राइट. बेसिक्स आर फाइन. ठीक है? क्लियर?
Arun, you asked us in the comment section, we'll reply you with the link, don't worry. Why the switch is only on the live wire? Raghavan, same funda, same. Agar, if you turn the switch off, bulb should not get any potential. In this case, if you think, in the second case, if you think, let's say fuse is working, okay? This is 220 volts and fuse is working and you have disconnected the switch. 220, 220, 220. Your bulb is still getting 220, है ना? Neutral connect नहीं हुआ है लेकिन उसमें potential है. कोई बंदा बल्ब का कांच तोड़ के या फिर बल्ब में let's say there was some problem and someone touched the filament of the bulb, उसको करंट लग जाएगा. ठीक है? Parallel, SB8. चलो, come on. Question number 20. In last question I gave you two basic things. ठीक है? Fuse और switch दोनों पहले आएंगे appliance से और दूसरा फ्यूज हमेशा पहले आएगा so that it can protect all of the things coming after it. इसके बाद जो आएगा ना उसको प्रोटेक्ट कर पाएगा. चलो क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों. assertion reason. assertion reason. रामेश्वर मेंटी नहीं है. yes. और बच्चों all these questions अभी तक ये लास्ट क्वेश्चन भी it has been done in the one shot. it has been done before. हम लोगों ने किया हुआ है. D, everybody saying D, huh? ओके बच्चों सुनो. एसर्शन और रीजन. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट याद करो जरा. जस्ट रिमेंबर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. हु गेन्स अ फोर्स और इन अ मैग्नेटिक फील्ड हु गेट्स अ फोर्स? सर करंट कैरिंग वायर. बिकॉज करंट में चार्जेस आर फ्लोइंग. चार्जेस आर फ्लोइंग, दैट इज वाई दे आर गेटिंग अ फोर्स. ठीक, ओके. एंड इन योर क्वेश्चंस, एनसीईआरटी क्वेश्चन, एग्जाम्पलर क्वेश्चन, तुमको याद होगा we have done this question कि there is a magnetic field and electron or cathode ray is going in this direction, which side will be the force acted, है ना? ये क्वेश्चन किए हैं हमने. इससे क्या पता चलता है? if charges are moving they will experience a force in the magnetic field. yes. अगर एक चार्ज को चुपचाप बिठा दिया जाए ऐसे in a magnetic field, let's say a charge is kept silently at rest, it has only electromagnetic field, it has only electric field, है ना? so यहाँ पर क्या है ना, the charge is not moving, so only moving charges they get a force in the magnetic field because they generate a magnetic field of their own. so यहाँ तक आधा बेसिक तुमको पता होगा ना, तो क्वेश्चन हो सकता है. assertion क्या बोल रहा है? a stationary charged particle placed in a magnetic field experiences a force. ये तो गलत हो गया. Charged particle needs to be moving because in my basics of magnetic effect I have seen current carrying wire gets a current, है ना? Sorry, gets a force. Reason देखते हैं. A stationary charge does not produce a magnetic field. Who will repel a magnet? A magnet, right? So moving charge produces magnetic field which opposes the magnetic field or supports it. That's why it gets a force. भाई अगर चुपचाप बैठा हुआ चार्ज है, इसमें तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, इसमें तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसीलिए इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा. सो पहला तो गलत हो गया. एंड वंस द मोमेंट यू फाइंड ए इज रॉन्ग, देयर इज नो अदर ऑप्शन व्हिच कैन क्लैरिफाई दिस. इवन दो अगर आपको रीजन पता नहीं था सही है कि गलत है, you had no other choice. The moment you understand कि भाई assertion is wrong, the only possible option is option D. yes. देखो बच्चों एक बार ध्यान से सुनना एवरीबॉडी. ये जो प्रैक्टिस पेपर है ना, ये आपकी नॉलेज चेक करने के लिए नहीं है. दिस प्रैक्टिस पेपर इज नॉट टू चेक हाउ मच नॉलेजेबल यू आर, इट इज टू चेक हाउ मच स्मार्ट यू आर. दिस क्वेश्चन you might feel sir this is class 12th concept. बहुत लोग बोलेंगे तुमको ये. lot of teachers will tell you it's a class 12th concept. नहीं. the assertion is something which is there in your syllabus. reason is not there, I accept, but only with the knowledge of assertion you can correct this question. बात clear हुई? yes, A is false. Vijay, I'm saying बच्चा कि current carrying wire experiences a force in the magnetic field. Current carrying wire has moving charges, right? And you have done these questions in your NCERT exemplar कि भाई cathode ray is going in a magnetic field, which side it will bend, है ना? Alpha particle are moving, which side they will bend.
every time they were moving, they were not sitting. So sitting charges don't get force. Yes. Probability. Arugan, bacha, it's not up to us. We can be prepared for the worst, and that is why I'm here today. Yes. Hardik, no, you won't. Yes. Sunil, I would answer this question right now, bacha. Okay, fine. All right. A is false, but R is true. Is this clear? With half knowledge also, you could have solved this question. तुमको reason नहीं पता था, it's okay, but assertion पता था. All of you knew that assertion is false, and that is why option D is the correct answer. And reason के लिए मैं बता रहा हूँ तुमको, है ना? Charges at rest do not have magnetic field. That's why they don't get a force in the magnetic field, right? Moving charges only get a force. Clear है? Rohit, I just explained, बच्चा. Correct. We shine. I won't answer this. Anyone from? अरे यार, चमक गया, बहुत बढ़िया, very good. चलो, come on. With this, section A is done. Section A was only this much. ठीक है, इसके अंदर 5 क्वेश्चन थे. They were objective questions and they were not difficult questions. I want to tell you this. अब आता है section B और 2 marker questions. ठीक है, yes. जय कुमार, बच्चा, section A में 5 क्वेश्चन थे, है ना? और अगर ध्यान दे, everybody notice, लाइट और ह्यूमन आई में से एक भी क्वेश्चन नहीं था. सेक्शन ए में एक भी क्वेश्चन नहीं था उसमें से, राइट? ये है सेक्शन बी, और सेक्शन बी में एक्चुअली एक ही क्वेश्चन आया है. सुनो जरा. व्हाइट लाइट इज पास थ्रू अ प्रिज्म टू यील्ड अ स्पेक्ट्रम. ध्यान से करना. हेलो, गुड इवनिंग किड्स. इंग्लिश हिंदी, डोंट फाइट इन इंग्लिश हिंदी. कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट. आई विल एक्सप्लेन इट टू यू वॉट एवर लैंग्वेज यू अंडरस्टैंड. ठीक है, ओनली इन इंग्लिश हिंदी. उसके अलावा आई ऑल्सो डोंट नो एनीथिंग. ठीक है बच्चों, हिंदी इंग्लिश की लड़ाई मत करो. सुनो ध्यान से, समझो ध्यान से. इट्स इंपॉर्टेंट. तैयारी कर रहे हो बोर्ड की, सीरियसली करो, वरना रहने दो. ठीक है, लिसन टू मी. इंग्लिश हिंदी, नथिंग विल मैटर. यू लिसन केयरफुली. Question says white light is passed through a prism to yield a spectrum. Okay, white light, prism and spectrum. I know what will happen, है ना? The ray of which color will show the maximum angle of deviation and which one will show the least angle of deviation? You tell me now. Red is less deviation. Pooja is saying. Hello Apurva. Yes. Violet has max. Rehan is saying. Aakash, Akshdeep, bio का फिर इसके बाद होगा. Violet is max. सौम्या, प्रैक्टिस पेपर सॉल्विंग. सीबीएसई ने, बच्चों, सीबीएसई ने ये प्रैक्टिस पेपर रिलीज किया है बोर्ड के बच्चों के लिए. तुमको नहीं पता है तो अभी सुन लो ध्यान से और समझ लो इसको. ये प्रैक्टिस पेपर मुश्किल है. बहुत लोगों ने बोला कि मुश्किल है, बहुत टीचर्स ने बोला कि यार ये तो क्या आ गया. प्रैक्टिस पेपर ये अच्छा है. इट टेल्स यू कि मे बी ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे बोर्ड्स में. हमारा काम बनता है इसको सॉल्व करना. सीबीएसई ने अगर तुम्हारे लिए कुछ रिलीज किया है तो सॉल्व करना सीखो उसको, राइट? Violet max, red minimum. Okay. Yes. Red least. Okay, okay, okay. See, ये बड़ा बेसिक है ना? इस पे हमने बहुत बात करी हुई है ऑलरेडी. I'll tell you more. कि भाई, the ray of which color will show the maximum angle of deviation? Angle of deviation क्या होता है? जहां ज्यादा बेंडिंग होगा वहां पर ज्यादा डेविएशन होगा. Violet bends the most, scatters the most. Red bends the least, scatters the least. Remember this poem, है ना? We have learned this and we have understood this thing कि भाई red bends the least, scatters the least. Violet bends the most, scatters the most. जो ज़्यादा bend होगा, जो ज़्यादा refract होगा, it will also have more angle of deviation. ठीक है ना? सही बात है. Second, a blue colored ray is passed through a glass prism. What will be the color of the emergent ray? If I pass a blue colored ray from the glass prism, emergent ray का कलर क्या होगा? Yes, Somal, you're right. Blue, right? Red? Blue. भाई, we have done this experiment बच्चों, है ना? Green laser, if I take a green laser and pass it through the prism, it does not split. Why? It's only one color. How will it split? White light is a mixture. It will split. Only green, only blue, only red, they are single colors, they will not split, है ना? Correct. ठीक है? So देखो, this is about the first question. First question में it is violet, indigo, VIBGYOR. ठीक है? Right?
सबसे ऊपर होता है रेड, सबसे नीचे होता है वॉयलेट. रेड हैज द लीस्ट एंगल ऑफ डेविएशन. ये है एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड. एंड let me take violet लूं क्या मैं? नहीं, blue लेता हूं मैं. And this one has more angle of deviation. Look at this angle of deviation for violet. ठीक है, it is more. जो ज्यादा बेंड करेगा उसका डेविएशन ज्यादा होगा. सिंपल सी चीज है. Whatever bends the most will have the most angle of deviation, most value of angle of deviation. Clear? ठीक है ना? All right. A blue colored ray is passed through a glass prism. Color of emergent ray, it's a single color, it will not split. Simple सी बात है. That's why emergent ray will also be blue. So, how will you write the answer? And listen to me. If you remember, in the instructions, board has told you how much word limit you have to use. The ray of which color will show the maximum angle of deviation and which one will show the least? Question पूछा है, which color will have maximum angle of deviation, which will have least? Why is not asked? मेरे को ये बताना, कितने बच्चे, how many of you would have explained why it happens without even asking? कितने बच्चों की आदत है कि क्वेश्चन ने पूछा हो चाहे ना पूछा हो, लेकिन मैं भाई समझा के रहूंगा या रहूंगी? कितने बच्चे करते? Tell me. Me. You had explained. Hello Yavar. Yes. It's for 1 mark. Very good. है ना? No need to explain anything. भाई, why do you want to explain? Question is only asking you कौन सा कलर. Simple. Just answer that much. Extra क्यों बोलना है? Angle of deviation is maximum for violet and minimum for red. That's it. एक नंबर के लिए इतना काफी है. फालतू क्यों लिखना है भाई? मार्क्स थोड़ी मिलने वाले हैं उसके, नहीं मिलेंगे, है ना? चलो. A blue colored ray is passed through a prism. Which color will be the emergent? And justify your answer. यहाँ पर explanation पूछा हुआ है. The question is asking you why in this case. Now you have to explain, but short, point to point. That's why the emergent ray will be blue in color. Clear? Yes. You only answered this abhi. Monochromatic light will not get dispersed on passing through a prism, and blue color ray cannot split any further. 1 mark यहाँ पे, 1 mark यहाँ पे, 2 marks done. इजी है ना? यस. मोनोक्रोमैटिक, एमएलबीटी में मोनोक्रोमैटिक मींस बच्चा, मोनो मींस सिंगल, क्रोमैटिक मींस कलर. सिंगल कलर ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज मोनोक्रोमैटिक लाइट. यस, है ना? यस. Yes, everybody, a big round of applause for Yavar. Very good, Yavar. Yes, thank you, nice. Understood? Very good. Sushmita, I just explained, bachcha. Only white is composite color. हाँ, yes, you are right, Vijay. ठीक है? Very good, Yavar. Yes. All right. बोर्ड में इतना हार्ड बच्चा हम बोल नहीं सकते ना. आपको क्या पता, हो सकता है आ जाए. चलो आगे चलते हैं. All right, come on. Next question. Question number 25. Yes. अरे relax बच्चों. अरे Yavar is here to time pass. These are those kids in exam. No, these are the kids sitting in the last bench and they were like, अरे यार मैं कुछ पढ़ नहीं पाया because I was doing time pass. होता है, चलेगा. Come on. Yes. गुस्सा अरे नहीं यार. This is good. Very good, है ना? Come on. Question number 25. Let's see. Same question में there was an or given to you. याद है? In the same question there was an or given to you. Means you had a choice. Myopia is also known as nearsightedness. This was one more part which was an option for you. अगर आपको पिछला question नहीं करना है, you can attempt this question. A person with this defect has the far point near than infinity. Draw a neat ray diagram to depict image correction for a myopic eye using a suitable lens. कितने बच्चों को याद है? How many of you remember that while studying human eye, है ना? We have done this diagram. And I told you कि ये diagram याद कर लो, ये diagram बनाना सीख लो. You have to practice diagrams because myopia और hypermetropic diagrams आ सकते हैं. Yes, correct. नहीं यार, you are future decide बच्चा. You will become president of Sri Lanka, है ना? Very good. You remember, right? डायग्राम बच्चों, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया के डायग्राम बहुत जरूरी हैं. क्यों? क्योंकि ये नॉर्मली हमको लगता है नहीं पूछे जाते हैं, बट इट कैन बी आस्क्ड.
बेसिक बेसिक चीजें हैं इस डायग्राम में. माई सजेशन वुड हैव बीन, देखो अगर ये क्वेश्चन आता ना तो हो सकता है इससे पहला क्वेश्चन जो था दैट वाज मोर इजी क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली लिटिल डिफिकल्ट बिकॉज डायग्राम में देयर इज अ चांस यू माइट लूज मार्क्स. भाई कुछ क्लियरली नहीं बना, एक चीज छूट गया, एक चीज नहीं छूटा, राइट? इसका डायग्राम याद है? करेक्ट है ना? वेरी गुड है ना? वी हैव कवर्ड दिस पोर्शन. यू रिमेंबर दिस. myopia, short word, short sightedness means short range objects look fine, far objects look bad, right? इसका मतलब दूर का दिखाई नहीं देता है, पास का दिखाई बढ़िया देता है, right? What is the problem? If you are able to see far near objects clearly means your lens is becoming thick very nicely. If you're not able to see far objects, your lens needs to be thin. It is not able to become thin, है ना? Lens thick रह जा रहा है. It is converging more. The image will be forming in front of the retina, correct? Right? है ना? अब सुनो. Idea is to use a corrective lens such that the image can be formed on retina. हम ऐसा लेंस यूज करेंगे जिससे कि इमेज बन जाए रेटिना पे. मायोपिया के लिए we have a corrective lens of concave lens. Why? Because हमारा लेंस ज्यादा कन्वर्ज कर रहा था. My eye lens was converging more. I want a lens जो कि converging कम करे, जो कि डाइवर्ज करे. इसीलिए concave lens is the corrective lens for myopia. है ना? बहुत अच्छे. Very good. So that's why डायग्राम बनाना है यूजिंग द करेक्टिव लेंस. आप देखो देयर इज अ कॉनकेव लेंस, राइट? यस सिंधु, बिकॉज इन हाइपरमेट्रोपिया लेंस रिमेन्स थिन, राइट? For near objects, you have to have a thick lens so that it can converge more. But your lens remains thin, that's why it is not able to converge more, and that is why the image is formed beyond retina. ठीक है? Krish, same color will come out, no problem. ठीक है ना? So इसीलिए हमको कॉनकेव लेंस के साथ डायग्राम बनाना है, राइट? क्लियर है? अब सुनो, O dash is the far point of normal eye. For normal eye, the far point is infinity. From infinity, rays will be parallel, right? है ना? Yes. Pass through retina. अच्छा नहीं सिंधु. Oh sorry, सिंधु नहीं. That's they want to form image wants to be formed beyond retina, but it will not. Don't be confused like this. हाँ अंशुल होंगे बच्चा, डोंट वरी. आज बड़े अच्छे क्वेश्चन आए हैं मैग्नेटिक इफेक्ट से. मैंने बताया था तुमको व्हेन आई वाज सॉल्विंग दिस चैप्टर फॉर यू, एंड आई टोल्ड यू कि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कम आते हैं बट केस बेस्ड आते हैं, और आज वही हुआ है ना? हेलो. O dash is the far point, it is infinity, so lines will be parallel because from infinity lines comes parallel, है ना? O is the far point of myopic eye which is supposed to be between only. ठीक है? Infinity से जो light आती, without this lens it would have been formed over here, let's say. But now because of this concave lens, ये पता है कि image will be formed on the retina which will be bright sharp image. ठीक है? सो आपको क्या करना है? सुनो एवरीबॉडी, लिसन 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 लिसन. भाई आंख का डायग्राम बनाओगे जब, राइट? व्हेन यू मेक दिस डायग्राम ऑफ आई वांट यू टू डू दिस स्मॉल थिंग. मेक अ लेंस, ठीक है? मेक अ लेंस एंड यू मेक दिस रेटिना, करेक्ट? फ्रॉम फार, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ कॉनकेव लेंस लाइक दिस, ठीक है? कॉनकेव लेंस लेके आओ, इसको डाइवर्ज करो, डाइवर्ज द रेज लाइक दिस, ठीक है? You diverge the rays and then you converge them to form image on the retina, ठीक है? So this is O, which is the far point of normal eye, but this is, और ये near point कैसे निकालोगे? Listen to me. इस लाइन को ना डॉट 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 करके यहां तक ले आओ, डॉट 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 डॉट. हाँ, ये हो गया तुम्हारा O dash. It is the far point of myopic eye. और ये आई तो बना लेना अपने आप, ठीक है? That's how you will make this diagram. मैं भी सिखा रहा हूं कैसे बनाना है डायग्राम, ठीक है? गलती नहीं होनी चाहिए. I don't want one single mistake in this. फालतू के नंबर जाने नहीं चाहिए, बता रहा हूं मैं. Yes, करेक्ट, क्लियर है?
Chirag bacha, good question, but right now I won't take this question, है ना? Let's focus on practice paper. Otherwise, everybody will get lost. And this practice paper is extremely important because right now this paper is considered to be tough. So make sure you are able to solve every question of this practice paper, है ना? ठीक है? Yes, बढ़िया. चलो. तो इसीलिए इस क्वेश्चन में केवल डायग्राम था, so that is why this was of 2 marks. And with this diagram, you would have got 2 marks, not a problem. अब ये बताओ, which question would you have attempted? This was an optional question, है ना? And last question you just saw. इन दोनों में से तुम कौन सा attempt करते? You tell me first. Yes. Come on. Second. First. Second option वाला. Both नहीं. Nobody should attempt both. There is an or given to you, मतलब attempt only one. दोनों करने से कोई फायदा नहीं है. First. Second. अच्छा सुनो everybody. See, it's completely your choice. Whichever question you are comfortable with, you would attend that. लेकिन my suggestion is, if let's say you know both the questions, है ना? मान लेते हैं you knew both the questions. Now you have a choice. I would suggest go with the first one. I'll tell you why. Because this question will take time in diagram drawing. आपको diagram draw करना पड़ेगा और neat diagram चाहिए हम. We want a clear neat diagram. So this question is slightly time taking than the last one. So this only is true when you know both the questions. है ना? आपको अगर दोनों ऑप्शन आते थे तब मेरा सजेशन है पहला वाला कर देना. लेकिन अगर हमको यही आता था तो फिर यही करोगे भाई, है ना? इसमें क्या कर सकते हैं? करेक्ट है ना? वेरी गुड. चलो. एंड सेक्शन बी से फिजिक्स में केवल 2 मार्क आए. देख रहे हो? सेक्शन ए आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस ओनली 5 क्वेश्चंस वर फिजिक्स. सेक्शन बी वी हैड ओनली 1 क्वेश्चन फ्रॉम फिजिक्स, दैट इज 2 मार्क्स. अभी तक फिजिक्स में कुछ किया नहीं है, अभी तो फिजिक्स स्टार्ट हुई है. सेक्शन सी 3 मार्क्स. इसमें पता है कितने आया है? वी हैव 9 मार्क्स. 9 मार्क्स. एंड बाय द वे, आई वांट टू टेल यू वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग. आई फॉरगॉट टू टेल यू. इन सीबीएसई प्रैक्टिस पेपर इस डायग्राम के लिए दे हैव गिवन मार्किंग स्कीम ऑल्सो. पता है तुमको? लाइट रेज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, दिस इज ऑफ 0.5 मार्क्स. कॉन्केव लेंस, to make this concave lens we have 0.5 marks. Lens of the eye, this lens is of 0.5 marks. And then image formed on retina, this image is of 0.5 marks. And no marks are awarded for incomplete diagram. So इस diagram के लिए ऐसे marking scheme दी हुई है. It is given to you. So that's why I'm telling you. ठीक है? Yes. ये है marking scheme बच्चा. Srihari, this question is not required, no, right now. See, if I go into these questions, no, I don't want to go right now because others will be confused. That's why. Practice paper, and if something is relevant, I'll definitely take it. Clear? Chalo. Aa jao. Section C. We have 3 questions from section C which have been given in practice paper. और ये 3 question physics के हैं. यानी कि 9 marks physics से section C में है. Yes? ठीक है? तब तो first ही करूंगा. That is why I was telling you कि first वाला ज़्यादा safe है. This second वाला is little unsafe. If you are very sure कि I can draw this diagram beautifully, then draw it, not a problem. Otherwise, my suggestion is go with the first one. ठीक है? Come on. अरे वाह, all the best Pooja. Come on with question number 30. Question number 30. This is first question of section C. An object of height h is kept at point P in front of a mirror as shown below. The height of the image produced is h dash. In the diagram, f is the focus and c is the center of curvature. बहुत easy question है. I will gain speed in this. Come on. If the object is now moved to point C, will the height of the image now produced be less than, equal to or greater than h? ये बताओ जरा. Come on. Height will decrease, Arugan is saying. All the way बच्चों for your pre-board. Same size. Equal to. अरे, listen to the question. Question बोल रहा है कि when the object is kept here at P, it has some image which will be beyond center of curvature. Sir, we all know. Now, if object is moved to point C, the height of the image now produced when the object is kept at C
will be less than, equal to or greater than h. पहले इमेज बन रहा था बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, नाउ इमेज इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर. पहले इट वॉज मैग्निफाइड, नाउ इट इज ऑफ सेम साइज. इमेज का साइज तो डिक्रीज हुआ ना, अरे डिक्रीज हुआ, डिक्रीज लेस देन. ठीक है, ऑप्शन बी, सॉरी क्वेश्चन बी, और क्वेश्चन बी तो न्यूमेरिकल है. ठीक है, ऑप्शन ए की बात करें अगर, ध्यान से देखो, पहले इमेज बन रही थी यहां पे, नाउ इमेज इज ओवर हियर. यहां पर साइज होगा सेम साइज, लेट्स से ऑब्जेक्ट की हाइट h है, यहां पर भी h होगा, यहां पर ज्यादा होगा ना, लेट्स से 1.5 h. सो ऑब्जेक्ट की हाइट तो डिक्रीज हो गई ना भाई, करेक्ट? नहीं 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 नहीं, डायग्राम नहीं बनाना इसमें. नो नीड टू ड्रॉ द डायग्राम बच्चों. कैसे लिखोगे, सुनो कैसे लिखोगे. द हाइट ऑफ द इमेज प्रोड्यूस्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट c विल बी लेस देन h. व्हाई? The magnification of the image obtained when the object is placed between C and F in front of concave mirror will be greater than 1 as it is enlarged. Magnification 1 से बड़ा होगा, सही बात है. When the object is placed at C, magnification of image is equal to 1 as it is the same size as the object. ठीक है, that is why size पहले से decrease हो रहा है, correct? Dashwant, no, it will decrease बच्चा. नहीं वैष्णवी, क्वेश्चन की लैंग्वेज. Kids, listen or read the language properly. If object is now moved to point C, the height of the new image or the image now produced will be less than, equal to or greater than height h. Which is height h? Previous height when the object was kept between center of curvature and focus. ठीक है, पहले जो इमेज की हाइट थी और अब जो हाइट बनेगी when you keep the object at center of curvature, क्या होगा डिफरेंस? क्या वो कम होगी, ज्यादा होगी, बराबर होगी? सर कम होगी, है ना? यस, वेरी गुड. ट्रिकी क्वेश्चन, ऑल राइट. चलो अगला वाला, इसका आंसर दे दो जरा फटाफट. इंडिया वाला टीचर ब्लॉक हो जाओगे बेटा आप. चलो बाकी लोग, विष्णु फोकस. यस, -20 कनिष्क सिंह, 40 आयुष. All right, देखो सुनो, this one is quite easy. भाई focal length of the mirror is 20 centimeters. Distance between points P and C is 10. भाई focal length is 20. ठीक है, distance between P and C is 10, right? ये distance हो गया 10 centimeters. Now इसका मतलब this was total 20. Why sir? Because radius of curvature is double of focal length. करेक्ट, ये टोटल होना चाहिए 40, राइट? ये टोटल 40 है, जिसमें से ये 20 है, तो बिटवीन C एंड F इट इज 20. 20 का हाफ इज 10 वेयर दिस पॉइंट P इज केप्ट. सो U कितना हो गया? व्हाट इज U? U इज -30 सेंटीमीटर्स, राइट? ये दिया हुआ है 20, दिस इज गिवन टू यू एज 10, मतलब दिस इज ऑल्सो 10. सो U बिकम्स 30 सेंटीमीटर एंड लेफ्ट साइड में है तो माइनस. ठीक है, -30 सेंटीमीटर. वेरी गुड. सुरभि आज 9th की शायद नहीं है, मे बी. ठीक है, यू हो गया इतना. अब बात करते हैं फोकल लेंथ. F कितना है? F इज ऑल्सो ऑन द नेगेटिव साइड, ऑन द लेफ्ट साइड, सो F इज -20 सेंटीमीटर. नाउ यूज द फॉर्मूला, सिंपल मिरर फॉर्मूला यूज करो, आंसर निकालो. ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इतना है, डिस्टेंस बिटवीन P एंड C इतना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज P, सॉल्व करना है इसको, राइट? P equals -30, सिंपल मिरर फॉर्मूला. व्हेन यू सॉल्व इट, V इज -60. -60 आएगा बच्चा, ठीक है? When you solve it, the answer will be -60. Okay? बहुत बढ़िया. क्वेश्चन ने क्या पूछा था? Determine the distance between the images produced when the object is kept at P and C. भाई, when the object is kept at P, image is at -60. When the object is kept at C,
image is at C, which is 40. When the object is kept at C, image is formed at C, मतलब -40 पे बन रहा है. डिफरेंस बताना है. 60 minus 40 is 20, है ना? Questions are confusing? नहीं. आलोक बच्चा, my name is Saurabh. Questions are not confusing बच्चों. How -30? ठीक है, चलो, I am explaining this -30 thing again. बच्चों, listen to me. Question is saying focal length is 20, मतलब this length is 20. Yes. And distance between points P and C is 10. So this P is P, this is C, this is 10. अब सोचो, ये 20 है, ये 40 होना चाहिए. This should be 40. Why? Because radius of curvature is double of focal length. If this total is 40, then between C and F it should be 20. C and P is 10, मतलब P and F is also 10. बस, है ना? Clear? This is not the tricky one. I'll tell you what is the tricky one. Hello Sanvi. Arey wah. Sanvi, come on, we have a nice practice paper this time. I'll tell you what is the tricky one. This is the tricky one. Come on. This is a small tricky question. Yes. Come on, come on, come on. Question number 31, bachcho. Look at this. This whole question is of 3 marks. Harshit, solve, come on. A lens forms a blurred image of an object on the screen as shown below. भाई ऑब्जेक्ट ये रहा और उसकी ब्लर्ड इमेज बन रही है. क्यों? सर, शार्प बननी थी. शार्प कब बनती? अगर पॉइंट यहां स्क्रीन पे होता, बट पॉइंट इज नॉट ऑन द स्क्रीन. इसकी ब्लर्ड इमेज बन रही है. ठीक है. What changes you can make to the following to form a sharp and in focus image on the screen? Pargees, for class 10 bacha, we could not take separate classes. I'm sorry about that. But whatever is common, no, everything we have for CBSE and common for ICSE, you can definitely check that out. Yes. Use concave lens. Use concave lens. Nahin. Listen. What changes you can make to the following? आप इस सेटअप में क्या चेंज करोगे? What do you want to change such that you can form a sharp and in focus image on the screen? बच्चों, in focus image पता है कौन सी होती है? अरे, in focus image is this. This will be called as in focus image when light rays are converging at a point. ठीक है? This is called as in focus image. वैसी image लाने के लिए क्या करोगे? Earth's refractive index is just a measure of how optical denser a medium is. It's the ratio of speed of light in vacuum upon speed of light in medium. Come on. Adjust the position. You will bring the screen closer or far. Increase object distance. Alright. Object distance. एक चीज बताओ. In convex lens. Remember the basics, no? When object is beyond center of curvature, image is when object is beyond 2f, image is between f and 2f, है ना? When the object is at 2f, image is at 2f. When the object is between f and 2f, image is beyond and magnified. Yes. As you bring the object closer, image keeps on going far. है ना? सोचो. Archana, I just explained, bacha. It's a very small question, Archana, not required. It's the measure of how optical dense the medium is. ठीक है? Come on, focus on this question. No, if you ask me refractive index on this question, it won't matter. Bring the screen closer. You are right, Chirayu. That is one. And second is decrease the object distance. I told you, as you bring the object closer to the lens, the image keeps on going far. आप ऑब्जेक्ट को जितना पास लाओगे, इमेज उतना दूर जाता रहेगा. समझे? है ना? ये चीज अभी मैंने दिखाया तुमको. यही तो हमारे केसेस थे, राइट? आप ऑब्जेक्ट को पास लेके आओ, इमेज दूर जाएगा और स्क्रीन पे फॉर्म हो जाएगा.
Otherwise, you bring the screen closer. So you have two options. Either you decrease the object distance, right? Object distance is measured from the lens. So decrease the object distance, or you increase the focal length. Or या फिर you bring the screen closer. Yes. Geeta, it's okay, bacha. Then what are you doing here? Go somewhere else. Right? Musical shorts. Musical shorts. बच्चों सुनो. Object distance कम कर दो. I told you. जितना आप object को पास लेके आओगे, the more you bring the object closer to the lens, image will go far. There will be a point when this image can be formed on the screen. दूसरा, screen close लेके आ जाओ, है ना? या फिर आप lens का focal length बड़ा कर दो, right? So ये सब चीजें हैं. ठीक है? Question पूछ रहा था object distance में क्या change करें? What do we change in the object distance such that the image is formed on the screen? Object distance कम करो, तब image यहां बन सकता है. उसके बाद focal length of the lens. Focal length of the lens बढ़ानी पड़ेगी ना, right? Correct? Yes. Soham, boards of 10th. Chirayu, नहीं. Chirayu बच्चा, listen. Look at the question. Question is saying you what changes you can make to the following. What? To the object distance such that you get a sharp in focus image on the screen. Otherwise, what change can you make to the focal length of the lens to get a sharp in focus image? है ना? ये question ने पूछा है. If question asks what change will you make to the screen, then you can write your answer. Right? है ना? नहीं, it's okay. Got it? Clear? Very good. Chalo. Same question, rest of the parts. Sunita's ophthalmologist suggests her to use a lens of power -2 diopters to correct her vision. Bhai, -2D to correct her vision. What type of lens? Focal length increase. हाँ, लेंस का फोकल लेंथ बढ़ाओगे तभी तो वो दूर कन्वर्ज करेगा. अभी तो पहले कर रहा था. When you take object closer towards the lens, the image increases, right? Positively on that side. Concave lens. Musical shots, negative side only. Same side, na? हाँ, ये हो गया concave lens. What should be the focal length? Focal length कितना होगा? Quickly, come on, answer it. Focal length कितना होगा? Yes. Minus 0.5. हाँ भाई, 1/-2 कितना आ रहा है सर? -0.5 meters. यूनिट मत भूलना, वेरी इंपॉर्टेंट. An object is kept at 10 centimeters in front of the lens of power -2D. Find the distance where the image is produced. अरे रे, object u equals -10 centimeters, right? Power is -2D, मतलब focus focal length. For a concave lens, focal length is plus or minus, है ना? F is -50 centimeters. We have to find V. बस सिंपल सी बात है. करेक्ट. अब सिंपल कैलकुलेशन है बच्चों, अब कुछ नहीं है. लेंस फॉर्मूला यूज करो. कॉनकेव लेंस इज यूज्ड, -50 सेंटीमीटर फोकल लेंथ हो गई है. ऑब्जेक्ट लेंस -10 -50 फॉर्मूले में रखो, आंसर निकालो, आपका आ जाएगा -3/25. दैट इज 1/v. सो v आएगा आपका, v will come out to be -25/3 and when you solve you will get the answer as -8.33 centimeters. ठीक है, कैलकुलेशन सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है. या दिस वाज एन इजी वन. कोई नहीं अतुल. वेयर इज द पेपर फाउंड? विद्युत बच्चा, इट्स ऑन सीबीएसई वेबसाइट. इट्स ओके अंशुल. ठीक है, आ गया इलेक्ट्रिसिटी भाई. Again, this is another good question. आ जाओ फटाफट. Tanvi, electricity for you. Everybody, we have option also in this. Sunita had to replace the electrical plug of her clothes iron. She bought a 3-pin plug as shown below. When she removed the old plug, she saw that there were 3 wires connected red, black and green.
to which pin on the plug should she connect the green wire? Yes. Thank you, Sum. Yes. Come on. Disha, this practice paper was kind of scary. Last year board paper was very easy, but this practice paper is little on the higher side. P. Very good, है ना? अर्थ पिन के साथ. Very good, very good. To which part of the clothes iron is the green wire connected? हाँ जी. आयरन से ग्रीन वायर कहाँ कनेक्टेड है? ये अर्थिंग नहीं था. हाँ, ये अर्थिंग पिछली बार बहुत ऐसे हल्का फुल्का सा था, सच नहीं था. मेटल बॉडी है ना? वेरी गुड. अर्थिंग का वायर कहाँ कनेक्ट होता है? मेटल बॉडी पे ना? करेक्ट. स्टेट द फंक्शन ऑफ द ग्रीन वायर. अच्छा, अर्थिंग वायर का फंक्शन बता दोगे? यस और नो? टेल मी दैट. कैन यू राइट द फंक्शन ऑफ अर्थिंग वायर? यस और नो? इट्स ओके बाला. यस है ना? मेटालिक बॉडी, मेटालिक बॉडी. वेरी गुड, वेरी गुड. चलो ठीक है, यहां तक हो गया ना? इसको देख लेते फटाफट. सो वी ऑल नो कि भाई रेड होता है लाइव, ब्लैक होता है न्यूट्रल, ग्रीन होता है अर्थ. सो इसका आंसर होगा, आप कनेक्ट करोगे पी अर्थ से. ग्रीन वायर कनेक्ट टू द मेटालिक बॉडी बिकॉज यू वांट टू प्रोटेक्ट. State the function of the green wire. It prevents severe shocks by providing a low resistance path for any leakage current from the body of the iron to the ground. अर्थिंग का काम ही ये है कि भाई बॉडी पे कोई भी लीकेज करंट है ना, एंड व्हेन यू टच द बॉडी दैट करंट शुड नॉट पास थ्रू यू. It will get a low resistance path in this green wire form, which is earthing wire, and it will go to the ground very quickly, है ना? Yes, हाँ, prevent from leakage current. ठीक है बच्चों, this is a good answer, third वाला. ठीक है, fine. अब सुनो, we have two more options for this. Direct contact between which of the three colored wires will result in a short circuit? You tell me. इन दो में से कौन दो वायर का कनेक्शन टच होने से शॉर्ट सर्किट होगा? हॉलो स्पेस. आदित्य फोकस. बच्चा बच्चा फोकस करो. रेड एंड ब्लैक है ना भाई? लाइव और न्यूट्रल जब मिल जाते हैं तभी तो होता है ब्लास्ट, तभी तो होता है शॉर्ट सर्किट. करेक्ट है ना? सो लाइव और न्यूट्रल जब मिलेंगे तब होगा शॉर्ट सर्किट. सही बात है. ठीक है. स्टेट व्हाट हैपेंस टू द करंट द सर्किट इन द केस ऑफ ए शॉर्ट सर्किट. क्या होता है जब शॉर्ट सर्किट होगा? तो सर्किट में करंट के साथ क्या होगा? यस Yeah, this was an easy topic. Increase heavily, very good, है ना? So that's why ये basic है. Direct contact between the red and the black will result in a short circuit. Short circuit बोलते हैं जब लाइव और न्यूट्रल टच हो जाते हैं गलती से, है ना? तब होता है एकदम बूम. It's called short circuit. करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है because लाइव और न्यूट्रल के बीच में आना चाहिए रेजिस्टेंस. Without resistance, when you touch, ideally current is voltage upon resistance. When you touch, resistance is ideally zero. So current becomes ideally infinite. So very high current flows, and that's why you have a blast a lot of times. ठीक है? In case of a short circuit, there will be a drastic increase in current flowing through the circuit. This sudden increase in current is due to a decrease in resistance of the circuit as the live and neutral wire come in contact. Simple सी भाषा में you have to answer this. Very good, है ना? RDS Gaming, focus बेटा. अरे ब्लॉक हो जाओगे. Focus करो. Yes. विद्युत. हाँ बच्चों, न्यू कलर कोडिंग इज यूज्ड इंटरनेशनली बट इन योर बोर्ड्स इन द एनसीईआरटी स्टिल वी आर यूजिंग द ओल्ड वन. सो प्लीज मेक श्योर कि यू शुड नो दिस बेसिक है ना? लाइव न्यूट्रल वायर है ना? रेड ब्लैक ग्रीन. ठीक है. यस चलो, क्वेश्चन नंबर 36 एंड दिस इज from magnetic effect of electric current, and this was a good question. फटाफट आ जाओ बच्चों. विष्णु, can you blog RDS Gaming please? ये सॉल्व नहीं हो रहा, कोई बात नहीं. डर नहीं लग रहा है बहुत? नहीं, अरे इसको इंस्टा आईडी चाहिए पहले. इंस्टा आईडी, सोशल मीडिया यूज करो तुम, अभी शर्म नहीं आ रही है? Come on. Yeah, it's okay.
Murgeshwari, don't worry. I also have to hurry. Ankita ma'am just gave me a look. Come on. Listen to me. This question is good. Read it carefully. Don't be scared with the look of it. डरना नहीं है देख के. P and Q represent two straight wires carrying equal current in a direction perpendicular to the plane of the screen outwards. From P and Q, the current is coming outwards. ये ध्यान रखना भाई, ठीक है? K is the midpoint of the line. K है midpoint. Okay. Joining P and Q, the image shows the magnetic field lines around the wire, but the direction of the magnetic field is not marked. पहला, first. समझ नहीं आया? जानवी, बच्चा, P and Q जो सेंटर में है ना, this P and this Q. Current is coming out from this and these circles are magnetic field lines around this current carrying wire. Direction is not marked for you. Question बोल रहा है इतना. This is the question is talking to you right now. Question is asking you first, draw the above image and mark the direction of the magnetic field. Can you do it? Right hand thumb. Current is here, fingers are here. Current is here, fingers are here. Right? Simple. So, for first one, what will you say? Sir, current is coming out. So, I will take my finger. Current is coming out. I will curl it. So, that's why. This is the direction. Same thing. Current is coming out. This is the direction. Done. And that's how we will say this is the direction of magnetic field lines. First one was easy, है ना? Correct? ठीक है? ये हो गया. Yes. अनमोल, अरे दोबारा ब्लॉक हो जाओगे मेरे दोस्त. तुम सब ध्यान दो जरा. क्या कर रहे हो? नहीं. अंशुल. Yes. Question B. If the current in the wires is increased, ध्यान से सुनना, सब बेसिक साइंस है, सब बेसिक तुमने पढ़ा हुआ है. If the current in the wires is increased, इन दोनों वायर्स में अगर हम करंट को इंक्रीज करेंगे, how will the strength of the magnetic field around P and Q change? तुमको अगर ड्रॉ करना है, draw the magnetic field lines around P and Q to represent this change. तुम क्या करोगे? What will you do differently? Yes. हाँ, magnetic field strength increases means what? Close. Very good, Hiteshi. Very good, है ना? Close. These lines will be closer to each other. So what will you draw? You will draw something like this. है ना? ज़्यादा सर्कल बनाना और close बनाना. You have to draw more circles and closer to each other. ठीक है? Fine. All right. So magnetic field strength will increase with increase in current through the conductors. और नीचे आएगा diagram. And that's how you will get 0.5 marks over there and 1 mark over here. ठीक है? चलो भाई. See, third question. If B is the magnetic field at point K due to current in wire P, what will be the magnetic field due to P and Q at the midpoint K? Give a reason for your answer. इसका बताओ. समझ नहीं आया? अंशुल, बच्चा, अगर हम करंट बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा, राइट? है ना? एंड हाउ टू रिप्रेजेंट इट? ज्यादा लाइंस बनाओ और क्लोज बनाओ. ठीक है? यस. जीरो. आनंद सिंह, जीरो, है ना? वेरी गुड. If the magnetic field at point K due to current in wire P, what will be the magnetic field due to P and Q at the point K? Give a reason for your answer. Why zero? MLB teamer, good question. बच्चा देखो, point P पे let's say magnetic field lines are going like this. ठीक है? Point Q पे भी they are going like this. ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर गोइंग टू क्रॉस ईच अदर ऑपोजिट डायरेक्शन में, सो दे आर कैंसलिंग ईच अदर आउट. इफ लेट्स से हियर एट पी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वर गोइंग लाइक दिस एंड हियर करंट वाज इनसाइड, है ना? करंट अगर इन होगा, इफ करंट इज इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी लाइक दिस. करेक्ट? सो यहां पर क्या होगा? इट विल फॉर्म इन दिस फैशन. यू नो व्हाट विल बी द ओवरऑल थिंग? यहां पर ओवरऑल थिंग पता क्या होगा? आप लोगों ने ये देखा होगा, व्हेन वी हैव नॉर्थ पोल इन फ्रंट ऑफ नॉर्थ पोल, डू यू रिमेंबर व्हाट हैपेंस? ऐसा हो जाता है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकम कंप्रेस्ड. यहां पर भी ऐसे ही होने वाला है. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बिकम कंप्रेस्ड ऐसे.
दे विल बिकम कंप्रेस्ड. ठीक है, यहां पर क्या होता है, इन दिस केस इट बिकम समथिंग लाइक दिस. ठीक है, राइट. हाँ, क्लियर है एवरीबॉडी? बायट सेवर्ट से कर सकते हो सोहम, बट अभी क्या है कि इस क्लास में बायट सेवर्ट से लगाने में दिक्कत होगी, औरों को समझाने में दिक्कत होगी, तो बेटर है बेसिक से करके देखो. कौन सा नॉर्थ और कौन सा साउथ? नॉर्थ साउथ की जरूरत है नहीं. व्हेनेवर यू हैव अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैंने ये पढ़ाया हुआ है, मान के चलो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन चल रही है नॉर्थ से साउथ की तरफ. यस, डिडंट गॉट दिस पार्ट चिरायू? लिसन बच्चा. In both points current is going outside, है ना? So magnetic field lines, you can think on P magnetic field lines are going like this, from Q they are coming like this. So opposite में they are crossing each other, right? So that's why at this point they will cancel each other out, you can say, ठीक है? And it will be zero. So that's why how will you answer this? Magnetic field at K due to P and Q will be zero because the magnetic field at K due to current in the wires P and Q are equal in magnitude because K was the midpoint. Remember, K क्या बीच में था, but opposite in direction. The two fields cancel each other out. In simple words, you can say this. ठीक है? Yes. Archana, you're right. Correct. All right, come on, D. If B is the magnetic field at point K due to the current in wire P, and the current in wire Q is reversed, मतलब previously in Q the current was coming out, right? है ना? पहले current was coming out, but now if let's say current is reversed, what will happen? What will happen? 2B, yes, है ना? ये current अगर reverse हो जाए अंदर की तरफ, if current is going inside, the magnetic field lines will be opposite. ऐसे, right? है ना? So you can say this one is coming like this and this one is also coming like this. They both are going in the same direction. 2B. Double the magnetic field. Correct? है ना? Magnetic field at K due to P and Q 2B when the current is reversed. Simple सी बात. So this was the section D 5 mark question. And now the last physics question from your practice paper, and this was the most difficult question as per the look of it. क्यों? इसकी language पढ़ो. This is the last question of physics. Yes. Of class 12th. हाँ, लग रहा है class 12th का है, but है नहीं. RDS Gaming has come again. कोई बात नहीं, दोबारा ब्लॉक हो जाएगा. कोई क्या दिक्कत है? RDS Gaming पढ़ाई कर लो बेटा, ब्लॉक करना पड़ जाएगा मेरे को. ठीक है? हाँ जी. अरे वाह समृद्धि, वेरी गुड. अंकिता मैम इज हियर, नहीं ऐश्वर्या मैम इज हियर. कम ऑन भाई, ये लास्ट क्वेश्चन फटाफट करेंगे. चलो ठीक है, अब सुनो. आई विल टेल यू व्हाई दिस क्वेश्चन लुक्स डिफिकल्ट. इसके अंदर वर्ड आ रहा है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, और ये पता था आईसीएसई वाले बच्चे पढ़ते हैं, आइदर आईसीएसई पीपल और 11th पीपल. नाउ यू विल से सर हमने तो पढ़ा नहीं. भाई क्वेश्चन में आई विल गिव यू वन स्मॉल स्टेटमेंट कि इन बोर्ड्स इफ यू सी सम वर्ड व्हिच इज यू डोंट नो, read the question. क्योंकि ये क्वेश्चन में आफ्टर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप इफ यू रीड दिस होल क्वेश्चन यू विल रियलाइज अरे यार है तो क्लास 10th का ही, इट्स डूएबल. ठीक है, पढ़ के देखो. यस, ये क्या है, डरो मत, सुन तो लो. द इमेज बिलो शोज द डिजाइन ऑफ अ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप. सर आई डोंट नो व्हाट इट इज. क्वेश्चन ने मेरे को डायग्राम दिया है. लुक इट फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ लाइट. वन सजेशन, look this whole question without panicking from the basics of light and you will solve it. ठीक है? ऑफ अ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप. ठीक है सर, कॉन्वेक्स लेंस था, पैरेलल लाइट थी, गेटिंग कन्वर्ज्ड, उसके बाद अगेन कॉन्वेक्स लेंस है, इट इज बिकमिंग पैरेलल अगेन. ठीक है, इट इज बिकमिंग पैरेलल एंड इट वाज पैरेलल हियर आल्सो. फाइन. व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म, different colors split and dispersion takes place. The same thing happens with a lens but to a much lesser degree. This is called chromatic aberration. बच्चों chromatic aberration क्या होता है ना, देखो प्रिज्म में होता है dispersion, यहाँ पर there is something called as chromatic aberration. ये मैंने पढ़ाया नहीं है, I accept, लेकिन इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं बहुत ज्यादा. When you have a thick lens ना, let's say this is white light, नहीं रुको, let's say this is
white light. Fine. Every color bends differently. So what happens? Red bends the least and violet bends the most. And that is why we get this kind of a chromatic aberration because of different bending in the lens. इसको बोलते हैं chromatic aberration. Colors split हो जाते हैं white light के, ठीक है, इसको बोला जाता है. मैं समझाने के लिए कर रहा हूं ये, ठीक है, अभी सुन लो. So this is about chromatic aberration and causes the different colors of light to focus at different points. भाई क्वेश्चन को तुमसे पूछना होता तो ये सब बताता थोड़ी, इंफॉर्मेशन दी हुई है. रिलैक्स, जस्ट रीड. To overcome this problem, the reflecting telescope was invented. पूरी कहानी है इसके अंदर, ठीक है जी, स्टोरी ऑफ टेलीस्कोप चल रहा है, पढ़ते चलो बस. One design of reflecting telescope is shown below. ठीक है, प्रॉब्लम थी कुछ क्रोमैटिक एबरेशन की, एक नया टेलीस्कोप बना दिया इन्होंने, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप. क्यों? ध्यान से देखो, वहां लेंस थे, यहाँ पर मिरर है. भाई वी हैव कॉनकेव मिरर, ये है क्या? कॉनकेव मिरर. प्राइमरी मिरर कैसा है? कॉनकेव है जी, वेरी गुड. सेकेंडरी मिरर कैसा है सर? कॉन्वेक्स है जी. सही बात है ना? क्लियर? क्वेश्चन पढ़ते चलो. अबे सुन तो लो, क्वेश्चन पढ़ रहे हो? हाँ, ग्रेस मार्क. तुमको ग्रेस मार्क क्यों चाहिए भाई? तुम मार्क्स लो, ठीक है, तुम सॉल्व करके मार्क्स लो, ग्रेस मार्क की जरूरत नहीं है. यस, पेशेंस होना चाहिए. सबने पढ़ा? दिस इज जस्ट अ स्टोरी. लिसन टू द स्टोरी, रीड इट केयरफुली एंड नाउ कम फॉरवर्ड. फर्स्ट क्वेश्चन. Why is there no chromatic aberration in reflecting telescopes? क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है भाई? In lenses refraction happens. Because of refraction dispersion also happens, है ना, थोड़ा थोड़ा. तो वहां पर तो क्या है, डिस्पर्जन हो जा रहा है थोड़ा थोड़ा, बिकॉज ऑफ थिक लेंस. भाई मिरर के अंदर स्प्लिटिंग ऑफ कलर्स डोंट हैपन, दैट इज व्हाई. ठीक है, व्हाट इज क्रोमैटिक? क्रोमैटिक मतलब कलर्स, कलर्स का स्प्लिटिंग होना. क्रोमैटिक एबरेशन, इट इज समथिंग विच इज नॉट रिक्वायर्ड, इट्स जस्ट एन एबरेशन विच इज हैविंग कलर्स. इट्स कॉल्ड क्रोमैटिक एबरेशन, राइट? बिकॉज ऑफ नो रिफ्रैक्शन. सुन लो भाई. So in mirrors, light comes and light goes. No bending, no refraction. That is why no chromatic aberration. But in prism or thicker lenses, we can have splitting of colors. Thoda thoda, right? So that is why we have chromatic aberration. So answer क्या है? In reflecting telescopes, the light rays pass through a single medium as there is no difference in the optical density. Light will not undergo refraction and thus dispersion. ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं क्या? देखो ये क्वेश्चन तो आई वुड से आने को आए नहीं आए क्या फर्क पड़ता है. आएगा, मुश्किल होगा सबके लिए होगा, आसान होगा सबके लिए होगा. बट मे बी इज जस्ट अ वे ऑफ द बोर्ड्स और सीबीएसई टू टेल अस कि भाई कॉम्पिटेंसी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, ये बोल सकते हैं. ठीक है, कौन सा चैप्टर से खुशी? ये ह्यूमन आई और लाइट का बेसिकली है. यस, आरडीएक्स. अरे मेरे भाई तुम सॉल्व तो करो, कम ऑन. राइट, चलो सेकंड बी क्वेश्चन. वन ऑफ द critical factors affecting a telescope is the amount of light it can gather. The more light a telescope can gather, the better the image it produces. कितना लाइट वो लेंस गैदर कर पा रहा है, that is the question, right? What can be done to the lens to increase the amount of light a telescope gathers? तुम बताओ क्या लगता है? मेरे को ज्यादा लाइट गैदर करना है. इफ आई वांट टू गैदर मोर लाइट, व्हाट शुड आई डू विद द लेंस? नहीं, अरे कॉन्फिडेंस नहीं जानेगा. यस, कम ऑन, पढ़ाई तो करो. कम ऑन. यस, 2B में B क्या है? अच्छा, B 2B में मैग्नेटिक फील्ड है. B उन्होंने बोला था ना कि मैग्नेटिक फील्ड B है, उस तरह से. इंक्रीज द एपर्चर, वेरी गुड. एपर्चर मतलब डायमीटर ऑफ द लेंस. भाई लेंस छोटा लोगे, इट विल कैप्चर लेस लाइट. इफ यू टेक अ बिगर लेंस, इट विल कैप्चर मोर लाइट, है ना? चश्मा मेरा बड़ा है, ज्यादा लाइट जाता है इसके अंदर. ठीक है, सच बात है. तो दैट्स व्हाई. हाँ, लेंस को चेंज करके लेके आओ बड़ा लेंस बेटा. ठीक है, खर्चा करना पड़ेगा बट इससे आंसर आ जाएगा. टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ लाइट, इंक्रीज द डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस. कौन सा लेंस? पहली बात, आई लेंस नहीं. पहला लेंस कौन सा है? वो वाला ना, right? That lens, the objective lens, is the first lens which is capturing the light. Increase that, make it bigger. और तुमने देखा होगा यार, टेलीस्कोप कितने लोगों ने देखे हैं? ये जो ऑब्जर्वेटरीज होती हैं,
पहला जो उसका लेंस होता है ना, इतना बड़ा बड़ा लेंस होता है ना, पूरी छत हटा के जो है वो लेंस लगाते हैं बड़ा सा, ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस को बड़ा करने का, increase the diameter of objective lens, increase the aperture of the primary mirror in case of reflecting telescope. क्वेश्चन बोल रहा था ज्यादा लाइट कैप्चर करनी है दोनों में। अगर दोनों का डायग्राम देखो, हाँ ये दोनों डायग्राम देखो जरा, अगर तुमको यहां करना है तो भाई मैं इसका साइज इंक्रीज करूंगा। यहां पर इन दिस लाइट पहले कहां गिर रही है सर, इस वाले मिरर पे। इफ आई मेक दिस मिरर बिग इट विल कैप्चर मोर लाइट, ठीक है। सो दैट्स वाई प्राइमरी मिरर को इंक्रीज करो या फिर ऑब्जेक्टिव लेंस को इंक्रीज करो, इन दोनों का एपर्चर बड़ा कर दोगे ज्यादा लाइट कैप्चर करने लग जाएगा, राइट। सिंपल सी बात है। क्लियर? आर्टिस्ट गेमिंग कर दो बेटा। हाँ देखो, पढ़ाई नहीं करोगे तो मैं चाहता भी नहीं हूं। इफ यू डोंट स्टडी आई डोंट वांट यू ऑन द चैनल, जस्ट गेट आउट, ठीक है। आई एम सेइंग स्टडी एंड देन स्टे। अनसब्सक्राइब कर दूंगा, धमकी दे रहे हो, भागो यहां से। चलो कम ऑन। Next, D. The light that reaches the telescope comes from very far away celestial objects. Listen, listen. Come on. Yes. हाँ, वर्ग एनर्जी के नोट्स बचा आ जाएंगे, don't worry. Come on. Option D में there are two options. The question D has two options for you. The light that reaches the telescopes come from very far away celestial objects. Draw a ray diagram to show what happens when light from a far away object falls on a convex lens and a concave lens. ये है वो क्वेश्चन जिसके लिए आपको इस पूरे का जरूरत ही नहीं था। यस है ना, करेक्ट। पैरेलल रेज की बात हो रही है, इंफिनिटी से बनाएंगे, सिंपल सी बात है ना। फोकस, राइट। या फिर अगला क्वेश्चन क्या है, द लाइट दैट रीचेस द टेलीस्कोप कम्स फ्रॉम वेरी फार अवे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, ड्रॉ रे डायग्राम टू शो व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट फ्रॉम फार अवे ऑब्जेक्ट्स फॉल्स ऑन कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। ये पूछ रहा है लाइट रे पैरेलल अगर कॉनकेव पे पड़ेगी या कॉन्वेक्स पे पड़ेगी, या फिर कॉन्वेक्स पे पड़ेगी तो क्या होगा। ये बोल रहा है कि लाइट फ्रॉम फार फॉल्स ऑन कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस तो क्या होगा। नाउ दिस इज अ सिंपल लाइट चैप्टर डायग्राम, द मोस्ट सिंपलेस्ट डायग्राम वी हैव, है ना, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है जी। सो दैट्स व्हाई कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव लेंस डायग्राम यू हैव टू ड्रॉ, और दिस इज द ऑप्शन 1। सेकेंड ऑप्शन में you have to draw the diagram with concave mirror or convex mirror, सिंपल सी बात है। and with this physics portion is done। सबके फर्स्ट केस हैं, है ना। चैप्टर 11 के न्यूमेरिकल, बच्चा न्यूमेरिकल सबके हो गए हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट का बचा हुआ है बस, करेक्ट। ये इजी था ना, यस। इंफिनिटी से फोकस। So that's why physically I'm telling you that it seemed like it's difficult, but questions were mainly from the first principles you have learned in class 10th. Class 10th के basic यूज हुआ है, इसके अलावा कुछ अलग यूज नहीं हुआ, ठीक है ना। क्लियर है। अब ये बताओ, फिजिक्स इज ओवर, कैसा लग रहा है, भारी था बच्चों। एक BNSPT करके है जो कि मैं समझ रहा हूं तुम्हारे बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, बट ये एग्जाम अच्छा है वैसे तो। आई वुड सजेस्ट कि इसको दे दो, इट्स नॉट जस्ट फॉर फन। There are 40 questions, science and math questions है, तुम भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम्हारे भी साइंस मैथ आने वाला है, राइट। If you give this exam, it's for your practice. Important thing is the report card. The report card is a very interesting 15-page report card which will tell you about what you can do in future. Session कौन सा चैप्टर है, कौन सा स्ट्रेंथ है, क्या weaknesses is you all know, but what can you do in future? भाई as per your answers you will be guided or you will be told कि भाई you are good in this kind of things and that's why you could become a good engineer, good doctor, good फलाना, good ढिमकाना, right? So this is a good report card. Go ahead, check it out. Interesting रहेगा, कुछ नया होगा, है ना। करके देखो, रजिस्ट्रेशन करने के लिए लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। यस, ये इसका वेटेज कितना है, टोटल फिजिक्स है 25 मार्क्स का। यस, you revise many concepts. Yes. हाँ अर्चना, डोंट वरी बच्चा। So with this physics is done and we have to go towards biology now and ma'am is looking at me for a very long time now. It's time for yes। हाँ मैग्नेटिक न्यूमेरिकल्स हो गए बच्चा। मैग्नेटिक इफेक्ट से आया था 10 नंबर का। क्या कम इनसाइड नो। So that's why see I was telling these guys कि it looked like the questions were difficult but they were mostly from the principles we have learned in class 10th. So that's why I think as a teacher's perspective this practice paper is good because when you practice you need to practice hard only. हल्का practice करोगे और पेपर भारी आ गया तो
है ना? All easy, very good. Yes, and I think most often they're not with physics. They tend thinking of the chapter only. They get very scared. Oh no, this is going to be tough. नहीं, bio में भी we have heredity, don't worry. So hello everybody. So I hope all of you are now energized and you're feeling confident about physics. Now we'll quickly move on. Sir, biology solve करवा दो. पूजा की आंखें पीली, पूजा की आंखें नीली. I saw that question in sample paper. Since then I was like, nah. Bio में तो I won't even stay. चलो, ma'am, all yours. And kids, take care. Bye bye. It was an easy practice paper, believe it. And those who have missed, बाद में देख लेना. ठीक है? चलो, take care. Yes. Bye bye. Thank you, sir. Bye, Thank sir. you. So hello everybody. I hope all of you are feeling excited after solving all the physics questions, right? So now quickly, before I get started, I want to ask you, now we're going to move on to the bio questions, for which I will be doing the multiple choice based questions and assertion reason questions. Ankita ma'am will be coming for the long answer based questions, your 2 marks, 3 marks, so on, right? Now I need you to tell me a very quick thing. You guys want a 4-minute break? Shall we start at 6 o'clock, or shall we start immediately? What say? Do you want a quick break? And then we'll start, or shall we get started with biology? We'll quickly get started, right? Ma'am, poll. Can we do a poll then? No break, no, continue immediately. Yes, okay, all right. So I am seeing a lot of mixed responses, but a majority, see, I do understand, because see, again, when we do sample paper solving, the main intention is that you all understand what we do, right? It should not be that we're going ahead. So it's okay. What I'll do is I'll give you, I know you don't want a break, but take 2 minutes break, okay? It is 5:57. I will start sharp at 6 o'clock, okay? Sharp at 6 I will start. Take 3 minutes. Even if you say you don't want a break, take 3 minutes, drink some water, stretch it out a little, and we'll be quick, okay? We'll be back at 6 p.m. All right? So take a quick break, because I understand that you want that. So take a break of 3 minutes. Quick water break. This is a water break for all of you. And you can get started. We will resume at 6 p.m. with the biology part. All right? 3 minutes. All right? I know you're saying no break, bacha, but take your time and learn it, alright? I mean, take it for yourself. Trust me, you need it even if you feel like you don't, right? Take 3 minutes. I'm going to start immediately at 6 o'clock. No delay there.
Yes, all right everybody, break time is over. I gave you a quick break and sharp at 6 p.m. we are going to get started with biology. Now before I get started with the multiple choice questions and the assertion based questions, I need all of you to tell me how you are feeling after solving the biology questions. I'm sure you have gone through the practice questions. So how did you feel about the biology questions? Did you feel that it was easy? Did you feel like it was doable, right? Questions were simple, right? It was not very tough. And hello everyone, hello Aarti, Kushi, Musical Smita, a lot of you are here, hello. Yes, everyone is like, ma'am, it's easy, right? Okay, Kamal, if you can go back and come back, okay? Please don't disturb the class. It was simple and moderate, right? Exactly. So see, the biology questions were easy. They were not very tough, but at the same time, you need to pay attention to some of the keywords because the questions are not asked directly, right? So some of them are application based and will test your competency, but at the same time, on the other hand, they were very direct also. So we're going to quickly get started, right? Yes, bio compared to the rest was easy, of course, that's always there. So let's get started everybody. We'll have the first multiple choice question for biology. Look at the diagram that is given below and identify the process that is taking place at Z. So you have A, B, C and D, that is reproduction, transpiration, photosynthesis and translocation. So what is the correct answer to this? What do you think is the process which is taking place at Z? All right, very good. Hello to everyone. Okay, most of you are telling me, most of you are having confusion between transpiration and the answer. Some of you are saying photosynthesis also. Now in this particular question, I can see most of you are giving me the correct answer. That is very good. Now in this question, see, you have a plant and you have three arrows, right? The arrow is moving outwards. Now, when it is moving outwards, the interpretation is that it is the byproduct that is there. So what is a process X which is giving you oxygen as a byproduct? It is your photosynthesis. What gives you carbon dioxide as a byproduct? It's your respiration. Then what gives out water as a byproduct, or what is released out in the form of water, right? Or in this case, water vapor, right? So in this case, we know that it is nothing but transpiration, wherein we know that there is loss of water in the form of water vapor from the aerial parts of the plant. So pay attention to the direction of the arrows. Now moving on to the next one. This is a very easy question, right? Now let's move on to this one. This is a very interesting question. Loved this question that the CBSE has set, right? So question number 9, everyone. You have an image-based question given to you. You have an experimental setup that is given to you. Lime water turns cloudy in the presence of a gas which is a byproduct of respiration, okay? So you have lime water and they're saying it is turning what? It is turning cloudy because of a certain gas that is a byproduct of respiration. Okay, which is the gas now? The gas that is produced is nothing but carbon dioxide. It is a byproduct of respiration. Now 4 setups are kept here, out of which you need to identify in which setup, right, will we expect this. So in which setup will the lime water be most cloudy? So you have setup P where you have a pot and you have lime water and it's covered with a glass jar. Setup Q wherein you have a pot, you have lime water covered with a glass jar, okay? But in this case, it's a potted plant. Now you have setup R and you have setup S. Setup R may you have a plant and in setup S no plant, but lime water is kept. But in R and S, what they have done is the glass jar is coated with black paint, right? It is coated with black paint. Now which among this will have most? Lot of you are telling me, ma'am, set Q. Okay, some of you are telling me, ma'am, set Q. While some of you are telling me set R. Now for those of you who are telling me, ma'am, set Q or R, ma'am, confusion. Yes, so can you justify, can you tell me what is your logic that you are using to tell me Q or R? Whatever it may be. Can you tell me what is the logic you are using? And then I will explain it to you. Yes? It will be done tomorrow, Indra. It will be done tomorrow. Okay, Mahatma, tell me what is the reason behind it. That is what I want to know. Okay, ma'am, the black paper. Okay, very good. It will absorb the carbon dioxide, ma'am. Most sunlight will be absorbed. In our light cannot be passed. Okay, very good. So there's a little bit of physics in this, right? So in this case, first and foremost,
Carbon dioxide should be given out as a byproduct of respiration, and respiration is done by living organisms, right? So in this case, P and Q, S you can eliminate because there is no plant only, right? You just have a potted plant and it's just there. And with just little amount of carbon dioxide in the air, it will not turn lime water milky. So you can eliminate out options P and S. Now you are left with set Q and R, okay? Now set Q, that is there, right? Set Q is having a glass jar. That means sunlight can penetrate. And we know that when sunlight can penetrate, and if it is kept in the day, we know that carbon dioxide can be utilized in the presence of sunlight to carry out photosynthesis, right? So it is not that respiration is not happening here, but rate of photosynthesis is higher, right? While on the other hand, in the case of setup R, the glass jar is covered with black paint. And when it is covered with black paint, sunlight cannot penetrate. That means what? Rate of respiration here is higher, right? I'm talking in terms of rate, which is why in this case, we see that the correct answer is option C, which is setup R. So are we clear? For those of you who are confused with, ma'am, is it setup Q or setup R? Are we all clear with this? Have we understood this? Yes? Are we clear? Ma'am, वो black paint दिख नहीं रहा था, so that is why I had written it down so that you all could see, right? See, it is okay if you have gone wrong here and there. That's not the problem. See, whatever mistakes you make right now, don't worry about it, because this is where you make the mistakes and you learn, right? So don't worry about it. Ma'am, I didn't understand. No problem. I'm just going to explain this question once again, okay? So you have 4 setups which are given to you. Setup P, setup Q. So you have P, which has pot plus lime water. I'm just going to put LW. You have Q, which has plant plus lime water kept inside a glass jar, okay? Then you have setup R, which has plant, okay, plus lime water, plus this has black paint on the glass jar, okay? So you have an extra condition here. And then last but not the least, you have setup S, which has pot plus lime water and same black paint plus glass jar. Okay, I'm writing short forms for all of you. Now moving on, in this case, setup S and setup P we can eliminate. Why? Because in both cases there is no plant, there is no living organism to do respiration. So we will eliminate out these 2 options. Now what are you left with? You are left with Q and R. Now in both Q and R you have your plant, that means respiration is happening. But here it is a glass jar and we have said that it is exposed to sunlight for 24 hours. Now through a normal glass jar, sunlight can pass through, which means that photosynthesis can happen and rate of photosynthesis will be higher. So whatever carbon dioxide gets produced will be utilized for photosynthesis. But in this case, when you look at when the glass jar is painted, right? So let's say we paint it with maybe, you know, the black paint. I'm going to use yellow color for your understanding. So you paint it, you give it a coat. Pay attention to. All right. Ma'am, what if it's night time? See, again, like I said, are we facing a lag? Is it all clear now? Are we all clear? Is the lag gone? Is it better right now? Good to go? Now, okay, ma'am. Okay, amazing. Lucky, Surbi ko padna chahiye. Abhi tum bhi pad lo. Okay? All right, very good. So that's why the correct answer here is option R. Yes, I know this paper is difficult, but that's why we are here to solve it with all of you. So don't worry about it, okay? Now moving on to question number 10. Yes, question number 10. Now, a homozygous dominant guinea pig with black fur is crossed with homozygous guinea pig with white fur. The F1 generation is crossed with itself. What is the percentage of F2 generation that shows white fur? Everybody, I need you to give me the answer to this. So we have homozygous dominant guinea pig with black fur. Directly, indirectly, they have told you black fur is dominant, right? Black fur is dominant while white fur is recessive. Yes? So we have done the crash course for heredity and PYQ. So you should be getting the answer correctly. Right?
So they are asking you percentage of F2 showing white fur. Okay, so now we are saying homozygous black, right? So this is homozygous black fur crossed with homozygous white fur. That means what are your gametes? These are your gametes that you will get, and of course as a result of it in your F1 generation you will get heterozygous. All will be black fur but they will be heterozygous. Now they are saying on selfing this. So if you take this and if you self it, what are you going to get? Let's draw up Punnett square, right? So if you draw up Punnett square in this and fill in our gametes, we see that most of them, 75% of them are going to be black, while only 25% of it is going to have white fur, which is why the correct answer here is option A, 25%, right? So in this case, as you see, the correct answer is option A. So are we all clear with this? Are we all clear? It's not self-cross a guinea pig, self-cross the progeny. So take two progeny and then cross them. It's just that their genotype is the same, right? Yes, very good everybody, very good. Yes. Rashi, Shreya Verma is there, but Shreya Verma is paying attention in class, and so will you. Now moving on to the next one. Person X suffers from a condition that affects the normal functioning of the pituitary gland. Which of the following is most likely to have a direct effect on the person X's condition? So we're saying that there is somebody, person X, who's functioning. So the functioning of the normal functioning of the pituitary gland is affected. So what is going to happen? So for this you should identify or remember what is the role of pituitary gland. Now pituitary gland is of course the master gland which produces a hormone known as the growth hormone, right? So which means that if the normal functioning and production of growth hormone gets affected, which part is going to get affected? Very good. It is the growth of the body. So insufficient production of growth hormone can affect the body and cause dwarfism, right? Or it can result in stunted growth and so on, right? Not insufficiency of iodine, because iodine is again necessary for thyroid gland. Irregular heartbeat and blood sugar is again with respect to pancreas and production of insulin. Irregular heartbeat again mostly has to do not with the pituitary gland, right? So correct answer here is option C. Now moving on to the next one. Very interesting question. The time duration from the sowing of seeds to the harvest of crops is critical for agricultural purpose. Based on the information above, select a reason as to why farmers prefer vegetative propagation for growing crops. So see, this question is on vegetative propagation, but they have not asked you anything directly. They have said based on this sentence and this sentence alone, right? Based on this statement alone, select a reason as to why farmers would prefer vegetative propagation. Now most of you are telling me, ma'am, the answer is C. Can you justify? Yes. Can you justify this in the chat? Is this case based? This is not case based, but this is an application based, you could say, right? Yes, very good. It's more appropriate. They grow faster. Exactly, Isha. We are talking with respect to time duration, right? So your key word here is time duration in the question. So they're saying the time duration for sowing of seeds. So basically, from sowing of seeds to harvesting my crops takes a long time. Now I want a more faster method of growing. Which among the following will it do, right? How, or with respect to vegetative propagation, which is more appropriate? It is option C. Because we know that through vegetative propagation, we know that it tends to grow much faster, right? So the correct answer is option C. Option B, which is offsprings are genetically similar, is not relevant. Vegetative propagation does not depend on external agent, again it is not relevant. Seedless crops can also be produced, again not relevant, right? Yes, exactly. Ma'am, because farmer faced problem over rainfall. Yes, that's also a problem, right? But what is this question telling you? The question is telling you that if I was a farmer and I took seeds, I took care of it, for my plant to grow, it may take about 6 to 8 months depending on my plant. But if I do vegetative propagation, I will get the fruits much faster than when I go through this process. Which is why in some cases, we see that vegetative propagation is preferred, right?
Is auxin the medium for vegetative propagation? See, in vegetative propagation, what do we see? We see that the vegetative parts, right? So we see that the vegetative parts that are there, like the root or the stem or the leaves, they are used. And we know that in such cases, the meristematic tissues will be there, and we see that the growing parts or the growing regions are used in such a way that growth is, done. Which is why this is something that we need to know. So Priyanshu, I hope now you are clear. Mahi, again, like I said, these questions will give you an insight of what kind of questions can come, right? So I hope now you are clear with this. Does not produce seeds is not technically a right answer, because with respect to this does not, because they're saying specific to the information given above that focuses on time duration, right? So now I hope you are clear. Joel, I've already explained, right, what is vegetative part, so I hope all of you are clear. In tissue culture, we tend to use a little bit of auxin and cytokinin, right? But auxin that is there is not technically a medium. Auxin is a substance that promotes growth, right? Yes, okay. Very good, everybody, very good. Now moving on to the assertion reason questions, we have some very interesting one. Moving on. I am doing the biology part of section A. Alright, I am doing the biology parts of it. So the first one is, assertion A says that offsprings produced by sexual reproduction show variation. Reason R says that each offspring produced by sexual reproduction inherits all the genes from the parent. What is the correct answer? Now again, in assertion reason question, I always tell you, assertion is a statement. You say and add an extra word to it saying why or what, right? So your reason should justify this. Yes? Everybody's telling me, ma'am, the answer is C. Very good, very good. Now, can you tell me why are you saying that the reason is false? Can you tell me in the chat, why do you think that the reason is false? What is the reason behind it? Yes? Not all the genes. Very good. Exactly. Chirayu, Rashi, Ramneet, they're all giving me the answers along with Anand, Dhyan, Abdul. A is true because zygote is formed, okay. Ma'am, all genes. Exactly. Very good, everybody. Very good. I'm so proud of all of you. Assertion A says that offsprings that are produced by sexual reproduction show variation. Yes, exactly. This statement is true simply because we know that in sexual reproduction, two parents are involved, right? So when two parents are involved, we know that due to the random mixing of alleles, we see that there are slight differences from the parent. Now here they're saying reason is that each offspring produced by sexual reproduction will inherit all the genes. No, you see that you get one set of genes from the father, one set of genes from the mother, which is why in this case we see that this statement is false, and the correct answer here is option C, right? Very good, exactly, wonderful, wonderful, very proud of all of you, right? You've got an understanding on how to go about this question. So with that, let's move on to the next one, which is again an assertion reason question. Assertion A says that capillaries have walls that are not just one cell thick. Reason being that exchange of material between blood and surrounding cells takes place across the capillaries, right? Takes place across it. So what is it? You have four options from which you need to identify the correct answer. So first figure out if assertion A and reason A statements are true. Now once you have identified whether they are true or false, add a Y here. Right? Capillaries have just one cell thick. Why? Does the reason justify the why? Then you know that that is the correct reason, right? Okay, very good everyone, very good, exactly. So all of you are telling me, ma'am, both the statements are true and you are saying the correct answer is option A. Brilliant. So we know capillaries that are there, they are nothing but they are very thin vessels, right? So we see that these are very thin vessels and they are so thin that it's just one cell thick. Now why is it only one cell thick? Because of its function, that exchange of material between the surrounding and the capillaries takes place, and to facilitate this, we see that they have only one cell thick. So in this case, both the statements are true and the reason is the correct explanation for the assertion given to us, right? So in this case, as you see, we have covered all of the multiple choice questions, right? Now, how many of you feel like, ma'am, bio mein the MCQs were very scoring. You'll easily get your marks like this, right? Very simple and easy, right?
Okay, yeah, we will be uploading the session PDF on the Telegram channel, not to worry. Easy and scoring. So in biology mainly, like I tell you, at all times focus on the keywords. Assertion reason ka, I always tell you, go ahead, put the why and then go ahead and solve it, right? And it's halwa, exactly. So compared to everything else, it's halwa, no? So you know bio scoring and make sure that you prep it well, right? Ma'am, explain transpiration steps, please. That will be a lot. I think Ankita ma'am has covered it in the life process chapter. You can go check that out, Ashwini. It will definitely help you out. Ma'am, if it is only one single cell thick, can it be visible? No, it will. So your capillaries that are there are very fine, thin ones. It's not technically visible, right? It's not really technically visible. Yes, all right. So we will be covering everything. We have already finished physics, Ashrita. We will be doing biology and chemistry as well, right? So with this, of course, we're going to move on to the 2-mark questions and the long answer questions for which Ankita ma'am will be taking you through it. So everybody, before Ankita ma'am comes, make sure you hit the like button, you subscribe to the channel, because nowhere else will you find some amazing classes like this. And I will see you all soon. All right. Your water bottle is there. Hi everyone. Hello. I'll just let me just increase the height of the table so that we are good to go. We can fix the other things. Yes. Hello everyone. Yes. So are you ready? So I'm sure you have enjoyed the MCQs, right? They were really very scoring, and I'm sure that all of you are now clear. Yes, very good everyone. So are you ready for 2 marks? 2-marker question. Yes, very good. Namaste, namaste. Welcome to the class everyone. I hope that your energy is super high and I'm really very happy. I was just sitting there and looking at the chat flowing and the number of students who are here with us in the class. Awesome everyone. So let's get started, right? Let's get started. So what we have over here is 2-marker question. Now of course you can read the question. And I want you to answer this question really very quickly. Yes, Vaishnavi, my voice is not audible. I'm sure it will be. Hi, Ayan. Yes, I'll answer your question. Hello, everyone. So quickly, everyone, you can see the question that we have over here. And the question is that, how do control and coordination in plants differs than in animal? You just have to mention any 4 points of difference. It's a very easy question, right? It's a really very easy question. Can you quickly help me with the answer? Very good. Plants do not have a nervous system, whereas animals definitely have a nervous system. Okay, thank you for letting me know that I'm clearly audible. Yes, very good, very good. Animals have nervous system. We respond really very quickly, right, in terms of the hormones, where plants will take a longer time. Yes. So let's see now what we have, right? So here everyone, it's a 2-marker question, and of course you can pick actually any 4 points, and the question has specifically mentioned 4 points. So yeah, definitely we will be writing the 4 points. So first of course we have this, that we have some chemical substance which are called as the phytohormones or the plant hormones which are there, right? In animals we have the animals hormone and we have the nervous system all together, okay? We have the animals hormone in animals. These hormones are secreted by the glands, right? They're secreted by the glands. We respond really very quickly as compared to the plants, which will take some time, right? They respond really very slowly as compared to the animals. And the immediate response, of course, sometime that we see in the touch me not plant is due to the turgidity and to the flaccidity, okay? And of course, we can mention that there's no locomotion as response to the stimuli. Whereas in the animals, we will see the response in the form of the locomotion. Okay, and we'll see the electrical impulse that we have. They're really very immediate. Yes. I know, Atul, but these points I have mentioned in the, marking scheme. So we have going with that. But it's easy, right? We do have an understanding and you can definitely write it. Yes, Ayan, we will answer this question. It's not considered as a taboo. Basically, we have similar questions, we'll discuss that, don't worry. So everyone, are we clear?
I hope that this question is clear to each one of you. Aniket, locomotion is the movement, right? Changing of the position. See, movement in this, simple movement, right? Locomotion is this, when my position is changing, okay? So everyone do take a screenshot. These points you can easily write in your examination. Yes, very good everyone, very good. Let's keep up the spirit everyone. Awesome. Point number 4, Aniket, it's that in plants, the immediate response that we have, right? I'm sure we have studied about the touch me not plant. Raise your hand everyone, raise your hand. The touch me not plant, right? So what happened? They'll close, right, when we touch it, right? Now, of course, there we have the cells, right? The water inside the cell will move out and in. Based upon that, the response is happening, especially in touch me not plant, right? So, in the animals, the immediate response that we have is due to the electrical impulse, right? We don't have the turgidity of the cells and the flaccidity of the cells which is helping in the transmission. That's not a case in our body. That's a case in plant's body. In our body, we have the electrical impulse and we respond accordingly. Clear? I hope this is clear. Yes, very good everyone. And we will be sharing the PDF with you on the Telegram, so don't worry. Yes. Jay, have you seen a plant moving from one location to the another location by themselves? Right? Plants do not move by themselves, right? They cannot move from one particular place to next. Yes, very good, Priyush. Yes, good everyone. So that was a 2 marks question, easy peasy. You can write any 4 points of difference, so half of marks each. Okay, good everyone. Okay everyone, let's move ahead to the next question. Here we have everyone, a person suffering from a liver disease. Easy peasy question everyone. It comes from the chapter life process. Chaliye, let's see this question everyone. A person is suffering from a liver disease, right? And it's advised to avoid the fatty food and highly acidic food. We have to give the reason why the food mentioned should be avoided if a person is suffering from liver disease. Can you help me with the answer? Very good, Shreya. Very good. Shruti, the questions that we have in the practical paper are really very application based. So we can expect these questions, such kind of questions in the board examination also. Very good, but those will be easy also, so don't worry. Very good everyone, I can see the long list of the correct answer. So we know that liver, right? We know that liver is a very, very important organ, right? It's very, very important part of our body. And this actually helps in breaking down the fat globules, right? Basically, liver produces a bile juice which is stored in the gallbladder, and during the digestion process, the bile will be released in the gallbladder, right? It will be moving to the bile duct and it will be acting on the food. So the big fat molecules, right? Big fat molecules will be broken down to the small droplets so that the enzymes can work on them. So first, of course, the person whose liver is not working properly, they're advised not to eat more fat because liver will not be able to produce bile. And if there's a less amount of the bile, of course, the digestion process of fat will not be happening, and that might causes more diseases, right? So that's one reason. And second reason, we know that bile juice is alkaline, right? It actually reduces the acidity of the food which is coming from the stomach. So if the bile juice is not there, if the person is eating acidic food, alkaline will not be there, right? Of course, it cannot be make alkaline. It will cause, burning sensation in the stomach, and that will be hampering with the health of the individual. And hence, we should be avoiding all of these, right? As a person whose liver is not working properly, they're asked to avoid these things. I hope it, everyone. Are we clear? Yes, tell me, are we clear with this? Easy peasy, awesome. Harika, bache, don't worry, we'll discuss about it. Yes, but let's focus now in today's class. You will get the PDF on Telegram. Yes, you have to download the Telegram. You can ask your parents to do it for you. And there's a group that we have of 9th and 10th. You'll be able to join that group, and you'll be able to access the PDF.
Okay. Yes. Everyone, here we have the answer. So liver produce a bile which actually create an alkaline medium for affecting digestion. So if there's an absence of the bile, acidic food may cause more acidity and poor digestion, and you can mention about the bile which is helping in the fat digestion. Basically, it helps in breaking down the large fat molecules into smaller one, and if that's not there, it will be difficult in the digestion of fats. So I hope that it's clear. 2 marks everyone in your pocket. Yes. So Lani, there's a link in the description box. Click on that and you'll be able to join the group. Okay. Yes, everyone. Clear, super clear. Let's move ahead to the next question. Again for 2 marks. And everyone, see, look at this question. See, if you look at the question that we have, right, they're not direct. They're very application based. So the previous question also, it's not very direct in terms of, okay, help, how the liver is helping in the digestion. But the question was really very twisted. Now look at this particular question. Yes, you can take the screenshot also. That's always there. Everyone, this is a very interesting question. Now you tell me. Oxygen mostly is carried with the help of a pigment in our blood, whereas carbon dioxide is transported in dissolved form in our blood. We have to give the 2 reasons to make this statement correct. Very good everyone. Very good, Shruti. Yes, Ramya, you can take the screenshot. So everyone, what we know that CO2, right, is more soluble, right? It's more soluble in water. So it can easily, right, it can easily dissolve in the plasma, right? And of course, and it can easily move. That's a main reason, okay? And secondly, of course, the hemoglobin has less affinity towards the CO2 as compared to the oxygen. Yes, are we clear? Yes, are we clear everyone with this? Very good. Yes, CO2 has more affinity towards the water as compared to the, yes, very good everyone. Yes, okay. Good everyone. So it's a very, see, the question itself is giving away the answer. So the carbon dioxide is still there in the blood. It is there in the blood. Okay. So unknown, see, in the plasma we have various, right? In plasma we have various components, right? Definitely water is also a part of it. Definitely I'll not check this whole of water, but a small amount. So plasma is a fluid, right? So of course, over here, it will be getting easily dissolved. And of course, we have the hemoglobin that has more affinity towards the oxygen as compared to the carbon dioxide. Clear? Easy peasy, right? See, if you look at this question, now when you go back and trace back your concepts, right, it becomes really very easy. Unknown, please find out what are the components we have of plasma. If you will see that, what are the components of plasma, you will have the answer with you. Tanishk, it's okay. Welcome to the class. You can always go back and watch it. Done everyone? Clear? Let's have some laddus, right? Laddus. Yes, 2 marks is there. Awesome. Chaliye. Okay everyone, here we have a very interesting question from our environment. Easy peasy. See, this is my favorite question. When I look at this question, I was really very happy. Ke, wow. Such an interesting question we have, right? So many, 2-3 concepts have been asked in a single question. Yes, let's take a look everyone over here. So we have the food web. Now can you quickly tell me what is a food web? Yes, I know you Vaishnavi. Yes. These are 2 reasons, Khushi. So everyone, we have to study this food web that we have. And what is a food web? A food web is nothing but where we will see the interconnection of the food chains, right? When the food chains are interconnected, we call it as the food web. So over here we have a food web and over here we have the question. So the question is, we have to identify and write the food chain from the above, from this particular food web, where the eagle will receive the highest percentage of energy from the producer. So very simple everyone. From the food chains from the food chains that we have in a food web, which food chain is the one where the eagle is receiving the maximum amount of energy from the producer? Yes, very good. I can see the answers.
That's the first part of the question. So of course the easiest one over here is to look at the food chain, right? See over here. So we have tree, deer, snake and eagle. 1, 2, 3, 4. 4 steps. So yeah, okay, 4th step we have. So we have 1, 2, 3 and 4. Okay, let's see this one. We have 1, 2, 3 and then 4. Okay. We have 1, 2 and 3. And we have 1, 2, 3 and 4. So the easiest one, right? So we have various steps into it. So we have 2 with the 4 step. And we have just 1 with the single step. Sorry, 1, 2, 3. And of course the chain is grass, mouse and eagle. That's a food chain. First part is done, everyone. Because why it is the one where the eagle will be receiving the highest amount of energy? Because there are less individual, basically less organisms. So food will move from the plants to the mouse and directly it will eat it. So of course it has more energy. Now this B part of this question, everyone. Which organism will be the most effective if they are consuming non-biodegradable pesticide? Basically the DDT, any kind of pesticide that they'll consume, which of these organisms is most affected? Correct. Very good, everyone. The eagle is the one which is the most effective. And why? Because of biomagnification or the biological magnification. What is it? We know that in biological magnification, we have studied that if an organism is eating or if it's consuming a toxic, right, as the size, right, as the body mass will increase, the amount of toxic in the individual will increase. And as we go higher in a food chain, it will always increase. So in this particular case, the eagle will have the majority. Easy, right, everyone? See, this is how you will be getting the questions in the examination. So I hope that this is clear. Yes, clear, everyone? Thumbs up very quickly. Very good, very good. Yes, awesome, everyone. Higher tropic level, absolutely correct. Good. Let's take a look at the next question, everyone. Over here we have a question of 3 marks, a question of 3 marks. Shreya, so see, what is happening if you go back to this question? Let me explain you again. I think a few of you have doubt. See, let's suppose, right, for example, the tree have some pesticides, right? Now, tree, right, and of course this mouse is eating it, basically the mouse is eating the plant, right? So of course whatever toxics that we have in this particular plant will go to the mouse also, right? And if we assume that it's just a small grass that we're discussing about, right? So grass is small, right? And then of course the mouse is there. Then of course if you look at the structure of a mouse and the number of cells we have in mouse will be definitely more as compared to a grass. And as it goes to the eagle, it will be more. So there's more accumulation of the chemicals. Are we clear, Shreya? See, I'm trying my best and we are trying our best to make sure that all of your doubts are getting clear. I hope, Shreya, it helped and your doubt is clear. Very good, and I can see the answers already. Good. Okay. You guys are really very smart and I'm telling you, me and Aishwarya ma'am feels really very proud that you all are our students. Right? So you look at the question and you have the answer with you. Amazing, everyone. So of course, as you already gave me the answer, we have this particular question. Now look at this, everyone. Now these questions, right, are very easy. The characteristic of blood and the lymph. But how they have presented in the question paper, right, is really very interesting. So you can see that the question that will come in your examination might be a little bit more trickier. Okay? So you have to connect all the concepts that you have in your mind, that you are already aware of. Yes, so here we have fluid 1, which is the lymph. Fluid B is nothing but the blood. It is colored, contain more oxygen, more protein. Lymph contains less of oxygen and less of protein, right? We know that. Of course, with the help of flow chart, we have to say. So we will be looking at it, everyone. So, of course, lymph flows, right? We have the blood vessels, wahan se lymph leaks, basically blood leaks out.
And in that, we don't have the RBCs, platelets. We have the WBCs there, and they'll form the lymphatic system. And then, of course, from here, we have the lymphatic, basically whole system. We have the lymphatic nodes into it. Lymphatic vessels plays an important part into it. Yes. Yes. Very good, very good. Tanishk, ma'am will come after the bio part is done. Yes. Piyush, plasma is a fluid part of the blood, right? And it has hormones, different other ions, etc. Yes, very good everyone. Okay. Now can you tell me what are the functions of the lymph? Thank you Radhika. Thank you so much. Thank you Vaishnavi. Yes, Piyush, I've just mentioned. Very good Ramneet. Blood vessels, lymph vessels, lymph capillaries, lymph gland, and okay, very good. Yes, carries the digestive and absorb fat from the small intestine. This is very, very important function, everyone. So we hear what we have. So don't look at that particular part. Over here we have, right? So the lymph, fluid A, fluid B is blood. We have the intercellular space. We have the lymphatic capillaries, lymph vessels, and the large veins. And we have the lymph carries digested and absorbed fat from the intestine to the blood. Very good. Jashoda, can you please write the question that you want me to answer? Okay, you want me to explain you lymph. Lymph is a fluid, right? It is a colorless fluid which actually leaks out. Basically, it forms when it leaks out from the blood vessels, right? They do not, the lymph does not contain the RBCs and platelets. It contains the WBCs, okay? So, it forms a very different system altogether. So it's a colorless fluid that we usually say, right? And it provides us the immunity and help definitely in carrying the fat after the digestion process from the small intestine. Clear, Jashoda? No, it is not, Khushi. It's still there. That's why we have the question. Yes. The B part of the question is this, bache. Unknown? The B part is asking you to describe the movement of fluid A in the body. Okay? So from the intercellular space to the main circulatory system, how it moves. So from the intercellular space, they forms the lymphatic capillaries. Then of course from the lymphatic capillaries, they'll form the lymphatic vessels and they'll be joining the larger vein. Clear? Tanishk? Okay, yeah. Sorry, unknown. I hope that it's clear. Yes, Dhanya. Dhayan, you will get marks. See, we have to be very specific with the words we are writing. We're not writing stories, right? Awesome. See, Bachu, by now we should be aware that the CBSE approach is definitely changed over the period of time, right? Now the questions demand us to write the answers very clearly without any stories. Clear, straightforward answer. Laddu question hai, Kaju Katli question hai, Halwa question hai. Badhiya. Good everyone. Chaliye. Tara, awesome. Bilkul. Okay everyone, question number 3 on your screen. Jaldi jaldi se let's solve these questions. These are very interesting questions. I know that all of you are waiting for chemistry part. We'll quickly finish the bio part and then we'll call Kriti ma'am. Here we go. So there are two major forces which actually help in the transportation of water. Let's read the question carefully. 3 marks question everyone. So we know that the movement of water in plants occurs by different forces. And there are two major forces which we have. In the question they have mentioned force A and force B. Force A is driving the movement of water during daytime, whereas force B works during the day as well as night time when the humidity is very high. Okay, I can see the answers. Very good. Prachi, tomorrow we have class 9th class. Class 9th class, हाँ, कल है. Okay. Acha everyone, tell me. Now I'm giving you a major hint. Right? Which force actually pull the water up from the roots to the top? There is a pull that happens, right? What we call that pull as? Right? It happens with the help of a leaf. Very good. That is a transpirational pull. So, or the transpiration process as such. So, transpiration is nothing but a process where we'll see the loss of water in a form of water vapor. Right? In a form of water vapor. So, if we have a tree, right? Or if you have a plant, we'll see the water will move and of course it will be
The water will be moving out through the stromata, right? And this will be happening during daytime only. Yes, it will happen during the daytime only because sun is there. Stromata will close, open, and because of this, the force is transpirational pull. Everyone, are we clear? Yes, Mohan, please write your doubt. I'll answer your doubt. Vaishnavi, essence of sap is the fluid which moves in the xylem. The liquid fluid that we have, right? That moves in the xylem. Very good. Translocation, Priyanshu, is the movement of the food. Right? The movement of the food with the help of phloem is called as translocation. Awesome. Very good, everyone. Yes, transpiration. Gomati, I've just explained. Okay. Now, many of you are asking about what is diffusion. Achha, how many of you know what is diffusion? What is osmosis? Tell me. Diffusion is a very simple process where we will see the movement of the molecules from the higher concentration to the lower concentration. Right? In osmosis, we'll see the movement of higher concentration of water from higher concentration to the lower concentration through a semi-permeable membrane. Correct, right everyone? Yes, tell me. You know this, right? Awesome. So, in diffusion the gases are also taking part. Okay? Osmosis water is the one which is taking part, right? We'll see. Osmosis is happening in the water molecules only or with the water. Okay? That's a major difference between diffusion and osmosis. Okay, now there was a question, what is transpirational pull? So we have a plant. Okay, the roots will be taking up the water, right? They take up the water with the root pressure. See, I'm sure you have studied this. Now you tell me everyone, we have a root here, right? And we have soil and minerals. So we have minerals and we have soil. And of course in that we have water. Yes or no? Alright everyone, focus over here in class. Yes. I'm sure you are aware about the root pressure. We know that roots are underground. Yes. Roots are underground and they help in absorption of the water and minerals. So, when the roots are absorbing the water, what happens as they absorb the water moves inside the cell, right? And of course, it moves from one cell to another, one cell to another. Yes, it will create a root pressure on the cells. The turgidity of the cells will increase and that's how the water molecules will move from the roots to the xylem. Okay? And over here, as the minerals are also moving inside the roots, we have active transportation. Now, can I ask you an easy question? I'm sure all of you know what is active transportation. Suction pull will occur in the top, the transpirational pull. The transpirational pull is the suction pull. Yes, very good everyone. See, I asked you, right? What is active transportation? We have studied there are two types of transportation we see in plants. Active transportation and passive transportation. Passive we have the example of diffusion where there is no involvement of the energy, whereas in active transport we have the involvement of the energy. Very good Tanishka. Using the ATP. Yes. Turgidity means when the water is there inside a cell, it's become turgid, very stiff. Okay? Aniket, I hope it helped. So everyone, are we clear with these concepts? Active transportation में diffusion will not be there. There's an involvement of the energy. Passive transportation में we have the diffusion as an example. Clear? So translocation is nothing, Adina, where we will see the movement of food, whereas transpiration is a loss of water molecules in the form of water vapor from the leaves. Aerial part of a plant. Awesome. So see everyone, this question looks very tricky. I can see so many doubts. So, if you look at this question, there are two things that you have to understand. First, they're asking about the forces. The first force is what? Force A is transpirational pull. Okay, that happens only during daytime. Whereas the root pressure works 24/7 during day and during night time also, because plants keeps on absorbing the water and minerals from the soil. Okay,
So this over here, the second force is the root pressure. Okay? Force B is root pressure. Clear? Right, everyone, are we clear? Yes. In xylem vessels, we have the adhesive and the cohesive force. Yes. See, again, that is also connected with the transpirational pull. Okay? So we are focusing on two forces and they have specifically mentioned over here. We are not going there. Yes, very good. Okay, so that's the A part. B part, describe how these forces help in the movement. So this is how you can write the answer. We have already discussed this. So the force A is transpirational pull. Force B is root pressure. Transpirational pull, evaporation of water molecules happens. You can define it. And then you can mention about the root pressure, active absorption of ions from the roots. And soil causes the water steadily move inside the root xylem. Okay? And it creates a column that will be pushing the water upwards. Yes. Everyone, are we clear with that? I will explain you that. Yes. So, everyone, are we clear with this question? First, please do tell me, are we clear with this question? And then we'll move ahead. Come on, everyone. Yes, very good. Transpiration depends on various factors. So the humidity, right, the sunlight, all of these factors will be affecting the transpiration. Okay. Apart from that, in plants, we have cohesive and adhesive force. So cohesive force may, of course, we have the interaction between the water and water molecules. Adhesive force may, we'll see the interaction of the water and the vessel's interaction. That's how they'll move. See, I'm sure you would have used a straw, right? And we create a suction over there and the water molecules moves up. Root pressure, yes, please do take a screenshot, everyone. So root pressure is something, right, where we will see that the water molecules which are moving inside the roots, right, as they move, they will be creating a pressure, right, and as they move from one cell to another cell, there's a constant pressure that it creates, and because of that, water is being pushed towards the xylem. Yes? Clear, everyone? Anshi, I hope everything is clear to you. Priyanshu, I have just explained. You can just quickly go back and see that. Two types of forces between the adhesive and cohesive. Between water and the vessel surface. Good. Yes. Nirmala, definitely. We will be discussing with that, but not now. Let's just focus on this particular part. Yes. No, it will not be going down. Very slowly it will be moving. When the turgidity will increase, Aniket, as the water molecules will move from one cell to another, the turgidity of the cell will increase. Yes, आज session नहीं है, 9th का कल है. So xylem is a type of conducting tissue, right, that we have in plants that actually help in carrying the water and the minerals. Awesome. Chali everyone, this question is done. Let's take a look at the next question. 3 marks question. See, this question is from the ozone. Every time we have studied this particular chapter of our environment, we know that this topic is super important. We have already discussed 1,000 times, and every time I'll tell you that in our environment, we have food chain, which is important, food web, energy flow, then we have the biomagnification and the ozone, which is really very important. And here we have a question from it. So we can see there are 3 parts of the question, 1 marks to each of these questions, right? So explain how the energy of a sun helps in the formation of ozone. Let's take a look at this, everyone, the first part of it. So how it helps, we know that when we have the oxygen molecule, right, as the sun rays will fall, we will see the O2 molecule will get split into the oxygen atoms. And these oxygen atoms, when they come attached, right, when they react with the oxygen molecule, they'll form the ozone, which is O3. Everyone, these reactions are really important if in the examination, if they ask you to write the reaction for this, please make sure you write this reaction. Clear? Yes. Very good. Awesome. Yes. Very good. UV rays will actually split the oxygen molecules. Absolutely correct. Yes. UV radiation.
Yes, Piyush, absolutely correct. Okay, so we can write this. You can explain how the sun energy, right, does that, and you can mention about that. Ozone at a higher level in the atmosphere is a product, of course, of the UV radiation. Please do mention about the UV radiation, right? Acting on the oxygen molecule, will be splitting it, and we have the oxygen atoms. When these will react with the oxygen molecule, we'll have the O3. Clear? Yes. So here we have everyone. Do remember this. Okay. Okay? This is how everyone you have to write. So easy peasy for all of you who have some confusion with this particular part. So if you're framing your answer, please start by saying that we have UV radiations, right? UV radiations will be acting on the oxygen molecule. It will be splitting into the two oxygen atoms, and the oxygen atom will combine or will react with the oxygen molecule and will form the ozone, which is O3. Yes, very good. I can see the answers for the next question. Option B, why is ozone formation at the ground level considered as pollutant? If we will see this, right? If we'll see that we have the ozone formation at the ground level, of course it act as a pollutant because it's the main ingredient of the smoke, and it causes lots of effect on the people and the environment. O3 is not good for us. Harsha, O3 is ozone. Okay, O3 is ozone, bache. And very good, I can see how it will be affecting the individuals, us and the animals and the plants. It can cause skin cancer, cataract, eye damage, right? Yes, all of these you can mention. Yes. See, weakened immune system, aging, cataract, hair damage, DNA damage, and the skin cancer. Pappu, I have explained this. I'm explaining it again, everyone. It's a very important question. So in this particular question, they're asking you to write about the ozone. First, mention how the formation of ozone occurs. Please take a screenshot of this. Everyone, please take a screenshot of this and write like this. You will get 3 marks. And then, of course, second question talks about that how it is damaging, why it is harmful, or why we call it as a pollutant if it's there near our atmosphere. Because it will be causing various harm to us. O3, ozone. And, right, state any 2 health hazards that we have if there's an ozone layer depletion. We can mention about the cataract and the skin cancer. So unknown, see. So for example, it's actually protected from the UV radiation. But if it comes very close to our atmosphere, right, O3 as a gas, of course, as a molecule that we have in our environment will not be helping us, right? It actually is the main ingredient in smoke. Now you know that what is a smoke, right? It is a pollutant, right? So it's definitely not good for our health and for our environment also. Yes. Very good, very good. Yes, but it is present in the stratosphere. Ozone is there. See, they have mentioned it is there in the stratosphere. Okay. Ma'am, any other disease? So, see, of course, that we have skin disease. It can cause DNA damage, and DNA damage can cause various genetic diseases. Okay? Good, very good. Okay. Prachi, I'm trying my best to answer all of your doubts, so might take some time. Really sorry for that. But yeah, I'm just making sure that all of you are on the same page and moving ahead with that. Yes, it's good only. If it's really very close to us, it can be bad. Okay. Let's see question 5, everyone. See, we are on question 5. Easy. We'll be quickly moving ahead to the chemistry part. Let's take a look over here, everyone. Question 5. See, we did this question today. Right? We had a question on variation, that why variation is important. So here we have the question, variation in DNA is beneficial for the survival of species over time, and explain. You know the answer? Yes? I'm sure you know the answer. So for the better survival, for the continuity of the species, right? We have already discussed it. So among these, A part is done. Very good. Then we have to explain an instant where the reproduction can be counterproductive to the substance of the species. Now, we know that reproduction is important, right?
But over reproduction, do you think it's right? Yes, everyone? See, A part ka answer, I can see that many of you are giving in, and that's absolutely correct. DDT, it's a pesticides, right, that we added in the plants. Very good. Overpopulation. Counterproductivity. So we say it's good, right? Reproduction is good. But if it's happening in a very large numbers, right? It is overpopulation. Yes, then we need someone to take care of it. Yes, so the overpopulation, it will be hampering, right? Then of course people are fighting for the resources. Now what will happen? These species, right, are competing against themselves for the resources, for the food, for the air, for the water, right? So definitely the reproduction, you can mention this as an example that if there's over reproduction, it might cause such and such issues. Conflict, absolutely correct. Last question talks about the menstrual cycle, but we'll discuss that later. Here we have everyone, so we have variation, allows the diversity in the organisms, and of course a population with variation will be easily survive, right? They can easily survive. Second part of the question, the B part of the question is the higher the rate of reproduction, it would lead to unchecked population growth, leading to the competition of resources, and it will create a low standard of living. Yes. Vaishnavi, counterproductivity. So of course there's a productivity, right? Okay, this population is productive. Now it's something which is good, but counterproductive or over, we usually say that's the opposite of it, right? Something which is happening good, but the opposite of it. If there's overpopulation, it's definitely not good, right? Yes, I hope that it's clear. Yes, unknown have just explained. And the last part of this question, everyone, is the menstrual cycle. Yes, it's a menstrual cycle. And you know that if there's no fertilization of the egg, we'll see the menstrual cycle happening, in which, of course, we will see the shedding of shedding of the blood lining along with the egg. Very good, everyone. So variation council you can write like this, and the B part we talk about if there's unchecked reproduction or the growth of the population, it will lead to the competition of the resources and would lower the standard of living of the individual. C part, if the egg survives for the day in the reproduction system, if it's not getting fertilized, we will see the shedding of it along with the blood lining in the uterus. Clear, everyone? Yes. Very good, friends. Yeah, please do take a screenshot. Good, everyone. Very good. Yes. Yeah, mucus is also shed. Absolutely correct. We have the mucus, shedding of the mucus is also there, blood lining and the egg. Done. Awesome. Next question, everyone. Question number 5 on your screen. Describe the process of seed formation and the flowering plants. We'll take one by one, right? Can you tell me how the seed formation occur? How we'll see this formation of seeds? Then also there is no fertilization of the egg, right? In that case also it will be, we'll see the shedding of the blood lining. Yes, very good. Very good, everyone. So here we have, this is how you can write your answer in points. Write 5 important points. First, of course, the pollen from the stigma, right, will get transferred to the stigma, pollen grain from the anther will move to the stigma of the female reproductive part. Then we'll see the formation of pollen tube. The 2 male gametes will move to the ovule, right? There, of course, we'll see the fusion happening, double fertilization, right? And after double fertilization, what we'll see? We'll see the formation of the seeds. Clear? So, male cell fuse with female cell, they'll form the zygote, right? Zygote will undergo the rapid division to form the embryo inside the ovule, and at the end we will see the ovule turning into the seed. Easy peasy, right? Yes. So it's a
first part of a 5 marks question. Now this process is asking describe. So this question will be of 3 marks. It's from the reproduction in plants. Done everyone? Are we clear? You will get the PDF on the Telegram group. Yes. Mukesh, I've just mentioned you can get the PDF on the Telegram group. Clear everyone? Contraceptive, that means a method that will be helping to avoid the pregnancy, unwanted pregnancy. Clear, clear, clear. Very good. Okay. Here we have the next question everyone. We have to suggest 2 reasons why child marriage are the hazard to the reproductive health of a woman. Yes. Now why the child marriage should not be allowed? First of all, the females, right, will not have reached the full sexual maturity, right? And this, if there's any pregnancy in the teenage, that might cause a lot of hazards to the female body. Okay, that's why the child marriage is not advisable, and we should not be encouraging it. Very good. Emotional and physical health. Absolutely correct. Yes. Absolutely correct. There's no, if there's a teenager, right, she's not even aware about the opportunities they have in the future. They're not studying. They don't know what is happening around the world, right? And they don't know how to take care of themselves. Absolutely correct. So this is how everyone you can write your answer in points. Manny, you should always write your answer in the points. Always, always in points. So everyone, are we clear? And the last part of this question is, give any 3 advantages of using the mechanical barrier over the other contraceptive measures to avoid the pregnancy. So we have studied that there are different types of contraceptive methods. Barrier method, chemical method, right, hormonal methods we have, in surgery. So the contraceptive pills, the hormonal methods definitely will be causing the hormonal imbalance in the body that might affect the women's health. The copper D, the intrauterine device, can also cause the infection in the female's body. And the surgical method, right, can definitely cause various complications if not performed properly, right? Various infection can occur. Yes. IUDs, Vaishnavi, means intrauterine device, a device that will be adding, or the doctor will be placing in the uterus. Clear? Vasectomy and tubectomy. Clear everyone? Are we clear? Come on. Are we clear with this question? Yes? So this is how you will be writing everyone, and you can take a screenshot of this particular part, right? So we have A part. You can definitely mention about all of these things. Yes. Good. Very good everyone. Mechanical barriers are the contraceptive methods that will be avoiding, right? That will be avoiding the meeting of the sperm and the ovum. They act as a barrier, physical barrier. Good. Okay everyone, next question. It's a 4 marks question. It's a case-based study question everyone. Very special question we have in a case-based study. Here we have, so let's read this question everyone. It's from genetics and I want all of you to answer this question. What are the advantages of the contraceptive? It can actually help in avoiding the unwanted pregnancy, helps in family planning, and helps to maintain a healthy maternal health. Yes, last question of bio. Khushi, now you should smile. Neelam, please ask it out. Yes. So we have 2 human beings. Both of them can actually roll their tongue, right? They can roll their tongue. And they have 11 children. Out of 3, they cannot roll their tongue. 8 can roll their tongue. Yes, 8 can roll their tongue. So we have to find out which trait is recessive. It's easy peasy, right? Not rolling is definitely a recessive trait, right? Not rolling tongue, okay? We can represent by small r, whereas the rolling tongue, we can easily represent by capital R and capital R. Yes? Very good. So that's the first part of the question. Let's take a look over here and we will look at the questions.
Yes, very good, very good. So here we have everyone. So this is how you can write. So both the parents can roll their tongue. So that means that both the parents have a gene that is dominating. So we have capital R in both the parents, and with this, it's a monohybrid cross, right? We can see that only one over here, 25%, cannot roll their tongue, where the rest all can. Clear? So of course, the small r is a recessive trait. Yes? Yes, please write your doubts. Please write your doubt. Neelam, I will explain. But give me some minute. Let's just finish this particular question and then I'll take your doubts. I know. Yes, 25%, right? Cannot roll their tongue. Okay. So, which trait is recessive? We are clear with that. State all possible genotype of the F1 generation. It's very easy. In F1 generation, of course, what we have? Right, in F1 generation, we just have this, right? Clear? If this could be the case. And we have to show the inheritance of the tongue rolling. So over here we have the chart. Clear? 1:2:1, 3:1. Very good, everyone. Genotype will be, right? Yes. Very good. See, this is a very interesting question. Sri Hari is asking, ma'am, how we know that the parent are capital R and small r and not capital R and R? Because in the question they have mentioned that 3 children cannot roll their tongue. Got it? Sri Hari, I hope that you got the concept. See, in the question they have mentioned that they have 3 children that cannot roll their tongue. Okay? So that's why we know that it's a heterozygous, not the homozygous condition. Very good. Yes, it's good if you can draw the Punnett square. Adina, monohybrid cross, we will just discuss about the one character. Dihybrid, we will talk about 2 characters. Yes, Vela. Okay. Now let's see the next part of this question, everyone. If one of the parent could not roll their tongue, see here we have. If one parent cannot roll their tongue, what will happen? Then of course, see over here, recessive. Right? These are the ones that cannot roll their tongue. So we'll have 50-50 percentage. Clear? Yes, see everyone, I can see many of you have still doubt. Can you focus over here? Yes, everyone, those of you who have doubt, please listen to me. So in this question, the question is asking, there is a couple, they have 11 children. Both the couples, right, both the mother and the father can roll their tongue. 3 children of theirs cannot roll their tongue. Rest 8 can easily roll their tongue. So rolling tongue over here is a dominating characteristic features. Okay? Not rolling is a recessive one, which we represent by the small r. We will make the Punnett square for this. Yes, we will make the Punnett square for this. We have capital R and small r. After this, we will have a ratio, right? So we have the homozygous dominant, heterozygous dominant and homozygous recessive. It's a monohybrid cross. The ratio will be 3:1, right? The phenotypic ratio and the genotypic ratio will be 1:2:1. Yes. Not Punnett square, it's Punnett square. Okay? And then of course you will draw this, and the last question is saying that what if one parent cannot roll their tongue at all? So that means they have recessive traits. So in that case, you will draw the Punnett square again, and this is how you will represent. Yes? So then in that case, both, right, the children can have a 50-50% chances of rolling and not rolling their tongue. Clear hua sabko? Yes. Clear everyone? So now I'll take some questions. Lymph, right? Lymph is nothing, right? Lymph is nothing but the fluid, basically a colorless fluid that we have in our body, which leaks out or what seeps out from the blood vessels. It does not have the RBCs and the platelets. It has the WBCs, right? And it flows through our body. It provides the protection from the, basically help in our building our immune system altogether. It helps in fighting from different microorganisms also. And from the intercellular space, it forms the capillaries. Of course, it has a lymphatic vessel, and of course, we have the whole lymphatic system.
Clear? Someone was asking about the lipase. Lipase helps in the digestion of fats. Trypsin helps in the digestion of proteins. It is secreted by the pancreas. Yes. Ma'am, please tell F1 and F2 generation, Punnett square and dipperiod cross. Gomati, we did it in today's class. I would request you to go back in today's class and see that. Very good. Auxin and gibberellin. Gibberellin is a germination hormone. Auxin ka one thing will actually help in the growth. Easy difference between these two. Great. Why we took capital R and R? Because they said that both the parents can roll their tongue. And in the question they have mentioned that 3 children cannot roll their tongue. So they are heterozygous, they are not homozygous. Yes. Kavita, I have explained that you have to go back little and then of course you'll be able to understand. Really sorry, don't have that much time now. Chirayu, see oxygen transported in the human beings with the help of blood by RBCs. CO2 is dissolved in the plasma. Basically, it can easily get dissolved in the water. And that's how it moves in our body, in the blood. Okay? Very good, everyone. Yes. So, everyone, I think we are done with this particular part. Now, I will be calling Kriti ma'am, right? So, we are almost done with that. Bhumi, can you write your question in the comment section? I think I missed your question again. Yes. Yes. So, I think we will be calling Kriti ma'am, but till that, let's look at this question, everyone. So, see, read the question again, everyone. They have given situation. यहाँ पे situation क्या दी है? कि एक couple है, right? एक mother and father, एक couple है, उनके 11 बच्चे हैं. उसमें से 8 बच्चे टंग रोल कर सकते हैं, 3 बच्चे टंग रोल नहीं कर सकते. So, जो टंग रोल कर रहे हैं, that is a dominating characteristics. जो टंग रोल नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास में recessive trait है. अब आप मुझसे पूछ रहे हैं कि कैपिटल आर और स्मॉल आर कैसे लिया, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन कर दिया उन्होंने कि रेसेसिव ट्रेट्स है. तो वी नो दैट बोथ द पेरेंट्स आर हेटेरोजाइगस. होमोजाइगस होते तो वो ट्रेट आता ही नहीं, नॉट रोलिंग टंग वाला. क्लियर? सो आपको ये समझ में आ जाएगा तो इट्स इजी, इट्स अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यू विल बी एबल टू फाइंड द आंसर. क्लियर? यस, वैष्णवी हैव एक्सप्लेन दैट क्वेश्चन. बच्चे अभी अभी बोल दिया. Very good. So we are done with this part, everyone. Yes. Synapse is a gap between one neuron ending and between the next neuron dendrite. छोटा सा गैप है जिसमें ट्रांसमीटर मूव होते हैं. Hello. Okay, cool. Yes, everyone. चलिए. So I just called Kriti ma'am and ma'am is here. So we will be moving ahead with chemistry, everyone. So please make sure to stay till the end and please make sure you hit the like button for the video. Right? If you have any doubts, if there are any doubts which are missed during our conversation, please write after the video in the comment section. I will be answering your doubt there. Yes, thank you so much, everyone. Now over to Kriti ma'am and bye-bye, everyone. Happy learning. Bye-bye. Hey everyone, how are you all? Can we have the selfie view? Hanji, so the physics part is over, biology part is also over. कैसा लग रहा है क्वेश्चन पेपर साइंस का आपको? Good evening all of you. I am doing really well. What I want to know from you is how are you all feeling? आपको कैसा लग रहा है? चलो ऐसा करते हैं, पोल ले लेते हैं. डर लग रहा है कि मोटिवेटेड फील करो, फटाफट से एक पोल हो जाए. Do let me know you've solved so many questions till now. आपको एक ओवरव्यू पता चल चुका है. How are you feeling? Scared फील कर रहे हो, मोटिवेटेड फील कर रहे हो? जल्दी से फटाफट से बता दो.
नॉट सो हार्ड, नॉट सो इजी. देखो ये जो पेपर आया है ना, पोल पे जरूर आप मार्क करना, बट ये जो पेपर आया है ये बहुत अच्छा पेपर आया है. इस पेपर में कंप्लीटली इन डेप्थ आपकी नॉलेज चेक हो रही है. आपको यहाँ पे सारे सॉल्यूशंस, सारे टीचर्स बहुत डिटेल में बता रहे हैं ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका मिस ना हो. आई नो सेशन बहुत लंबा है, आई नो आप लोग बहुत देर से बैठे हो, बट जब हमें अच्छा रिजल्ट चाहिए होता है तो मेहनत तो करनी पड़ती है. तो आई होप यू ऑल आर रेडी फॉर दैट मेहनत. चलो पोल एंड करें. आई गिव यू काउंट डाउन. 5 4 3 2 1. लेट्स एंड द पोल. लेट्स सी कि मेजरली आप लोग क्या फील कर रहे हो, मेजॉरिटी बच्चे क्या फील कर रहे हैं. देखिए जरा. 50, अरे क्वाइट क्लोज. 56% बच्चे कह रहे मोटिवेटेड, 40% प्लस बच्चे कह रहे हैं स्केयर्ड. मतलब 50-50 चल रहा है. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. अभी भी टाइम है और प्रिपेयर करने का. द बेस्ट पार्ट इज दिस, अभी भी आप और मेहनत कर सकते हो. इसको एक रियलिटी चेक की तरह लो कि अब हमें आगे कैसे करना है. अगर लग रहा है कि हम बस रटने की कोशिश कर रहे हैं, देन इट्स हाई टाइम यू रियलाइज कि वो मेहनत काम नहीं आएगी. समझने वाली मेहनत काम आएगी, तो समझो. एंड आज केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हम स्टार्ट करेंगे. फिजिक्स बायो पार्ट अच्छे से समझा है. कुछ क्वेश्चंस हमें ऑलरेडी आते थे, कुछ हमें नहीं पता थे, हमें क्लैरिटी मिल गई है. आई कैन सी अ लॉट ऑफ यू सेइंग कि मैम मॉडरेट लग रहा है. इजी तो नहीं है, डिफिकल्ट भी नहीं है, मैनेजेबल है. ठीक है. फिजिक्स हार्ड था ज्यादा, बायो फिर भी ठीक था. अच्छा, दैट्स ओके, दैट्स ओके. द मेन थिंग इज ओवरऑल साइंस का जो पेपर होगा आपका मैनेजेबल होगा. क्वेश्चंस डिफिकल्ट आ सकते हैं बीच में थोड़े से, मगर ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस डिफिकल्ट आएंगे. या तो ऐसा पेपर आएगा या इससे आसान ही आएगा. तो टेंशन मत लो, अगर ऐसा पेपर मैनेज कर लिया तो हो जाएगा. ठीक है. चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. और मुझे ना थ्रू आउट आपकी तरफ से बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन चाहिए, क्योंकि पढ़ा चुके हैं हम सब कुछ. आई वॉन्ट टू सी कि आप क्या वो नॉलेज अप्लाई कर पा रहे हो क्वेश्चंस पे की नहीं. सो एक बार आई होप सबने सेशन को सब्सक्राइब कर लिया है, सबने सेशन को लाइक कर दिया, एंड वी आर गुड टू गो. इफ यस, बहुत सारे थम्स अप हो जाए चैट में, बिकॉज आई एम गोना फ्लड ऑल द केमिस्ट्री क्वेश्चंस नाउ एंड यू हैव टू गिव मी ऑल द आंसर्स. ओके. I can see the thumbs up. You all are ready for the chemistry bit. So I think without further ado, let's get started. Start करते हैं सेक्शन ए से, जिसमें 1 मार्क के आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं. The yellow color of turmeric changes to red on addition of soap solution. एक चीज नोट करेंगे, कुछ डायरेक्ट नहीं दिया, कुछ एसिड बेस का नाम ही नहीं लिया. वो मतलब हर चीज आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको पता होनी चाहिए. अब सोप सोल्यूशन हमें पता है क्या होता है, बेसिक होता है. तो अब टर्मरिक जो हमारा इंडिकेटर है, ये हमारे तीनों मीडियम्स हैं. या तो मीडियम एसिडिक होगा, या न्यूट्रल होगा, या मीडियम बेसिक होगा. ठीक है. एसिडिक में वो येलो का येलो रहेगा, न्यूट्रल में वो येलो का येलो रहेगा, बट बेस में वो क्या हो जाता है, रेड हो जाता है. यहां तक लाइफ सॉर्टेड है. इतना ही ध्यान देना, धीरे धीरे समझो. कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो ना हो पाए, आराम से समझेंगे. ठीक है. नाउ व्हेन दिस सब्सटेंस P इज एडेड टू टर्मरिक, देयर इज नो चेंज इन कलर. कलर चेंज नहीं हुआ. तो मतलब या तो वो सब्सटेंस हमारा एसिड हो सकता है, या फिर वो सब्सटेंस हमारा न्यूट्रल हो सकता है, क्योंकि इस केस में कलर चेंज नहीं हो रहा. टर्मरिक ओरिजिनली भी येलो होता है, सब्सटेंस ऐड करने के बाद भी येलो ही है. Which of the following is definitely true about substance P? जो बिल्कुल सच लिखा हुआ है. बहुत बच्चे चैट में A कह रहे हैं, बहुत बच्चे C कह रहे हैं, बहुत बच्चे D कह रहे हैं. यही कंफ्यूजन आपकी दूर करने के लिए अभी मैं यहां पर हूं. जितना भी आपने समझा है, 1 मार्क के क्वेश्चन से पूरे चैप्टर की नॉलेज चेक हो रही है. अब सुनेंगे जो मैं कह रही हूं. डेफिनेटली ट्रू मतलब जो 100% ट्रू है. P इज एन एसिड. जरूरी तो नहीं है, वो तो न्यूट्रल भी हो सकता है. तो ये गलत हो गया. P इज नॉट अ सॉल्ट. अगर P सॉल्ट नहीं तो एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है. अगर बेस हुआ तो वो तो कलर चेंज कर देगा, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक नहीं है. P इज नॉट अ बेस. P जो है वो बेस
नहीं है तभी रेड कलर नहीं आया, तभी कलर चेंज नहीं हुआ। ये चीज तो डेफिनेट लग रही है कि कुछ भी हो पी, चाहे वो एसिड हो चाहे वो न्यूट्रल हो, वो बेस तो पक्का नहीं है क्योंकि कलर चेंज उसमें रेड नहीं आया। लास्ट ऑप्शन बी देखते हैं, पी इज न्यूट्रल। पी अगर न्यूट्रल है, हाँ ठीक है, वो कलर चेंज नहीं करेगा, बट पी एसिड भी तो हो सकता था, तो डेफिनेटली तो हम नहीं बोल सकते कि पी न्यूट्रल है। तो एलिमिनेशन मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन नाउ? पी इज नॉट अ बेस। जो पी है हमारा वो बेस पक्का नहीं है क्योंकि देयर इज नो चेंज इन कलर, नो चेंज। तो करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन सी। हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस? थम्स अप देते रहो। आई नो ये सारे सेशंस जो होते हैं लंबे सेशंस होते हैं, तुम लोग थक रहे होगे, बट अभी थकने का टाइम भी नहीं है तुम्हारे पास, अभी फुल एनर्जी में लगे रहो। क्लियर? गुड। दीप्ति दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं। बच्चा आपको इसमें यही फिगर आउट करना था, व्हेन इट्स सेइंग देयर इज नो चेंज इन कलर, कब चेंज नहीं होता टर्मरिक का कलर? व्हेन द सब्सटेंस इज या तो एसिडिक या तो न्यूट्रल, तब चेंज नहीं होता है ना। तो P इज डेफिनेटली नॉट अ बेस, या तो वो एसिडिक होगा या वो न्यूट्रल होगा, बेस तो पक्का नहीं है। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड जो सेक्शन है उसमें अपना स्कोर मुझे बताते रहना। अभी कितना है? 1 on 1 मान लिया आपका? ये आंसर सही था? दिवांशी, वील डू इट वेरी क्विकली, डोंट वरी। 1 on 1, गुड गुड दीप्ति, so happy that you've understood. Next question देखते हैं। During the electrolytic refining of copper, what happens at the anode? सबसे पहले हम रिफाइनिंग में क्या होता क्या है देख लेते हैं, फटाफट से देख लेते हैं। I hope the diagram is visible. I am not hiding anything. ठीक है, ये प्लस हो गया, माइनस हो गया, एक बैटरी आ गई हमारे पास। अब ये हमारा एनोड है, एनोड पे क्या रखते हैं हम? इम्प्योर कॉपर रखते हैं। ठीक है, हमने इम्प्योर कॉपर रख दिया। ये हमारा कैथोड है, पतली सी स्ट्रिप हमने कैथोड की ली जिसमें हमने प्योर कॉपर लिया। ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है। क्या इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं? कॉपर सल्फेट ले सकते हैं। ठीक है, आई थिंक ये आपका हाइड हो रहा है 4, इसको यहां लिख देते हैं। ठीक है, कॉपर सल्फेट हो गया। अब अगर आपको लगता है कि हमें अप्रोच समझ नहीं आ रही, क्या ऑप्शंस दे दिए, हम तो कंफ्यूज हो रहे हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, मत देखो ऑप्शंस, अपनी नॉलेज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की याद करो। इतना तो पता है ना, यहां तक तो मैंने कोई नया डायग्राम नहीं बनाया, बेसिक सी चीज बताई। अब जब करंट पास होता है, मेटल फ्रॉम द एनोड डिसॉल्व्स इन द इलेक्ट्रोलाइट। कैसे? बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो जो हमारा कॉपर है एनोड से, वो क्या बना देगा? वो बना देगा कॉपर आयंस, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं। ये क्या हो रहा है? ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। एनोड पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर से कॉपर आयंस बन रहे हैं। वही तो कॉपर आयंस जाके आपके कॉपर सल्फेट के कॉपर को रिप्लेस करते हैं, एंड दिस इज हाउ द साइकिल गोस। तनिष, कभी बच्चा अपलोड नहीं हुआ, इट विल बी अपलोडेड सून, डोंट वरी, हो जाएगा। ठीक है, अब इस सारे ऑप्शंस में से ऑप्शन 1, कॉपर आयंस गेन इलेक्ट्रॉन, नहीं, कॉपर आयन थोड़ी है, न्यूट्रल कॉपर एटम हमें दिख रहा है रिएक्टेंट साइड पे। न्यूट्रल कॉपर एटम्स गेन इलेक्ट्रॉन, ये भी नहीं, गेन थोड़ी कर रहा है, वो तो लूज कर रहा है। कॉपर आयंस लूज इलेक्ट्रॉन, ये भी नहीं है क्योंकि न्यूट्रल एटम की बात हो रही है, कॉपर आयन की तो बात ही नहीं हो रही। न्यूट्रल कॉपर एटम CO है, लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन को टू बिकम कॉपर आयन। सो करेक्ट आंसर हमारा क्या था? ऑप्शन डी। एंड आई थिंक ये वाला इजी लगा होगा आपको, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू गॉट द आंसर राइट। सब डी लिख रहे हैं चार्ट में। एक बार फटाफट से अपना स्कोर बता दो। 2 on 2 हो गया सबका, और इज इट 1 on 2? 2 on 2 और 1 on 2? क्विकली माही, बहुत सारी प्रैक्टिस करके। 2 on 2, वेरी गुड वेरी गुड। तनिष्क, दिवांशी, 1 on 2, कोई बात नहीं, समझ आना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा आया हुआ है। सारे क्वेश्चन जो 1-1 मार्क के बहुत अच्छे एप्लीकेशन बेस्ड आए हुए हैं।
आइडेंटिफाई द एंडोथर्मिक रिएक्शन. एंडोथर्मिक मतलब एनर्जी क्या हो रही है यहाँ पे, अब्सॉर्ब हो रही है, चाहिए, नीडेड, हमें एनर्जी चाहिए. ठीक है, एनर्जी क्या है, नीडेड है. अब जरा देखें कि PQRS हमें रिएक्शंस क्या गिवन है. आई वॉन्ट यू टू अटेम्प्ट ऑल्सो, साथ साथ में तुम लोग भी ट्राई करो. बहुत बच्चे कह रहे हैं ओनली P, ऑप्शन ए, ऑप्शन डी, ऑप्शन ए, ऑप्शन डी. डी बहुत बच्चे कह रहे हैं. अच्छा, ऑप्शन ए किस चीज की रिएक्शन है? तुमने सब पढ़ा हुआ है, तुम बस मुझे आज अपनी वो नॉलेज अप्लाई करके बताते रहो. ऑप्शन ए, ऑप्शन डी, यही दो आंसर्स आ रहे हैं. सबसे पहले मुझे ये बताओ कि जो आपकी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, पी इक्वेशन, किस चीज की इक्वेशन है? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से मिक्स होके सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज बना रहा है. क्या है? फोटोसिंथेसिस है. एंडोथर्मिक एनर्जी क्या नीडेड इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट. सेकेंड इक्वेशन देखो. सेकेंड इक्वेशन में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं. आपको एक कार्बोनेट गिवन है जो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है. अच्छा, ये जो कार्बोनेट आपको गिवन है ये बेसिक सब्सटेंस है ना? सोडियम कार्बोनेट एक बेसिक सब्सटेंस है. इन अ वे एक बेसिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है. इन अ वे ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है. सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, बट क्योंकि कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा. ये तो एक्सोथर्मिक होगा ही होगा. नेक्स्ट, आर रिएक्शन क्या है? व्हाट इज आर रिएक्शन? जैसे आपने पी बताया फोटोसिंथेसिस है, आर रिएक्शन मुझे फटाफट से बताओ कि क्या है. रेस्पिरेशन है. यस, वेरी गुड. रेस्पिरेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है. ठीक है. लास्ट रिएक्शन, कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है. कितने रिएक्टेंट्स है अपने पास? एक. कितने प्रोडक्ट्स हैं? एक से ज्यादा. तो कुछ तो हम डिकम्पोज कर रहे हैं और हमने करा हुआ है ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना? तो थर्मल डिकम्पोजिशन एनर्जी चाहिए हमें ताकि हम कुछ तोड़ पाए. ये क्या हुआ? एंडोथर्मिक हुआ. ठीक है, ये क्या हुआ? एंडोथर्मिक. ये किस टाइप का रिएक्शन है? ये हमारा है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस था. दिस वन इज रेस्पिरेशन. ये आपका इन अ वे कार्बोनेट का रिएक्शन हो रहा है एसिड से, है ना? तो इन अ वे बेसिक सब्सटेंस रिएक्टिंग विद एसिड. तो क्या आंसर हुआ? जो आप लोग सब बोल रहे हो वही करेक्ट आंसर है, विच इज ऑप्शन डी. कि जो P है और जो S है वो एंडोथर्मिक है, उनमें एनर्जी हमें चाहिए. स्कोर्स क्विकली एवरीवन. तनिष्क के तो 3 on 3 आ गए. व्हाट अबाउट अदर्स? क्रिएशंस 2 on 3, मधु 3 on 3, नाइटमेयर 2 on 3, प्रणाली 2 on 3, चिरायु 2 on 3. बढ़िया है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम मास्टर करते हुए आगे बढ़ेंगे. टेंशन नहीं लेना किसी भी स्टेज पे. ठीक है, गुड. चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. दिस इज ऑल्सो 1 mark क्वेश्चन. अशोक हैज रिटन द फॉलोइंग रिएक्शंस टू शो हाउ मेटल्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर ओर्स. आपके पास ये 4 रिएक्शंस है PQRS. यू हैव टू आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट रिएक्शन अमंग द फॉलोइंग. इनमें से गलत क्या है? हम कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कोक यूज कर रहे हैं टू गेट द मेटल. अब इनमें से कौन से केस में हम ये नहीं कर सकते? आपको क्या लगता है? आप बताओ, क्योंकि मेटोलॉजी से आप बहुत डरते हो. फिर मैं बता दूंगी करेक्ट आंसर क्या है. प्रियांशी आपको टिप्स भी देंगे, डोंट वरी. आशा, बहुत बच्चों को स्ट्रेस हो रहा है, चिंता मत करो. जैसे जैसे आंसर समझ आते रहेंगे वैसे वैसे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा. ठीक है, लिख देते हैं. बहुत बच्चे कह रहे हैं मैम रिएक्टिविटी सीरीज लिख दो. देखना, मैंने कार्बन में इसको पूरा लिख देती हूं. ठीक है, यहां तक के बात तो आपको समझ आई गया होगा. और लिख दे. ठीक है, आई होप आई एम नॉट हाइडिंग एनीथिंग. थोड़े बहुत एलिमेंट्स लिख दिए. ये रहा अपना कार्बन. कार्बन एंड हाइड्रोजन की पोजीशन आपको वैसे पता होनी चाहिए. ठीक है, कार्बन आपको दिख गया कहां है.
अब जरा बाकी के भी मेटल्स लोकेट कर लेते हैं. सोडियम ये रहा जो कार्बन के ऊपर है, जिंक, आयरन, कॉपर, ये तीनों कहाँ है? नीचे हैं. तो कार्बन तो आप वैसे भी यूज नहीं कर सकते. कर सकते हो कि नहीं? नहीं कर सकते, क्योंकि आपका सोडियम क्या है? आपका सोडियम बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल है. हाईली रिएक्टिव मेटल की ऑक्साइड में हम क्या यूज नहीं कर सकते? कार्बन यूज नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि ये जो मेटल्स होते हैं, ये जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है हमारे, क्या ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स, ये जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, दे हैव मोर एफिनिटी. किसके लिए? किसके लिए अट्रैक्शन ज्यादा है उनकी? फटाफट से मुझे चैट में बता दो, किसके लिए अट्रैक्शन ज्यादा है? फॉर ऑक्सीजन. वेरी गुड. They have more affinity for oxygen as compared to what? As compared to carbon. So then carbon. वो ऑक्सीजन के साथ रहना चाहेंगे, कार्बन के साथ नहीं. इन अ वे अट्रैक्शन है. ठीक है. They have more affinity for oxygen. वो ऑक्सीजन को छोड़ ही नहीं रहे, ऑक्सीजन दे ही नहीं रहे कार्बन को, तो मेटल अकेले कैसे होगा? यहाँ सोडियम इज मोर रिएक्टिव. बिल्कुल बिल्कुल. सो बी जो आपका है ऑप्शन ओनली क्यू, ये कहीं ना कहीं हमें क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है कि ये इनकरेक्ट है. दिस वन इज इनकरेक्ट. तो याद रखेंगे जो भी हाईली रिएक्टिव हमारे पास मेटल्स होते हैं उनका हम क्या करते हैं? उनका हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करते हैं. क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन. ठीक है. यहां तक 4 on 4 आए कि नहीं आए मार्क्स? ऑप्शन बी बिल्कुल. प्रमोद 4 o'clock. 4 out of 4. वेरी गुड. अच्छा, अगर आपने आंसर गलत गेस किया बट समझ आ गया, देन ऑल्सो यू विल गिव योरसेल्फ मार्क्स. तो हो सकता है कि आपको 4 on 4 वुड मीन कि मैम हमें चारों क्वेश्चन समझ आ गए, अब ऐसा क्वेश्चन आएगा हम डील कर लेंगे. ठीक है, बहुत बढ़िया. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5 अब देखते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत अच्छा है. द फॉलोइंग रिएक्शंस आर कैरिड आउट इन ओपन वेसल. यही कैच है इस क्वेश्चन का. इस क्वेश्चन का सारा कैच है ही यही कि जो वेसल है ये क्या है? ये ओपन वेसल है. जैसे ही हम बोलते हैं ओपन वेसल है, मतलब गैसेस का जो इंटरेक्शन है ना वो वेरी करेगा. अब जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम देख रहे थे वो क्लोज्ड वेसल में देख रहे थे. तो बहुत बच्चे यहाँ पे डाउट लाएंगे कि मैम आपने तो हमें ये पढ़ाया था कि जितना मास रिएक्टेंट का है उतना मास प्रोडक्ट का होगा. ग्रेड 9 में भी हमने यही पढ़ा, ग्रेड 10 में हमने फिर से यही पढ़ा कि हम तो इसलिए बैलेंस कर रहे हैं. बिल्कुल सही बात है, पर हम वो इन क्लोज सेटअप की बात कर रहे थे. ये ओपन वेसल हो गया. ठीक है, ध्यान से समझेंगे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग में गड़बड़ कहां आ रही है. एक एक वर्ड ऐसा दिया होगा क्वेश्चन में जिससे सारा मीनिंग क्वेश्चन का बदल जाएगा. तो कुछ रिएक्शंस हो रहे हैं जो ओपन वेसल में है. ये रहे 3 रिएक्शंस. Which of the following correctly shows if the weight of the reaction vessel and the contents in it increases, decreases or remains the same after the reaction as compared to before the reaction? Reaction के बाद किस केस में बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, कम हो रहा है, हमें ये फिगर आउट करना है. ट्राई करोगे कि मैं बताना स्टार्ट कर दूं? A lot of you saying मैम ऑप्शन डी. ठीक है, सही बात कर रहे हो बिल्कुल. देखो फर्स्ट रिएक्शन एक बार देखते हैं क्या है. कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है. क्या हो रहा है यहाँ पे? ऑक्सीडेशन हो रहा है कॉपर का, है ना. कॉपर ऑक्सीजन के साथ इन अ वे रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है कॉपर का. ऑब्वियसली द वेट इज इंक्रीजिंग, प्लस इट्स एन ओपन वेसल. ऑक्सीजन का सप्लाई भी हमारे पास आता जा रहा है और कॉपर ऑक्साइड बनता जा रहा है. तो इस केस में तो इंक्रीज होगा. इसके इंक्रीज से हमने ये दोनों ऑप्शंस तो रूल आउट कर दिए. नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं. जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करे, कोई गैशियस सब्सटेंस इसमें नहीं है. देखो गैशियस सब्सटेंस ना ट्रिक है, शॉर्टकट है इसको समझने का. क्या हो रहा है यहाँ पे? नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. क्या वेट बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, कम होगा, ज्यादा होगा, सेम रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इस वाले पार्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इट विल रिमेन द सेम क्योंकि यहाँ पे कुछ गैशियस सब्सटेंस इन्वॉल्व ही नहीं है.
जिंक का रिएक्शन कॉपर सल्फेट से हुआ, जिंक ज्यादा रिएक्टिव था, उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, बट कॉपर भी तो सॉलिड फॉर्म में उसी वेसल में प्रेजेंट है अभी, एंड जिंक सल्फेट एक्वस फॉर्म में है, तो इट रिमेन्स द सेम। इससे हमने ये वाला भी रूल आउट कर दिया। अभी हमने लास्ट पार्ट नहीं किया, बट लास्ट पार्ट से हम अपना आंसर क्रॉस चेक कर सकते हैं। फेरस सल्फेट को हीट किया, फेरिक ऑक्साइड बना, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब गैसेस बन रही हैं, ओपन वेसल है, गैसेस भाग जाएंगी बाहर, रुकेंगी नहीं किसी के लिए, तो क्या हो जाएगा, वेट डिक्रीज हो जाएगा। इज दिस, यस दिस इज थर्मल डिकम्पोजिशन, वेरी गुड। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको ये क्लियर है कि नहीं है अब? अच्छा, क्वेश्चन थोड़ा सा आपको, ठीक है दोबारा बताते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली शोज इफ द वेट ऑफ द रिएक्शन वेसल एंड द कंटेंट्स, कुछ एक रिएक्शन हो रहा है एक रिएक्शन वेसल में, ठीक है, एक रिएक्शन वेसल है, ये तो हमारा तीसरे वाला क्या था, डिकम्पोजिशन, तो जो आपने बोल रहे हो थर्मल डिकम्पोजिशन, टाइप भी लिख दिया, ठीक है। एक रिएक्शन वेसल है बट वो ओपन है, तो गैसेस एस्केप भी कर सकती है, गैसेस आ भी सकती हैं, तो कहीं ना कहीं जहां पे गैसियस सब्सटेंसेस इन्वॉल्व होते हैं वहां पे हमें हिंट मिल जाता है कि कुछ तो चेंज होने वाला है। पहले केस में कॉपर तो उसका ऑक्सीडेशन हो गया, वेट कॉपर ऑक्साइड का तो बढ़ेगा ही ना, उस पे एक ऑक्साइड लेयर भी आ गई है अब, ओके। सेकेंड केस में नॉर्मल हमारा क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरे केस में गैसेस एस्केप कर रही हैं, उस कंटेनर से गैसेस चली गई, तो वो जो रिएक्शन जिस रिएक्शन वेसल में हो रहा था उसका वेट कम हो जाएगा पहले से, क्योंकि रिएक्टेंट्स तो हमारे पास पूरे हैं बट प्रोडक्ट्स तो उड़ गए, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस, ए महिमा, हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग 5 on 5? फटाफट से बताएंगे मुझे 5 on 5 किस किस के आ चुके हैं। क्लियर, ऑसम, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। नाउ यू अंडरस्टैंड। यही देखो, ये सेशन इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम्हारे जो डाउट्स हैं इस सेशन में सारे क्लियर हो जाएंगे, जो कॉन्सेप्चुअल डाउट्स हैं। वेरी गुड, चलो इसी बात पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ना एक सेकंड में तुम्हें समझ आ जाएगा अगर तुमने एक सिंगल बात इस चीज की समझ ली। अब यहां पे क्या हो रहा है देखते हैं। एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन ऑफ अ बेस विथ पीएच 12.1, हमारे पास 12.1 पीएच का एक सोल्यूशन पड़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डन टू डिक्रीज द पीएच? अब हमें इस 12.1 पीएच को कम करना है, कैसे कर सकते हैं? वो कह रहे हैं कि डिस्टिल वाटर ऐड कर दो, या फिर आप एक डिफरेंट बेस उसमें ऐड कर दो जिसका पीएच 8.7 है, या फिर आप उसमें कुछ ड्रॉप्स एसिड की ऐड कर दो। क्या लगता है? पहले अपना गेस बताओ, मैं तो आंसर बता ही दूंगी। आई एम हियर टू टेल यू द आंसर। बहुत अच्छे कह रहे हैं ऑप्शन बी, एसिड ऐड करने से, ठीक है। एनी अदर गेस? ओनली आर, ओनली आर, ओनली आर, सब कह रहे हैं कि ये वाला ऑप्शन जो है ना इससे होगा। एवरीवन ध्यान से सुनेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेट्स अंडरस्टैंड इट। मुझे सिर्फ एक सिंपल सी बात बताना, ये एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट आप यहां पे नहीं लगा सकते, बट मैं जो एनालॉजी बताने की कोशिश कर रही हूं वो समझने की कोशिश करना। एक स्टूडेंट है, उसके मार्क्स आ रहे हैं 90, 100 में से उसके मार्क्स आ रहे हैं 90। एक ही स्टूडेंट है, उसके मार्क्स 90 है, सिंगल स्टूडेंट की क्या एवरेज निकालना, 90 तो हो गया है ना। अब एक और स्टूडेंट है जिसके मार्क्स आ रहे हैं से 50, एक स्टूडेंट है जिसके मार्क्स आ रहे हैं 70, एक स्टूडेंट है जिसके मार्क्स आ रहे हैं 30। क्वेश्चन समझो मैं कैसे समझा रही हूं। अब ये जो 90 वाला स्टूडेंट है, पी क्यू आर, 3 और स्टूडेंट्स हैं। अब मैं बोल रही हूं कि पी के साथ अगर हम एवरेज निकालेंगे तो क्या ये 90 से कम होगी कि नहीं होगी, क्यू के साथ निकालेंगे तो होगी कि नहीं होगी, आर के साथ निकालेंगे तो होगी कि नहीं होगी। बस मुझे ये बता दो, इन तीनों केसेस में एवरेज मार्क्स दो बच्चों का कम होगा कि नहीं होगा?
तीनों केसेस में होगा कि पी में होगा, क्यू में होगा कि आर में होगा? बस ये बता दो, तीनों केसेस में होगा कि सिंगल किसी केस में होगा? मार्क्स की बात कर रही हूं, मैथ्स में 2 नंबर की एवरेज तो तुम निकाल ही सकते हो। तीनों में हो जाएगा पी क्यू आर, है ना? क्योंकि 50 और 90 का एवरेज निकालूंगी वो भी 90 से कम है, 70 और 90 का निकालूंगी वो भी 90 से कम है, 30 और 90 का निकालूंगी वो भी 90 से कम है। एवरेज तो 90 से कम हो ही जाएगा, है ना? अब यही कॉन्सेप्ट लगा दो पीएच पे। एक पीएच, पी पार्ट का पीएच आपको डिस्टिल वाटर गिवन है मतलब 7, क्यू 8.7, आर एसिड है मतलब 7 से भी कम, है ना? इट इज गोइंग टू बी लेस देन 7। अब इन तीनों केसेस में तुम्हें लगता नहीं कि इन तीनों केसेस में ही पीएच 12.1 से कम हो जाएगा? यस और नो? यस, ध्यान बिल्कुल करेक्ट। आर के केस में जो तुम लोगों ने गेस किया ड्रास्टिकली कम होगा क्योंकि एसिड है, वो तो बिल्कुल ही नलिफाई कर रहा है। बट क्यू के केस में भी तो होगा, वो एक बेस है बट वो एक वीकर बेस है ना? पी के केस में वाटर ऐड कर रहे हो, डाइल्यूशन हो रही है, तब भी कम हो जाएगा। पीएच तो तीनों केसेस में कम होगा। अब ये क्वेश्चन समझ आया कि नहीं? नॉर्मल मार्क्स का कॉन्सेप्ट लगा के देखो, तुम्हें समझ आ ही जाएगा। बिल्कुल, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ आपका? करेक्ट आंसर हुआ डी, मतलब पी के केस में, क्यू के केस में, आर के केस में, तीनों केसेस में ये हो जाएगा। एंड जो बच्चे डिस्टिल वाटर में कंफ्यूज हो रहे हैं, ये क्या है? डाइल्यूशन हो रहा है, डाइल्यूशन हो रहा है, तो डिक्रीज हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोक्साइड आयन का पर यूनिट वॉल्यूम, है ना? क्योंकि वॉल्यूम तो बढ़ती जा रही है, कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है हाइड्रोक्साइड आयन्स की, पीएच कम होता जाएगा। यस, पेपर एज अनएक्सपेक्टेड हो, ठीक है। चिरायु, वी आर एडिंग अ बेस, बट वी आर एडिंग अ बेस ऑफ लेसर पीएच ना? ओवरऑल पीएच सोल्यूशन का तो कम हो ही जाएगा। क्रिएशंस सिनेबार, ठीक है। अब एक बार अपना स्कोर बता दो फाइनली। पी आर तो लग ही रहा था, नॉट श्योर अबाउट क्यू। देखो बेसिक सब्सटेंस है, वी आर एडिंग अ बेस, 8.7 उसका बेस है। मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि हाइड्रोक्साइड आयंस जो है उसका नंबर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, मैंने आपसे पीएच ओवरऑल पूछा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज इज द मेन थिंग, ओके। एवरीवन स्कोर्स, मैम एसिड के न्यूट्रलाइज बेस एंड पीएच, हाँ करेक्ट, इट विल गो डिपेंडिंग अपॉन कि एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि बेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वेरी गुड ऑल ऑफ यू, नाउ you've understood it, awesome। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है। 1 mole of which of the following compounds requires 2 moles of hydrogen to form a saturated hydrocarbon? हाइड्रोकार्बन क्या होता है? What's a hydrocarbon? मैम कैन यू रिवाइज सोप्स एंड डिटर्जेंट्स? बच्चा दिवांशी, हम अभी कार्बन रिवाइज करेंगे, कल ही करेंगे, ठीक है? तो कल आपको पूरा डिटेल में अच्छे से फिर से बता देंगे। एग्जाम का लेवल क्या होगा मैम, या तो ऐसा होगा या इससे इजी होगा, इससे और डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। अच्छा, हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन प्लस कार्बन बहुत बच्चे लिख रहे हैं, क्या खाली हाइड्रोजन और कार्बन होता है कि कुछ और भी हो सकता है हाइड्रोकार्बन में? ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन? ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन, ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन, ओनली हाइड्रोजन, ठीक है। सैचुरेटेड का मतलब सिंगल बॉन्ड। दोनों वर्ड समझ आ गया हमें, सैचुरेटेड समझ आ गया हमें, हाइड्रोकार्बन समझ आ गया, ठीक है। चलो अब ये कह रहा है 1 mole of which of the following compounds requires 2 moles of hydrogen to form a saturated hydrocarbon by catalytic hydrogenation? हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, एक एक
ऑप्शन को एनालाइज करते हैं. ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन, यहां पे हमने एक हाइड्रोजन, लेट्स टेक सम अदर कलर, यहां पे एक हाइड्रोजन हमने ऐड किया, ये बॉन्ड तोड़ के सिंगल बॉन्ड हो गया, हाइड्रोजन ऐड हो गया ना. यहां पे एक हाइड्रोजन ऐड किया, ये बॉन्ड तोड़ के यहां पे भी सिंगल हो गया. तो फर्स्ट केस में तो हमने, आई कैन पुट अ टिक हियर कि पी के केस में हमने 2 मोल्स यूज करे. अब आते हैं नेक्स्ट पे. यहां पे हमने एक हाइड्रोजन यूज किया, इस डबल बॉन्ड को सिंगल बना दिया. यहां पे एक हाइड्रोजन हमने यूज किया, ट्रिपल को डबल बना दिया, मगर अब यहां पे डबल बॉन्ड है. दिस इज अनसैचुरेटेड, दिस इज स्टिल अनसैचुरेटेड, ये सैचुरेटेड अभी नहीं बना, तो क्यू नहीं होगा. आर पे देखते हैं, हाइड्रोजन ऐड किया, सिंगल बॉन्ड हो गया, बट एक ही हाइड्रोजन यूज हुआ ना. और बाय द वे यहां पे तो हमें ऑक्सीजन भी दिख रहा है, हाइड्रोकार्बन का कॉन्सेप्ट लगाओ यहां पे, तो ये तो ऑप्शन वैसे ही रूल आउट हो गया. लास्ट ऑप्शन देखते हैं, यहां पे हमने हाइड्रोजन ऐड किया, ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया. कैसा बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड. एक और हाइड्रोजन ऐड किया, अब ये क्या हो गया, अब ये हो गया सिंगल बॉन्ड. सिंगल बॉन्ड मतलब सैचुरेट हो गया, मतलब एस भी ठीक था. तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, पी एंड एस. पी एंड एस कौन सा है, ऑप्शन सी है. तो करेक्ट आंसर क्या हुआ हमारा इसका, हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी, पी एंड एस. इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ? यस? तो फटाफट से मार्क्स बताओ ना, दैट्स हाउ आई विल गेट टू नो. 7 on 7. बच्चा हाइड्रोजन को खाली H नहीं लोगे, H2 लोगे. एवरीवन ध्यान से, हाइड्रोजन को आप H नहीं ले रहे हो, H2 ले रहे हो. मान लो मैं तुम्हें रिएक्शन बोलती हूं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन करो टू फॉर्म अमोनिया, तो तुम N2 प्लस H2 करते हो ना, तुम N प्लस H थोड़ी करते हो. हाइड्रोजन को क्या लेते हैं, H2 लेते हैं. आया गड़बड़ कहां कर रहे हो, N प्लस H थोड़ी लेते हो. इफ आई से अभी की अमोनिया बना दो, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ऐड करके एक बैलेंस्ड इक्वेशन लिख दो, यू विल राइट N2 प्लस H2, राइट? Yes. Now you understand, Deepa. Very good. 7 on 7. 7 on 7 would mean that we've understood all the questions, ma'am, till now. Yeah, molecule form में है. Don't cram, please, Ayan. We'll have a session tomorrow. Do attend that, okay? Ma'am, do we have to mention the states only first? Done? ध्यान, हाइड्रोजन हमेशा आपका H2 की वे में ही ऐड होगा. अगर हाँ, तो अगर खाली वो ये बोल रहे हैं, फिर तो इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं हो पाएगा. फिर दे विल गिव यू सम अदर ऑप्शंस. हाइड्रोजन देखो, डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, वो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा. जैसे बहुत बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो रहे हैं, यहां देखते हैं. मान लो एल्कीन है कोई, उसमें हाइड्रोजन ऐड करोगे तो वो एल्कीन बन जाएगा. ये मेरा इथीन है, मैंने इसमें हाइड्रोजन ऐड किया, तो ये मेरा इथेन बना कि नहीं बना? ठीक है, हाइड्रोजन अटैच होगा ना. अरे एक और कर दो ना यहाँ पे. हाँ बिल्कुल. अरे वेट वेट वेट, दोबारा से आपको इसमें एक्सप्लेन करते हैं. यहीं पे कंपाउंड में ऐड करते हैं. ये एक H है, ये एक H है, ये यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, और वहां उसकी जगह एक सिंगल बॉन्ड आ जाएगा. ठीक है, यहां पे भी हाइड्रोजन हमने ऐड किया, ये डबल बॉन्ड
कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो गया, तो इन अ वे अब यहां पे सिंगल बॉन्ड्स रह गए, यस और नो? हाँ, हमेशा यस, नाउ यू गॉट इट। H2 का कर रहे हैं, बट 2 मोल्स बोला है इसलिए 2 बार करा। नहीं 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 नहीं, दिस इज नॉट फ्रॉम ग्रेड 11, यही सही है। बिल्कुल बिल्कुल, चलो हाँ सही बोल रहे हो, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। मैम बॉन्ड कैसे ब्रेक हो रहा है? अच्छा चलो फटाफट से मैं समझा रही हूं, क्योंकि हमने बहुत टाइम लगा दिया इस क्वेश्चन में, फटाफट से समझेंगे बॉन्ड कैसे ब्रेक हो रहा है। ठीक है, ये हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ठीक है, अब मैं इसमें क्या ऐड कर रही हूं? हाइड्रोजन ऐड कर रही हूं। मैं कह रही हूं, ध्यान से देखो इसको, मैं कह रही हूं कि ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, एक डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बट इसका हाफ बॉन्ड और इसका हाफ बॉन्ड मिलकर एक बॉन्ड बना देगा। तुम्हें मैं सारे कलर्स के साथ एक्सप्लेन कर रही हूं। यहां तक ऑलरेडी हमारे पास था। अब मैं इस कलर से बॉन्ड बना रही हूं, ध्यान से देखेंगे, ये बॉन्ड बना, ये दोनों हाफ से बॉन्ड बना और हाइड्रोजन आ गया। दूसरा देखते हैं, ये हाफ बॉन्ड बचा था, ये हाफ बॉन्ड बचा था, इससे ये हाइड्रोजन आ गया। अब आया समझ की नहीं? अब तो पूरा केमिस्ट्री कलरफुल हो गया। यस और नो? फाइनली, शुक्रिया, थैंक यू, फाइनली यू अंडरस्टूड कि बॉन्ड कैसे ब्रेक हो रहा है। उसका बॉन्ड उससे बन रहा है, उसका बॉन्ड उससे बन रहा है। इजी, वेरी गुड। देखो तुम 2 बार बोलोगे 2 बार समझाएंगे, 10 बार बोलोगे 10 बार समझाएंगे, अल्टीमेटली समझ आना चाहिए कि कैसे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कैसे बॉन्ड बन रहा है। अब सिंगल बॉन्ड आया कि नहीं आया? आया ना, सैचुरेटेड हो गया। वेरी गुड, आई कैन सी ऑल द थम्स अप इन द चैट, मतलब मेहनत सफल। चलो एवरीवन, दिस इज नाउ क्वेश्चन नंबर 17। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। छोटा सा कैच है इस क्वेश्चन में बच्चा। असर्शन कह रहा है व्हाइट वॉश वॉल डेवलप्स अ कोटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आफ्टर अ फ्यू डेज। रीजन कह रहा है कैल्शियम ऑक्साइड reacts, calcium oxide on the wall reacts slowly with carbon dioxide in the air. ABCD तुम बताओ आंसर, फिर मैं समझाऊंगी कि क्या है आंसर। फटाफट से आंसर बताएंगे इसका, चलो जल्दी से। सी, ए सी, यही मुझे पता था कंफ्यूजन होगी। ध्यान बच्चा, यू नॉट, आप बिल्कुल परेशान नहीं कर रहे, आपका डाउट बिल्कुल एक हाइपोथेटिकल डाउट आप जो ला रहे हो, आप बोल रहे हो अगर उन्होंने एटम ही बोल दिया तो आप एक सिंगल एटम को बॉन्ड में कैसे अटैच करोगे ना? वो तो एक कार्बन के पास ही जा रहा है, दूसरे कार्बन के पास नहीं जाएगा, उसकी वैलेंसी पूरी नहीं होगी, कंपाउंड कैसे स्टेबल होगा? फिर कुछ तो और ऐड करना पड़ेगा ना। ठीक है, वैसे नहीं बोलेंगे। ये आपके 2 प्रोबेबल आंसर्स हैं, है ना? यही मुझे पता था। मुझे पता था यही तुम कंफ्यूज हो जाओगे। व्हाइट वॉश जब हम करते हैं कोटिंग कैल्शियम कार्बोनेट की आती है, ये तो बिल्कुल सही है, असर्शन स्टेटमेंट सही है, यहां तक तुम लोग बिल्कुल सही हो। कैच कहां है? कैच है यहां, कैल्शियम ऑक्साइड नहीं यूज होता, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। इसका रिएक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ध्यान से देखो अब, तो असर्शन तो ठीक है बट रीजन गलत है।
हैव यू अंडरस्टूड? छोटा सा कैच था, कैल्शियम ऑक्साइड नहीं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, है ना? स्लेट लाइम, लाइम वाटर, यस. सो करेक्ट आंसर क्या हुआ इसका? ऑप्शन सी की असर्शन ठीक है, बट रीजन जो है वो ठीक नहीं है. अब हमने पूरा का पूरा सेक्शन ए खत्म कर दिया है, राइट? सो वीव डन 8 क्वेश्चंस. मुझे अपना स्कोर 8 में से बता दो कितना आया फाइनली. देन वील बिगिन विद 2 मार्कर क्वेश्चन. सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे. सेक्शन बी में अपने पास एक ही क्वेश्चन है. जल्दी से बता दो मुझे. 8 on 8. अगर सारे के सारे क्वेश्चन समझ आए तो 8 on 8. अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ आए तब अपने मार्क्स काटना. If you've understood all the questions, then give yourself full marks because you've understood it, ना? तुमने मेहनत करी, तुमने समझा. Oh, this is your first question. अभी ज्वाइन किया, कोई बात नहीं. हाँ, सेक्शन ए में बहुत सारे केमिस्ट्री क्वेश्चंस थे, अब फटाफट हो जाएंगे बाकी सेक्शंस. वेरी गुड. अ लॉट ऑफ यू सेइंग मैम सब कुछ समझ आ गया. एक आधा क्वेश्चन दोबारा देखेंगे. वेरी वेल डन. कमिंग टू सेक्शन बी नाउ. अब सेक्शन बी हमारा स्टार्ट हो रहा है. इसमें हमारे पास एक 2 मार्कर क्वेश्चन आया हुआ है और एक ही क्वेश्चन है, बट ये ऑप्शन के साथ था. क्वेश्चन बहुत अच्छा है. डायना ने प्रिपेयर किए केक 2 मेथड से. पहले में शी एडेड बेकिंग सोडा टू द केक मिक्सचर एंड लेट द मिक्सचर स्टैंड फॉर 1 hour बिफोर प्लेसिंग इट इन द ओवन टू बेक. बिफोर प्लेसिंग इट इन द ओवन. अभी हीट नहीं दिया हमने उसे, यही पकड़ना था क्वेश्चन में. सेकेंड, she added baking powder to the cake mixture and let the mixture stand for 1 hour before placing it in the oven to bake. State the difference in the cake mixtures that she is likely to observe before baking and explain why. अगर मैं तुम्हें ये बोलती पूरे क्वेश्चन का लैंग्वेज बिफोर नहीं होता, अगर आफ्टर होता, तो तुम्हारा जो पॉइंट है ना कि मैम ये बिटर हो जाएगा टेस्ट करने में, ये बिटर नहीं होगा, ये स्वीट होगा, तब वो कॉन्सेप्ट तुम वहां पे अप्लाई कर रहे हो. मगर अब यही सेम कॉन्सेप्ट आप कैसे अप्लाई करोगे बिफोर के केस में? अभी हमने हीट प्रोवाइड नहीं किया, अवन में नहीं रखा, मतलब हीट प्रोवाइड नहीं किया. बेकिंग सोडा मेक्स केक फ्लफी बट बेकिंग पाउडर गिव्स बिटर टेस्ट. नो तनिष्क, दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर. ठीक है भूमि, बट डू वॉच इट. ओके. Cake in the second case will be fluffy. Second method is better. Second method is better. First method is better. Second method is better. चलो समझते हैं. तनिष्क ध्यान देंगे, बाकी बच्चे भी इस क्वेश्चन पे अच्छे से ध्यान देंगे. पहले केस में हमने लिया बेकिंग सोडा जो एक्चुअली इवेंचुअली बिटर कर देता है ना, बट इट कैन नॉट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं करेगा विदाउट हीट. हीट के बिना नहीं करेगा, तो केक विल नॉट राइज. ठीक है, हीट के बिना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होगा. ये हमारा बेकिंग सोडा है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट. इसको जब मैं हीट कर देती हूं, देन इसमें से सोडियम कार्बोनेट निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वाटर निकलता है. वो कार्बन डाइऑक्साइड फ्लफी कर देता है जब हम उसको कहाँ रखते हैं, ओवन में रख दिया हमने, या हीट प्रोवाइड कर दिया. बट यहाँ पे बिफोर लिखा है, मतलब अभी हीट प्रोवाइड नहीं हुई, मतलब बेकिंग सोडा जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड अभी प्रोड्यूस कर ही नहीं पा रहा, तो केक को फ्लफी करेगा ही नहीं. बट अब सेकेंड केस पे हम आते हैं, बेकिंग पाउडर. अब बेकिंग पाउडर हमारा क्या होता है, ये हमारा बेकिंग पाउडर क्या होता है, दैट इज बेकिंग सोडा प्लस सम एडिबल एसिड. बेकिंग सोडा में हमने कोई एक एडिबल एसिड डाल दिया, ठीक है, तो इन अ वे NaHCO3 में हमने कोई एक एडिबल एसिड डाला हुआ है. अब रिएक्शन होगा और क्या बन जाएगा, सोडियम सॉल्ट बन जाएगा साथ में. अगर आपने ये एडिबल एसिड ले लिया, टार्टारिक एसिड, इफ यू टेक दिस एसिड टू बी टार्टारिक एसिड, सो आपका सोडियम टार्ट्रेट बन जाएगा. तो अब केक जो है वो राइज करेगा, इजीली कर जाएगा अब तो. ठीक है, इज दिस क्लियर? थोड़ा सा हाँ हीट पे और ज्यादा कर जाएगा, बट अभी थोड़ा तो राइज कर ही जाएगा.
तो ये जो दोनों हैं ऐसे केक्स दिखेंगे, ये आपको राइज करता हुआ नहीं दिख रहा, फ्लफी नहीं दिख रहा, ये थोड़ा सा आपको राइज करता हुआ दिखेगा, एंड यही हमको आंसर में लिखना है. सो बेकिंग सोडा में कोई टार्टारिक एसिड नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, हीट के बिना वो रिएक्शन करेगा ही नहीं. ठीक है, इट विल नॉट बी प्रोड्यूसिंग एनी कार्बन डाइऑक्साइड. सो नॉट प्रोड्यूसिंग एनी कार्बन डाइऑक्साइड. सो राइज नहीं कर रहा केक, बट जो बेकिंग पाउडर है उसमें बेकिंग सोडा के साथ टार्टारिक एसिड है या माइल्ड एडिबल एसिड है, ये रिएक्शन होगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा एंड द केक मिक्सचर विल राइज. वेरी गुड. तनिष्क सिंह, यस मैम, अंडरस्टूड मैम, केक बनाया है इसलिए पता है. अरे वाह, ये तो रियल लाइफ से लिंक कर लिया. मैम, हाउ मेनी सैंपल पेपर्स वी हैव टू सॉल्व? अयान, एक दिन में बोल रहे हो कि अब आगे कितने करने हैं? कम से कम 4-5 पेपर सॉल्व करके जाना, वैसे एक दिन में नहीं, ओवरऑल. गुड गुड गुड, अंडरस्टूड. अच्छा, ये क्वेश्चन ना एक ऑप्शन के साथ आया था कि यार या तो ये वाला कर लो या फिर आप दूसरा पार्ट कर लो. दूसरा पार्ट तो और भी सिंपल था. इफ आई हैड टू चूज आई विल डू दिस पार्ट बिकॉज दिस वाज मच इजियर एक्चुअली. कार्तिक, नो, बिकॉज वी आर एडिंग माइल्ड एसिड, है ना. ठीक है, चलो. कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ अ न्यूट्रल सोडियम एटम. सोडियम एटम, अब अगर मैं सोडियम एटम का एटॉमिक नंबर बोलूं कितना होता है? 11 होता है. बस ये याद रखना है. इसे हमें कंपेयर करना है विद अ पॉजिटिव सोडियम आयन एंड वी हैव टू जस्टिफाई द आंसर. क्या ज्यादा स्टेबल होगा, सोडियम एटम या सोडियम आयन? क्या लगता है क्या ज्यादा स्टेबल होगा? फटाफट से बता दो मुझे. मतलब 4-5 सैंपल पेपर की बुक्स सॉल्व करके जाए. हाँ, स्पेशली जो सीबीएसई सैंपल पेपर्स दे रहे हैं वो करो सॉल्व, वो ज्यादा एप्ट है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. आयन, एवरीबडी सेइंग मैम इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. आयन आयन आयन. ठीक है जी, आपकी बात मान लेते हैं. ये रहा हमारा सोडियम जिसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स है, 281 कॉन्फ़िगरेशन हो गई. आयन से एक इलेक्ट्रॉन हट गया तो Na+ आयन में ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था ये हट गया तो कॉन्फ़िगरेशन 28 हो गई. ये किसके कॉन्फ़िगरेशन जैसा है? ये तो इन अ वे, ध्यान से देखो, नियॉन के कॉन्फ़िगरेशन जैसा है कि नहीं है? बिल्कुल है मैम. ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा है. ऑक्टेट रूल भी फॉलो कर रहा है. तो क्या ज्यादा स्टेबल हुआ? सोडियम आयन जो है वो ज्यादा स्टेबल हुआ. तो यही आपका आंसर होगा. A positive sodium ion is more stable than a neutral atom. The reason being, क्योंकि ये जो positive ion है ये octet rule follow कर रहा है. It has a complete octet of 8 electrons, right? In the penultimate shell. ठीक है, ये तो simple question था. Clear है? आगे बढ़े यहां तक. Quick thumbs up in the chat. फटाफट मुझे thumbs up दो to tell me कि yes मैम यहां तक तो सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो गया. मैम यू ऑलवेज से इट्स नॉट रॉकेट साइंस. अच्छा ठीक है, नहीं बोलेंगे. पेनल्टीमेट क्या है? पेनल्टीमेट सेकेंड लास्ट शेल होता है. देखो ये K फर्स्ट शेल है, ये L नेक्स्ट शेल है, M लास्ट शेल है. M से पहले वाला शेल सेकेंड लास्ट शेल, आपका सेकेंड लास्ट शेल L हो गया. जैसे ही आयन बना तो ये जो पेनल्टीमेट शेल है ये कंप्लीट है ना, ये मतलब हुआ इसका. ठीक है, सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग. ओके, चलो आप वो वर्ड नहीं भी लिखोगे, आप ऑक्टेट रूल लिखोगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे. बिल्कुल बिल्कुल, स्टेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन्स आप बता रहे हो. ऑक्टेट रूल, 8 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, जब वो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं कहीं ना कहीं वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं. एक्सेप्ट डुप्लेट रूल में हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं. अनन्या, एवरीबडी इज ट्राइंग टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट. जो ये सारे रिएक्शंस, जो इतने सारे कंपाउंड्स हमारे आसपास बन रहे हैं
वो आयन से तो बन रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सोडियम का क्या मन कर रहा है कि वो एक इलेक्ट्रॉन अपना आउटरमोस्ट रिलीज कर दे ताकि वो ऑक्टेट बना पाए, नोबल गैसेस की तरह बिहेव कर पाए। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू सेक्शन सी नाउ। सेक्शन सी स्टार्ट करते हैं। 3 मार्क के क्वेश्चंस आएंगे इसमें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, मतलब ये क्वेश्चन देख के तो तुम्हें लगेगा मैम चैप्टर 1 तो सबसे हलवा है। यस और नो? मैग्नीशियम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाएंगे। ठीक है, ऑब्जर्व द 2 केमिकल इक्वेशंस गिवन टू यू। 2 इक्वेशंस गिवन है। एक्सप्लेन हाउ अ बैलेंस्ड इक्वेशन कैन बी आइडेंटिफाइड। कैसे आइडेंटिफाई करोगे, इनमें से कौन सी बैलेंस है कौन सी नहीं है, जो नहीं है उसे बैलेंस कर दो। ये पार्ट भूल जाते हैं बच्चे करना, ये नहीं भूलना, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। हाँ करेक्ट। तो कैसे हमें पता चलेगा? कोई टेंशन की बात ही नहीं है, फटाफट पता चल जाएगा, क्योंकि जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, इट हैज इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑन बोथ द साइड्स। इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एवरी एलिमेंट ऑन बोथ द साइड्स, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। इससे हमें पता चलता है कि इक्वेशन बैलेंस्ड है कि नहीं है। ओके, just don't finish your answer at equal number of atoms. Please mention equal number of atoms of every element. Say suppose यहाँ पे कैल्शियम के 3 एटम्स थे, just randomly I'm saying, ऑक्सीजन के 2 थे, प्रोडक्ट में कैल्शियम के 2 थे, ऑक्सीजन के 3 थे। अब टोटल तो 5 है दोनों साइड पे, बट ये बैलेंस थोड़ी हुई। So you have to mention equal number of atoms of each and every element. This is not balanced, right? Are you understanding what I am saying? This is the key words जो नहीं भूलने। ये जो element word है भूलना नहीं है। Done? अरे बाप रे, इतना पीछे पड़ गया कि अरे मैं बोलूंगी नहीं इसके बाद से रॉकेट साइंस है ये। बिल्कुल नहीं, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दिया तुम्हें, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, हाँ चलो, कंप्लीट आंसर लिखने पे मार्क्स मिलेंगे, ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट लिखना है। मूविंग ऑन, विच ऑफ द 2 इक्वेशंस इज नॉट बैलेंस? पी या क्यू में से कौन सी बैलेंस नहीं है? इज आर लिखा है, मतलब हो सकता है कि दोनों बैलेंस ना हो। फटाफट से बता दो। वेरी गुड कार्तिके। विच इज नॉट बैलेंस आउट ऑफ पी एंड क्यू? I think the table is in front of you. It will take you a second to answer that. And still if somebody is writing Q ना, तो मैं तुमसे पूछूंगी Q लिखा है तुमने क्यों? हाँ, P is not balanced, क्योंकि देखो यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं, कैल्शियम 1 on both ends, ठीक है, ऑक्सीजन 5 है। कैसे 5 है? यहाँ पे देखें अगर हम, ये रहे 3, यहाँ से 2, टोटल 5। प्रोडक्ट साइड पे 3 into 2 6, ये रहे +1 7। इस तरीके से आपको सारे एलिमेंट्स के लिए देखना है, और हमें दिख रहा है कि यार यहां सेम तो नहीं आ रहा है ना, तो बैलेंस तो ये नहीं है। अब इसे बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? हम इसे बैलेंस करने के लिए एक 2 यहां रखा, एक 2 यहां रखा। अब जब हमने काउंट किया नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट, नाउ इट इज कंप्लीटली बैलेंस्ड। वी स्टार्टेड बैलेंसिंग यूजिंग कैल्शियम। कैल्शियम दोनों साइड पे बैलेंस था। नेक्स्ट आपने नाइट्रोजन को बैलेंस किया, तभी आपने ये वाला 2 लिखा। देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन लास्ट में बैलेंस किया। यस, ये जो पार्ट है ना बैलेंस करना, ये मत भूलना बस। ये भूल गए तो गड़बड़ है। क्लियर? सेकंड जो बैलेंस है ना, पोटेशियम दोनों एंड्स पे 1 है, नाइट्रोजन दोनों एंड्स पे 1 है, सिल्वर दोनों एंड्स पे 1 है, ब्रोमीन 1 है, ऑक्सीजन 3 है। मधु, कैल्शियम ऑक्साइड का सॉल्यूशन यूज होता है, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में बनाया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। यू हैव टू मेंशन इन दिस वे कि कैल्शियम ऑक्साइड का सॉल्यूशन लिया, उसमें वाटर इन वे ऐड किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, फिर वो फर्दर रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड से। हाँ
बिल्कुल टेबल बना देना, समझ आ जाएगा सबको. So this is how you have to present the answer. Number of atoms of each and every element same होंगे तो balanced है. P balanced नहीं था, हमने balanced equation दे दी. ये easy question था, ये chapter ही easy है. You saw HNO3. अच्छा चलो next 28th question. ये भी 3 marks का आया हुआ है. The thermit process is used for repairing cracks in railway tracks. ठीक है. अब write the equation for the reaction taking place in the process. ये रिएक्शन हमने करी है कि नहीं करी? बिल्कुल करी है. तो देख लेते हैं एक बार. ये जो रिएक्शन है एल्यूमिनियम की विद Fe2O3, ये रिएक्शन हो रहा है. इसमें आयरन बन रहा है एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड. तो मतलब इसमें क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है. बट इस क्वेश्चन में कैच है. क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं. राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द प्रोसेस मेंशनिंग द फिजिकल स्टेट्स. तो आज तक आप मुझसे यही पूछते हैं मैम फिजिकल स्टेट लिखनी है नहीं लिखनी, लिखनी है नहीं लिखनी. तो एवरी टाइम आई हैव टोल्ड यू वन थिंग, बच्चा अगर क्वेश्चन में बोलेंगे ना स्पेशली कि लिखो तब लिख देना. तो अभी यही है, ठीक है, अभी यही है, इन्होंने बोल दिया. हाँ सेकेंड इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस थी भूमिका. हाँ अब जब ये रिएक्शन होता है ना बहुत ज्यादा हीट भी रिलीज होती है. रिएक्शन देखते हैं. एल्यूमिनियम सॉलिड फॉर्म में, मेटल सॉलिड फॉर्म में. आपका फेरिक ऑक्साइड भी सॉलिड है. रिएक्शन हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ. आयरन मोल्टन फॉर्म में हमें मिलता है, इसलिए हमने लिक्विड लिखा है. स्टेट क्या लिख दिया? आयरन की लिक्विड. और एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो सॉलिड फॉर्म में ही होगा. ठीक है. मेटल जहां पे आपको मोल्टन फॉर्म में मिल रहा है, ये जो मेटल है ये आपको मोल्टन फॉर्म में मिल रहा है. किस फॉर्म में? मोल्टन फॉर्म में. इसको आप बैलेंस नहीं करोगे तो चलेगा क्योंकि उन्होंने बैलेंसिंग आपसे पूछा नहीं था. ये इक्वेशन क्लियर है बिल्कुल, है ना? वेरी गुड. हाँ थर्माइट रिएक्शन हो रहा है. मैम डू वी हैव टू बैलेंस दिस? नो, इवन इफ यू डोंट बैलेंस चलेगा, बट स्टेट लिखनी जरूरी है इस क्वेश्चन में. करण इसके बाद 2 क्वेश्चंस 34 एंड आई थिंक अनदर क्वेश्चन इज लेफ्ट. ठीक है चलो. व्हाट इंफॉर्मेशन इन द केमिकल इक्वेशन इंडिकेट्स द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक? कैसे पता चल रहा है? क्योंकि जो आयरन है ये मोल्टन स्टेट में मिल रहा है हमें, है ना? इससे पता चल रहा है जो आयरन फॉर्म है वो मोल्टन लिक्विड स्टेट में फॉर्म है, इसलिए जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है. अब पॉइंट ये, अगर तुम्हें पता ही नहीं होगा कि आयरन लिक्विड फॉर्म में है या मोल्टन फॉर्म में है तो तुम कभी बता ही नहीं पाओगे कि ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है हाईली एक्सोथर्मिक है. तो ये जो दोनों क्वेश्चंस थे इंटरकनेक्टेड थे. तुम्हें स्टेट पता होगी तभी तुम सेकंड पार्ट सही करोगे, सेकंड पार्ट पता है तभी तुम फर्स्ट पार्ट में स्टेट लिक्विड लिखोगे. ये इंटरकनेक्टेड है, या तो दोनों सही होंगे या दोनों गलत होंगे. बैलेंसिंग इज नीडेड फॉर बोर्ड एग्जाम ओनली इफ दे आस्क यू टू राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन. ठीक है, आया समझ? चलो वेरी गुड. तो बस ऐसे आंसर हमें लिख देना है. ये रहा आपका रिएक्शन जहां पे आपने सही केमिकल फॉर्मूला लिखा है, सही स्टेट्स लिखी हुई हैं. एंड क्योंकि यहाँ पे ये मोल्टन फॉर्म में था इसलिए हम कह रहे हैं एक्सोथर्मिक है, क्योंकि बहुत ज्यादा हीट भी रिलीज हो रही है. आई थिंक बिकॉज हीट इज रिलीज. यस यू करेक्ट. यहां तक सब कुछ क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं. कैन वी मूव ऑन? आगे बढ़े. चलो. साजिद wants a break. How many of you want break? How many of you want break? We are left with section D. 5 marks के 2 questions हैं. Quick yes or no? Break चाहिए 2 मिनट की कि नहीं? नो 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 नो. हाँ 2 questions. चलो फटाफट कर लेते हैं. Just 2 questions are left, है ना? चलो 2 questions है बट उसमें 5 है. चलो. Now we are on section D. सेक्शन डी पे हम आ गए. इसके बाद सेक्शन ई है, उसमें एक क्वेश्चन करेंगे और सेक्शन डी का एक क्वेश्चन करेंगे. 34th क्वेश्चन 5 मार्कर. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. हाँ बच्चा मैंने नो पढ़ लिया आपका, नहीं दे रहे ब्रेक. प्रसाद हैज अ सैचुरेटेड अल्कोहल X with this formula C4H9OH. C4H9OH. Write the chemical formula for member Y that comes 2 places after X in the homologous series and state by how much will its molecular mass vary.
C4H9OH कौन सा ग्रुप है? ये अल्कोहल का ग्रुप है, ठीक है। चलो, अल्कोहल का ग्रुप है, होमोलोगस सीरीज की बात हो रही है जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन को। हमें क्या गिवन है? हमें ब्यूटेनॉल गिवन है, C4H9OH, है ना। जिन बच्चों को कंफ्यूजन हो रही है, C4, ये रहा OH, अब बस वैलेंसी पूरी कर दो, H H H H H H H H H, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या हो गया? C4H9OH बन गया, ब्यूटेनॉल बन गया। अब ध्यान से देखेंगे, इन्होंने बोला है 2 मेंबर आगे, मतलब हम यहां से आप पेंटेनॉल पे गए, पेंटेनॉल से हेक्सेनॉल पे गए, आपको हेक्सेनॉल का फॉर्मूला देना है। अब हर बार जब हम आगे जा रहे हैं, हम क्या ऐड कर रहे हैं? हम CH2 ऐड कर रहे हैं। तो C4H9OH में CH2 ऐड किया तो C5H11OH बन गया, उसमें फर्दर CH2 ऐड किया तो C6H13OH बन गया। इजी था ये तो, है ना। इन्होंने ये बोला कि मास में भी कर दो, मास में भी कर देते हैं। हर बार जब CH2 हम ऐड कर रहे हैं, 14U ऐड कर रहे हैं, तो यहां से यहां हमने 14U ऐड किया क्योंकि हम CH2 कर रहे हैं, मतलब 12 प्लस 1 प्लस 1 14U, यहां से यहां 14U और कर दिया, टोटल हमने 28U ऐड कर दिए। तो दोनों पार्ट्स का आंसर हो गया। सबसे पहले इन्होंने कहा राइट द केमिकल फॉर्मूला, हमने बता दिया केमिकल फॉर्मूला C6H13OH हो गया। And by how much will its molecular mass vary? By a unit of 28U. यूनिट नहीं भूलना, यू लिखना है, यूनिट नहीं भूलना, ठीक है। मैम वेयर यू लाइव, कहां से लाइव हूं ये पूछ रहे हो? हाँ, यूनिफाइड मास मधु, ठीक है मैम। बस सब एनसीईआरटी में नहीं है ना मैम, मास सब एनसीईआरटी में नहीं। बच्चा आपको कार्बन का मास पता है 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, 2 हाइड्रोजन तो 2 हो गया, तो 12 प्लस 2 14U हो गया। एक होमोलोगस मेंबर से दूसरे में जाने में 14U का गैप होता है। हम डबल बार जा रहे हैं, हमने इसको 28U कर दिया, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर था। अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ X कंपेयर विद दोज ऑफ Y एंड गिव रीजन। ये जो दोनों के दोनों है, ध्यान से देखेंगे, ये कहीं ना कहीं अल्कोहल है, सेम होमोलोगस सीरीज के मेंबर है, अल्कोहल है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी क्या हो जाएंगी? सिमिलर। क्या सिमिलर नहीं होगा? फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं होंगी या सिमिलर नहीं होंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज तो सिमिलर होंगी ना, क्योंकि दोनों अल्कोहलिक ग्रुप्स हैं दोनों में। उत्कर्ष U जो है वो यूनिफाइड मास का यूनिट हो गया, AMU, U करा था ना हमने, ये वो वाला U है, यूनिट का शॉर्ट फॉर्म U नहीं है। हाँ, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। बिल्कुल सही, ठीक है। हाउ डू द प्रॉपर्टीज एंड यू हैव टू गिव रीजन आल्सो, क्योंकि दोनों के दोनों में क्या है? अल्कोहलिक ग्रुप्स हैं, दोनों अल्कोहल्स हैं, बस रीजन भी बता दिया। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट Z फॉर्म्ड बाय हीटिंग Y, ये हमारा Y था, इसको हमने रिएक्ट कराया एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ। तो ये क्या है? ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि नहीं है? बैलेंसिंग इज नीडेड फॉर बोर्ड एग्जाम और नॉट? बच्चा आई ऑलरेडी आंसर्ड, इफ दिस से राइट बैलेंस्ड इक्वेशन देन यस। नहीं एस्टर नहीं है, एसिड बनेगा। अल्कोहल को आप ऑक्सीडाइज कर रहे हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। एजेंट्स याद रखने, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो कॉरेस्पॉन्डिंग आपका बन जाएगा एसिड। यहां पे कितने कार्बन है? यहां पे 6 कार्बन है, 5 + 1 6, 6 कार्बन का एसिड बन गया। ऑक्सीडेशन, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? यस, वेरी गुड। देखो 1 2 3 4 5 6, CH3 CH2 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 CH2OH, यही है हमारा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हाँ C6H13OH। अब इसका जब रिएक्शन हुआ
कैन यू सी दिस? जब इसका रिएक्शन होगा, स्क्रीन दिख रही है आपको? तो ये जो है, ये वाला एसिड में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो हमारा क्या बन गया? हमारा बन गया CH3, CH2, 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 CH2 और COOH. तो अगर आप एक्चुअली में अब काउंट करो, ये देखो, आई होप यू कैन सी, 1 2 3 4 5 C5, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 H11 एंड ये COOH. कैसे आया? समझ आया? ओके, डिड यू अंडरस्टैंड कि कैसे C5H11 COH? तुमने 6 कार्बन का अगर बनाने की कोशिश करी और तुमने इसको C6H13 COH कर दिया, गलत हो जाएगा. टोटल कार्बन 6 होने चाहिए. Is this clear to all of you? Very good. Now you have to write the general formula. ये देखो general formula क्या है? ये आपको RCOOH दिख रहा है. ये जो R है C5H11 मतलब CnH2n+1 है. यही जनरल फॉर्मूला है, CnH2n+1 COOH. यहाँ पे N क्या है? इस केस में हमारा N 5 था, तो C5H11 COOH. Is this clear to all of you? Quick yes or a no in the chat. फटाफट से. Clear, 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 clear. Oxidizing agent है. ध्यान. हाँ, KMNO4 भी दे सकते हैं. Very good. Good to know that. Yes, awesome. अच्छा, सेशन सबने लाइक करा है ना? Big yes मैम, वेरी गुड. फटाफट से इस बात पे सेशन भी लाइक कर दो. तो बस ये हमारा आंसर हो गया. पहले पार्ट में आपको क्या बताना था? केमिकल फॉर्मूला ऑफ मेंबर वाई ये रहा. मास 28U. कैसे प्रॉपर्टीज वेरी करेंगी? वो सिमिलर रहेंगी क्योंकि कहीं ना कहीं फंक्शनल ग्रुप सेम है अल्कोहल. अब आपको Z का फॉर्मूला लिखना है जो कहीं ना कहीं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट करे. ब्यूटेनॉल या पेंटेनॉल या जो भी अल्कोहल आप ले रहे हो, कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड में बन जाएगा. ब्यूटेनॉइक एसिड या पेंटेनॉइक एसिड. अब हेक्सेनॉल हो गया तो हेक्सेनॉइक एसिड, जो भी है कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड में बन जाएगा. तो ये आपका अल्कोहल से एसिड बन गया, आपने लिख दिया, और ये उसका जनरल फॉर्मूला हो गया. बच्चा, दिस इज नॉट प्रोपेनॉइक एसिड. 6 कार्बन है, ठीक है. 6 कार्बन. हमने स्टार्ट किया था, वी स्टार्टेड विद ब्यूटेनॉल, फिर हेक्सेनॉल बना दिया, फिर हेक्सेनोइक एसिड बना दिया. ओके, वेरी गुड. yes and no. C is not. हाँ, ध्यान जानते हैं. चलो, हाँ, वेरी गुड करण. जिसको COOH कैसे आया वो समझना है, वो ये वाली स्लाइड दोबारा देखेंगे, ठीक है. वीडियो पीछे करके दोबारा देखना, तब तुम्हें समझ आएगा कि कितने कैसे वो C5H11 COOH आया है. चलो, इस क्वेश्चन में और था कि या तो ये कर दो या फिर ये दूसरा कर दो. दूसरा क्वेश्चन ना थोड़ा सा ट्रिकी आया हुआ है. लेट मी टेल यू दिस बिफोर हैंड. पहले वाला इजी था, ये थोड़ा सा ट्रिकी है. इफ आई हैड टू चूज आई वुड चूज द फॉर्मर वन. क्या क्वेश्चन है? एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारे पास है, ठीक है. 1 सेकेंड. यस, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारे पास है P, जिसका C4H6 केमिकल फॉर्मूला है. गाइस, ये क्या है? व्हाट इज C4H6? फटाफट से. आई कैन सी तनिष्क ने तो पहले लिख दिया. यस वर्षा. व्हाट अबाउट अदर्स? जल्दी जल्दी बताओ. इसके बाद बड़ा क्यूट सा सेक्शन ही सॉल्व करेंगे. बहुत अच्छे, बहुत प्यारे क्वेश्चंस हैं उसमें. हाँ क्या है? हाँ, वेरी गुड. अल्काइन, ब्यूटाइन है, ठीक है. तो अब हम इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो बना ही सकते हैं, जो 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं. सो देयर यू गो. ये जो हमारा ब्यूटाइन है, जो अल्काइन है, उसके हमने दोनों स्ट्रक्चर्स बना दिए, ठीक है. ये स्ट्रक्चर 1 ब्यूट 2 आइन, स्ट्रक्चर 1 ब्यूट 1 आइन, या 1 ब्यूटाइन 2 ब्यूटाइन करके भी आप इन्हें बोल सकते हो.
एक में ट्रिपल बॉन्ड सेकंड कार्बन पे, एक में ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे है। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है, वेरी गुड। अब ये तो हो गया पार्ट। राइट द रिएक्शन कंडीशंस टू कन्वर्ट वन ब्यूटेनॉल टू दिस हाइड्रोकार्बन P। अब ये थोड़े डिफरेंट स्टेप्स में होगा, ध्यान से देखेंगे। पहला स्टेप, वन ब्यूटेनॉल है, इसे हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे हीट करते हुए। जो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है वो वाटर निकाल देगा। जैसे ही वो वाटर निकालेगा हमें एल्कीन मिल जाएगा। कैसे, देखते हैं। ये हमारा CH3 CH2 CH2 CH2OH 1 2 3 4, ठीक है, 4 कार्बन का आपको अल्कोहल मिल गया, ब्यूटेनॉल। अब इसमें से आपको निकालना है वाटर। तो मैं ऐसा कर रही हूं, मैं ना ये OH इधर लिख रही हूं और मैं H इधर लिख रही हूं, बात तो वही है, CH2OH है। अब वाटर मुझे निकालना है, मैंने यहां से वाटर निकाला। जैसे मैं यहां से वाटर निकालूंगी, मैं यहाँ पे एक बॉन्ड बना दूंगी और वही बॉन्ड बना हुआ है, वही आपके पास आ गया ब्यूटीन। डबल बॉन्ड कैसे बनता है मैं आपको ये बता रही हूं यहाँ पे, ठीक है। वाटर निकला, HOH निकला, वहां से डबल बॉन्ड आपके पास आ गया यहां पे, तो आपका ब्यूटीन बन गया। बट हमें तो ब्यूटाइन बनाना है, राइट। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, ट्रिकी आया हुआ है। इसको अब हम फर्दर क्या करेंगे, इसमें ब्रोमीन ऐड कर देंगे। अनसैचुरेटेड है ब्यूटीन, ब्रोमीन ऐड करेंगे तो ब्रोमीन ऐड हो गया। ये जो डबल बॉन्ड था ये ब्रेक हो जाएगा और ब्रोमीन ऐड हो जाएगा दोनों तरफ। वही हुआ, ब्रोमीन ऐड हो गया। यू कैन सी आपका ये बन गया। बट अब आप बोलोगे कि मैम हमें तो हटाना था, हमें तो अनसैचुरेशन बढ़ानी, आपने कम कर दी। अब हम इसका रिएक्शन कराएंगे एक स्ट्रॉन्ग बेस से, अल्कोहलिक KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग बेस से। रिएक्शन कैसे होगा समझो, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। ये हमारा CH3 CH2, ये H, Br यहां, Br यहां, H यहां, H यहां। ये स्ट्रक्चर क्लियर है सबको? बच्चा अगर आपने ब्रोमीन की जगह हाइड्रोजन भी ऐड कर दोगे तब भी तो सैचुरेशन चली जाएगी ना। ये स्टेप मेन है, दिस इज द मेन स्टेप, इसे समझो। यहां पे अब हमने क्या किया है, हमने पहले डिहाइड्रेशन किया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, हमारे पास एल्कीन आ गया। फिर हमने ब्रोमीन ऐड कर दिया उसमें। ब्रोमीन इसलिए ऐड किया क्योंकि अब जब हम इसे निकालेंगे ना, हम इसे HBr की फॉर्म में निकालेंगे। तब यहाँ पे -2 HBr है, 2 HBr निकल रहे हैं। कैसे, ये HBr निकलेगा, यहाँ पे एक बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड हो गया। चलो ये HBr निकलेगा, यहां पे एक बॉन्ड आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। वही तो हमें चाहिए। तो फाइनली हमें ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज सिमिलर टू दिस। इज दिस क्लियर नाउ? आई होप दिस इज क्लियर। आई होप आई एम नॉट हाइडिंग एनीथिंग। वाई वी हैड टू डू दिस, बिकॉज वी नीड टू एक्सट्रैक्ट इट ट्वाइस ना। 2 बार HBr निकलेगा तभी तो 2 बॉन्ड्स और आएंगे एडिशनल। वेरी गुड, वेरी गुड। ये क्वेश्चन ट्रिकी था, ठीक है। फरहान अंडरस्टूड, गुड। I will repeat this question, please understand this. A lot of you are saying yes, but some of you are saying मैम ब्रोमीन क्यों ऐड किया, हाइड्रोजन क्यों नहीं कर रहे? बच्चा स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा, इसीलिए। ओके दीपू? हाँ, ब्रोमीन इसलिए ऐड किया ताकि हम उसको HBr के वे में निकाल सके ना। हाँ, ये वाला ब्रोमीन वाला स्टेप मुझे पता है, दिस इज द कैच, जो आपको हो सकता है समझ ना आया हो। मैं इसको भी एक्सपैंड करके लिख देती हूं। आप बोल रहे हो मैम हाइड्रोजन ऐड कर दो, हाइड्रोजन ऐड करोगे तो ये तो वापस से क्या बन जाएगा आपका, हाइड्रोजन ऐड करते ही एल्कीन एल्केन बन जाएगा, इसलिए हाइड्रोजन नहीं ऐड कर रहे। अब ब्रोमीन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि HBr हम 2 बार निकाल पाएंगे, ब्रोमीन होगा तभी तो निकाल पाओगे। ये रहा आपका CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यही है।
है ना, ब्यूटीन है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूं, क्या ऐड कर रही हूं मैं इसमें, ब्रोमीन ऐड कर रही हूं, ठीक है। तो मैं इसमें ब्रोमीन ऐड कर रही हूं, तो ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा और ब्रोमीन ऐड हो जाएगा, एंड फाइनली ये क्या बनेगा, ये देखो, ये बन जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा अपना CH3, ये CH2 भी ऐसे ही रहेगा, ये CH, ये तो ऐसे ही रहा, बट ये जो ब्रोमीन हमने ऐड कर दिया वो आ गया यहां, तभी ये टोटल फॉर्मूला क्या हुआ, टोटल फॉर्मूला हमारा हुआ CH3, ये क्या है, CH3 CH2 CHBr, ये क्या है, CH2Br, इस तरीके से आया हुआ है। उसको भी एक्सपैंड करके समझा रही हूं क्योंकि यही स्टेप है जो हो सकता है तुम्हें समझ ना आए, थोड़ा सा हायर लेवल का इन्होंने क्वेश्चन दे दिया है, तो ये आपको लर्न करना है, अभी लर्न कर लो। डिहाइड्रेटिंग एजेंट से पहले वाटर निकाला, ब्रोमीन ऐड करा, फिर HBr स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में निकाला, तभी ट्रिपल बॉन्ड आएगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड रेखा, ठीक है। इस हिसाब से ये ब्रोमीन ऐड हो गया। बच्चा CHBr ऐसे नहीं है, इसको मैंने एक्सपैंड करके लिखा है ना, आप इधर देखो, यू कैन व्यू दिस पार्ट, ओके। हाँ, वेरी गुड, अब थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। कंडेंस फॉर्म में लिख दिया ना, उसको ओपन करके मैंने बना दिया पूरा डायग्राम। सो बस जब ये आएगा एग्जाम में तो इसी वे में लिखना है। अच्छा, जनरल फॉर्मूला क्या है, जनरल फॉर्मूला अल्काइन का हम सबको पता है, CnH2n -2 है, तो ये पार्ट तो बहुत सिंपल था, ओके। मैम कैन यू शो व्हाट वुड हैपन इफ यू ऐड H2, बच्चा आप इफ यू ऐड H2 तो वो क्या अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बन जाएगा, बट हमें तो एल्कीन से एल्केन नहीं बनाना, एल्कीन से अल्काइन बनाना है। ध्यान किस बात पे, हाँ, MLB ड्रीमर वेरी गुड पॉइंट, वो कह रहे कि मैम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड गिवन है बस मार्किंग स्कीम में, क्योंकि आपको पढ़ाया ही उतना हुआ था, है ना। हमने आपको जनरली ये बताया हुआ है कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 वाला जो स्टेप है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, बट वो एल्कीन तक है। ये कंप्लीट आंसर है जो मैं आपको यहां पे दिखा रही हूं, दिस इज द कंप्लीट आंसर, ओके। एग्जैक्टली कैसे आया वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, इवन जो आपकी मार्किंग स्कीम में नहीं गिवन था, आपके मार्किंग स्कीम में इतना ही गिवन है, ओके। सो पहले आपने दोनों आइसोमर्स दिखा दिए, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले जो है, देन आपने कन्वर्जन दिखाया। अब स्टेप बाय स्टेप कन्वर्जन ना दिखा के अगर आपने ये सारा भी लिख दिया, यू विल गेट मार्क्स। इसको बस याद रखना कि अल्कोहल से अल्काइन तक जाने के लिए आपको ये सब कुछ चाहिए, ओके। नेक्स्ट जनरल फॉर्मूला विल बी दिस, मैम इफ यू राइट ओनली H2SO4 विल वी गेट फुल मार्क्स, इट डिपेंड्स। हाँ, आपकी मार्किंग स्कीम में जो होते का H2SO4 तक का ही गिवन है, बट आपको समझना पड़ेगा कि उससे खाली वाटर निकल रहा है, हम अल्कोहल से एल्कीन तक पहुंच रहे हैं, बस हमें अल्काइन तक जाना है। तो इट डिपेंड्स ऑन द टीचर, अगर उन्हें लगेगा कि ये तो पढ़ाया नहीं हुआ तो दे माइट गिव यू फुल मार्क्स फॉर दैट, ओके। बट हियर आई एम टेलिंग यू एग्जैक्टली कि क्या क्या करना था। इसलिए मैंने डिटेल में बताया, मुझे पता था ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा सॉल्व। ये रिएजेंट्स जो यहाँ पे गिवन है ये जरूर लिख देना, देन कोई नहीं रोक सकता आपको फुल मार्क्स देने से, इतना भी लिखोगे काफी है। You're welcome, Jyotika. All right, let's move on to the last section, that is section E, जिसमें बहुत प्यारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, बहुत इजी पीजी क्यूटी क्वेश्चंस हैं, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, इसमें तो पक्का फुल मार्क्स आएंगे सबके। प्योर गोल्ड इज वेरी सॉफ्ट एंड देयरफॉर इट्स नॉट सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी। केस बेस हमने स्टार्ट कर दिया है, ओके। टू मेक इट हार्ड, गोल्ड इज alloyed with other metals. The purity of gold is measured in carats. So what is carat? Carat actually is a unit of purity. It is a unit of purity.
Carat number is the number of parts of gold in 24 parts. Okay, they've given you a table. This is the carat number. This number of parts, how much gold are we adding, and then how much of the other metal are we adding, because जो gold है that's very soft, we can't use it directly. Okay, it's not carat. ये वाला carat नहीं है, single. Okay, नहीं please. खुशी, I want you also to feel the खुशी. Yes, birthday boy, happy birthday. चलो, everyone, tell me the answer for the first part. Try करो, नहीं हुआ तो मैं बता ही दूंगी. What is the percentage of gold in 18 karat gold? What is the percentage of gold in 18 karat gold? This is the 18 karat gold. What is the percentage of gold in 18 karat gold? चिरायू ने तो सॉल्व कर दिया है और बिल्कुल सही आंसर दिया है. रूशन करेक्ट, दीपू करेक्ट, संगीत करेक्ट, तन्मय करेक्ट, कृष्णा स्लाइटली रॉन्ग, बर्थडे बॉयज स्लाइटली रॉन्ग, फरहान करेक्ट, खुशी करेक्ट, अनन्या करेक्ट, नायशा करेक्ट, कामना करेक्ट, ज्योतिका करेक्ट, मेघना करेक्ट, वेरी गुड, सोनाली करेक्ट. अरे तुम्हें सब आता है. 18 पार्ट्स गोल्ड के हैं. टोटल कितने? 18 प्लस 6 24. बस आपको गोल्ड की परसेंटेज बतानी थी. परसेंटेज ऑफ गोल्ड. तो कितने पार्ट्स गोल्ड के थे? 18. टोटल कितने? 24. 18 बाई 24 इंटू 100 कर देते हैं कैलकुलेट. 6 3s are 6 4s are. ठीक है, फिर 4 1s are 4, 25 are 100, 25 into 3 75. सिंपल. कितना आ गया? 75%. सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेज नेम एनी टू मेटल्स दैट आर यूज्ड टू मेक 22 कैरेट गोल्ड. सिल्वर एंड कॉपर. इसका आंसर तो तनिष्क ने सबसे पहले ही लिख दिया था चैट में. करेक्ट. तो बस फर्स्ट पार्ट का आंसर हो भी गया. इतनी बड़ी कहानी ऊपर लिखी है, बट टेंशन की कोई बात नहीं है कि इस पे सबसे सिंपल होता है. यस, वेरी गुड. नेक्स्ट, लाइक गोल्ड प्योर आयरन इज कंपैरेटिवली सॉफ्ट. आयरन भी जो होता है वो सॉफ्ट होता है, उसको भी हम अलॉय बनाने की कोशिश करते हैं. उसे हमने मिक्स कर दिया किस सब्सटेंस के साथ, अब ये हमें बताना है. पहला पार्ट, टू मेक इट हार्ड. उसको हार्ड करने के लिए और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम उसे कार्बन के साथ मिक्स करते हैं. इवन अगर आप 0.05% कार्बन भी यूज कर लोगे, इट विल बिकम हार्ड. नेक्स्ट पार्ट तुम लोग बताओगे. एक पार्ट तो मैंने बता दिया. ये बताओ स्टेनलेस स्टील में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे. एक पार्ट का मैंने आंसर दिया, एक पार्ट का तुम लोग दो. वेरी गुड अश्विनी, वेरी गुड वेरी गुड. बहुत बच्चे ब्रेक लेके वापस आ चुके हैं. सोनाली कंप्लीट आंसर नहीं है. एंड लेट मी टेल यू, बहुत बच्चे निकल लिख रहे हैं, बहुत बच्चे क्रोमियम लिख रहे हैं. निकल क्रोमियम दोनों लिखोगे तभी मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि स्टेनलेस स्टील में दोनों होता है. सो निकल एंड क्रोमियम है, जिससे ये हार्ड भी हो जाएगा और ये रस्ट भी नहीं करेगा. प्लीज मेंशन बोथ, दोनों लिखना. ठीक है, तो बस ये आपका फाइनल आंसर हो गया. आपने 75% गोल्ड बता दिया. जो परसेंटेज ऑफ गोल्ड है 18 कैरेट गोल्ड में, सिल्वर एंड कॉपर हम ऐड कर सकते हैं. कार्बन ऐड करेंगे आयरन में तो वो हार्ड हो जाएगा. निकल क्रोमियम ऐड करेंगे तो वो स्टेनलेस स्टील बन जाएगा. तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी आया होता है. जो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो इससे भी ज्यादा आसान है. तो ये कर सकते थे, या फिर देयर इज अनदर वन. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन एवरीवन. आखिर तक हम पहुंच गए. तुमने जो जंग है ना, जो 4 बजे से हमने स्टार्ट किया हुआ है सेशन, नाउ इट्स 8:45. वेरी गुड ऑल ऑफ यू. यू पीपल आर सो वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर बोर्ड एग्जाम. मुझे अभी दिख रही है, आई कैन सी दैट. चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं. अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है. इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर इज एन अलॉय. कैसा मिक्सचर है एंड हाउ डज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एन अलॉय कंपेयर विद दैट ऑफ प्योर मेटल. प्योर मेटल के कंपैरिजन में कैसी होती है कंडक्टिविटी. व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर इज अलॉय. कैसा मिक्सचर है. डोंट राइट गुड बैड. आई रिमेंबर चेकिंग एन आंसर शीट लॉन्ग बैक.
And what type of mixture is an alloy? One student, I don't know why, wrote it's a good mixture. We don't need good and bad over here. Very good. Thankful. I think this is great to read that you all are writing homogeneous and nobody is writing good or bad mixture. Very good. Alloy क्या होता है? Homogeneous mixture है, मतलब uniform composition होगी. क्या है ये? Homogeneous mixture है मेटल्स का, मेटल्स के साथ या मेटल्स का नॉन मेटल के साथ. जैसे आपने यहाँ पे आयरन प्लस कार्बन आप देख रहे हो, तो ये क्या है? ये स्टील में होता है, जैसे ब्रिज में यूज होता है, रेलवेज में, कंस्ट्रक्शन में. ठीक है, होमोजीनियस है मतलब यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होगी. तो आपने टाइप बता दिया. सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन बताओ. हाउ डज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एन अलॉय कंपेयर विद दैट ऑफ द प्योर मेटल? Less conducting, less, high melting point, conductivity increases, less, low, हाँ, very good. एक आधा बच्चे ने गलत आंसर दिया, but most of you got the answer absolutely right. The electrical conductivity of an alloy is less than that of pure metal. कम होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो जाता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी कम हो जाती है. मान लो मैं आपसे बात कर रही हूं, इफ आई से ब्रास, इसमें क्या होता है? कॉपर और जिंक, और मे बी आई से ब्रॉन्ज, कॉपर और टिन. अब आप नोट करोगे कि दोनों में कॉपर है, ब्रास में भी ब्रॉन्ज में भी, ये अलॉयज हैं, दोनों में कॉपर है. मगर इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए हम ये यूज नहीं करते, हम कॉपर को यूज करते हैं क्योंकि कंडक्टिविटी अलॉय की कम होती है. ठीक है, तो वो इनडायरेक्टली आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ब्रास और ब्रॉन्ज हम क्यों नहीं यूज करते. Why don't we use them to make electric circuit? तो you should know क्योंकि उनकी कंडक्टिविटी कम है मेटल से, जबकि कॉपर दोनों में है. हाँ, करेक्ट, मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा. So this is how you have to present your answer, everyone. Alloy is a homogeneous mixture of metals and non-metals. Electrical conductivity of an alloy is less than that of pure metal. First of all, I want all of you to clap for yourself in the chat. जितने भी बच्चे अभी यहाँ पे प्रेजेंट है, एक बार फटाफट से सेशन को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे. बहुत सारी क्लैपिंग मुझे चैट में दिखनी चाहिए क्योंकि आप लोग बहुत देर से यहाँ बैठे हुए हो और आपने सारा का सारा सेशन अच्छे से समझा है. एक चीज मैं चाहती हूँ आप कमेंट में लिखो लास्ट में, तो स्टे टिल द एंड. बट वेरी गुड ऑल ऑफ यू. विद दिस the sample, the practice paper analysis is over and I can see, I am clapping for all of you. I hope you people are also feeling very proud of yourself. ऐसे बहुत questions होंगे जो आपको पहली बार आज समझ आ रहे होंगे, शायद इससे पहले नहीं समझ आए, कभी देखे नहीं थे, नहीं दिमाग लग रहा था कि कैसे सॉल्व करना है. इट्स ओके, जर्नी खत्म नहीं हुई है अभी, जर्नी अभी भी चल रही है. कल नहीं है बोर्ड का पेपर, अभी टाइम है, तो मेहनत करते रहो जैसे तुम लोग कर रहे हो. इट्स नॉट ईजी टू सिट constantly for 4 to 5 hours, but you people are doing that kind of hard work, and trust me, your hard work will pay off for sure. वो आपका जो हार्ड वर्क है वो पक्का पे ऑफ करेगा. चैनल के साथ जुड़े रहो, सब्सक्राइब करो अभी के अभी, लाइक करो सेशन अभी के अभी, क्योंकि ये सारी मेहनत हम आपके साथ कर रहे हैं आपको आपके गोल तक पहुंचाने के लिए. तो जो 95% प्लस हमने आपके लिए एक एम सेट किया है, हम चाहते हैं कि आप वहां तक पहुंचो, एंड आई नो आप भी चाहते हो आप वहां तक पहुंचो. ठीक है, पेपर टफ था, यस, आई वोंट से पेपर बिल्कुल इजी था, बट आई से पेपर डुएबल था. अटेम्प्ट कर सकते थे, अच्छे मार्क्स आ सकते हैं इसमें. एक आधा क्वेश्चन छोड़ के सारा का सारा पेपर आप मैनेज कर सकते हो. नहीं कर पाए कोई बात नहीं, आज हमने आपको करा दिया. सो यस, वीव गॉट यू कवर्ड. मतलब तुम्हें जब भी जो भी डाउट है उसके लिए हम यहाँ पे हैं. We've gone through the stage जहां पे अभी तुम हो, तो वो जो कंफ्यूजन अभी तुम फील कर रहे हो ना, वो हमें पता है, हमने खुद एक्सपीरियंस करा है. एग्जाम से एक दिन पहले तक वो कंफ्यूजन रहेगी, एग्जाम देने से 1 घंटे पहले तक तुम्हें डर लगेगा, बट कोई बात नहीं, डर लो बट पढ़ते रहना.
मेहनत मत छोड़ना, इस डर को इतना बड़ा मत बनने देना कि वो तुम्हारी मेहनत के बीच में आ जाए. दैट्स इट. डरना इज ओके. ठीक है. तो आई होप सबने सेशन लाइक कर दिया है, शेयर कर लिया है, फ्रेंड्स के साथ नहीं किया तो कर देना. लेट देम ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम दिस एंड सब्सक्राइब करो एंड कॉल मोर एंड मोर पीपल हियर, ताकि ये जो फ्री में, देखो कोई चार्ज नहीं है, फ्री में जो कंटेंट मिल रहा है, बिल्कुल ऑथेंटिक कंटेंट मिल रहा है, वो सबको मिले, मैक्सिमम पीपल बेनिफिट आउट ऑफ इट. अब एक चीज आई वांट ऑल ऑफ यू टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन राइट आफ्टर दिस लाइव सेशन. हमने फिजिक्स करा, हमने केमिस्ट्री करा, हमने बायो करा, सबसे ज्यादा आपका स्ट्रेंथ क्या था, सबसे ज्यादा आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा था, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो में से? डू लेट मी नो दैट इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप वर्किंग हार्ड, कीप स्माइलिंग. अभी मत बताना, कमेंट सेक्शन में बताना, सो दैट वी कैन ऑल्सो एनालाइज इट लेटर. डू लेट मी नो दैट एंड कीप वर्किंग हार्ड. मेहनत करते रहो. आई विल सी यू सुपर सून. Very well done all of you. Take care. Bye bye.